Hey, hello everyone. So good morning, good afternoon and good evening as per the time you're watching the video. Yes, so boys and girls, those who are watching it live right now, good morning, good morning, good morning guys, and it's going to be सुपर से भी ऊपर वाला मैराथन ऑफ द अदर लॉज। इसमें हम लोग 4 चैप्टर कवर करने वाले हैं। किस ऑर्डर में कवर होगा, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले हेलो 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 हेलो। और भाई आप देख रहे होंगे कि आपका प्रिपरेशन में 4 चांद लगे, उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी जान लगा दी है, एकदम जी जान लगा दी है आपको अच्छा नंबर दिलाने के लिए। तो फटाफट जुड़ जाइए बॉयज एंड गर्ल्स, join absolutely fast. Let me check whether I am audible or not. If I am audible, if I am visible, just hit the like button and confirm me. Hit the like button and confirm me, boys and girls. Yes, जबरदस्त भाई, जबरदस्त वाला मैराथन होने वाला है, जबरदस्त वाला मैराथन होने वाला है बॉयज एंड गर्ल्स। मैं आपको बता दूं, सुपर से ऊपर वाला मैराथन है। अगर मैं ऑडिबल हूं, विजिबल हूं, वीडियो को लाइक बटन दबा करके मेरे को बता दीजिए फटाफट। बार बार एक ही सवाल ना पूछा करो, सर नोट्स कैसे मिलेंगे, सर नोट्स कैसे मिलेंगे। बेटा सब बताऊंगा, खाली तुम सुनते रहो। अच्छा, एक बार मैं आपको बता दूं कि मैं जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर आज यूज कर रहा हूं फिर से, इसमें एक बार के लिए क्या होगा, एक बार के लिए एक छोटा सा एकदम जो है ना लैग होगा। लैग मतलब वीडियो जो है ना रुक जाएगा। कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड के लिए आपको क्या करना रहेगा, 1 सेकंड भी नहीं, आपको बस वीडियो ऑफ करके फिर से स्टार्ट करना रहेगा, ठीक है। जब आपका कनेक्शन छूट जाए, खाली एक ही बार होगा, ये पूरा जो मैराथन है इसमें केवल एक ही बार होगा। शुरुआत में जब आपका कनेक्शन जो है वो छूट जाएगा, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपको एक बार वीडियो को क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करके बैक जा करके फिर से स्टार्ट कर देना रहेगा, ठीक है। और बिल्कुल आप एकदम लाइव मेरे साथ आ जाएंगे, राइट। चलो भाई जुड़ जाइए गाइस, जुड़ जाइए फटाफट, क्या चीज का इंतजार है, ठीक है। तो एक बार छोटा सा टेक्निकल ग्लिच आता है, ठीक है, तो आपको उस समय क्या करना रहेगा, वीडियो को क्लोज करके फिर से ऑन कर लेना रहेगा, बस 1 सेकंड के लिए। ओके, चलो आज का एजेंडा हम आपको बता देते हैं। हाँ, जो बच्चों को सबसे ज्यादा चैप्टर परेशान करता है, पता नहीं क्यों, वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सबसे पहले अपने इसी से स्टार्ट करेंगे, एनआई एक्ट 1881 से स्टार्ट करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से स्टार्ट करेंगे। मैं पूरा आपको बता दे रहा हूं किस ऑर्डर में अपने पढ़ने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैराथन किस किस बच्चों के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये मैराथन किन के लिए रेलेवेंट है, और एकदम अपने टाइम बाउंड तरीके से बात करेंगे, ठीक है। एकदम अपने जो है ना टाइम बाउंड तरीके से बात करने वाले हैं। सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए इंटर, सभी के लिए ये वाला मैराथन जो है ना इंपॉर्टेंस रखता है। सीए इंटर वाले बच्चों का तो पूरा का पूरा अदर लॉज का जो मैराथन है 40 मार्क्स का, वो कवर हो जाएगा। कंपनी लॉ का मैराथन सर नहीं करवाएंगे, ऑलरेडी करवाया जा चुका है, 2 पार्ट में करवाया गया है, लगभग 17 आवर्स का मैराथन है 2 पार्ट में। आई होप यू हैव डन इट, आई होप यू हैव डन इट, आई रियली डू होप दैट यू हैव डन इट। एक सेकंड, मैंने बोला था ना 1 मिनट का वो टेक्निकल ग्लिच आता है। चलो अब सब कुछ सही है, परफेक्ट है। यस, नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट। हाँ, तो सीए इंटर का अदर लॉस का पूरा 40 मार्क्स का ये मैराथन कवर हो जाएगा। कंपनी लॉ का मैराथन सबके लिए, सारे इंटर वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी जो है वो डाल दिया गया था, ठीक है। और जबरदस्त था भाई, जबरदस्त। दो सेशन में अपने कंप्लीट किए थे 17 आवर्स का। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे मैं बता दूं, आज हम 4 चैप्टर करने वाले हैं।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सबसे पहले एनआई एक्ट 1881 करेंगे, एनआई एक्ट 1881, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट किस ऑर्डर में होगा मैं बता रहा हूं, बट 4 चैप्टर क्या क्या होने वाला है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले जो बच्चे एनआई एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनके किस सब्जेक्ट में बेटा, ईबीसीएल में, ईबीसीएल, ठीक है। अगर न्यू सिलेबस है तो ईबीसीएल, ओल्ड सिलेबस है तो ईसीएल, बट करना तो सभी को है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस सबको। और इसी के साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड जनरल क्लॉज एक्ट भी आज ही होगा, जो कि एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के जेआईजीएल के पेपर में है। तो आप एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 दे रहे हैं तो आईओएस और जीसीए करेंगे, मॉड्यूल 2 दे रहे हैं तो एनए एक्ट और आईसीए करेंगे, और दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं तो दोनों करेंगे। और सीएमए इंटर वाले बच्चे, उनके सिलेबस में एनआई एक्ट है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो आज के सेशन में कवर हो जाएगा, ठीक है। किस ऑर्डर में अपने करने वाले हैं ये मैराथन, अब उस ऑर्डर को मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो बच्चों का सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, बच्चों का जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था वो था बेटा एनआई एक्ट 1881 को लेकर के, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो अपना टारगेट ये रहेगा कि एनआई एक्ट 1881 जो है बेटा अभी अपने 11 AM जो अपना चालू हुआ है टिल 1 PM, 11 AM to 1 PM, मतलब 1 बजे तक अपने क्या खत्म कर देंगे बताओ, एनआई एक्ट 1881 खत्म कर देंगे, ठीक है। लगभग 12:45 तक खत्म हो जाएगा, 15 मिनट का ब्रेक देंगे, 12:45 तक खत्म हो जाएगा, 15 मिनट का ब्रेक देंगे बेटा। तो 1 PM तक अपना एनआई एक्ट 1881 इंक्लूडिंग 15 मिनट्स ब्रेक। उसके बाद बेटा 1 PM to 4 PM, 1 PM to 4 PM हम लोग का होने वाला है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है। 1 PM to 4 PM इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट होने वाला है। उसके बाद इसके दौरान 1 PM to 4 PM के अंदर ही 20 मिनट का ब्रेक भी रहेगा। 4 PM शार्प हम लोग स्टार्ट करते, 4 PM ऑनवर्ड्स आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जितना भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब समझ गए ना क्या क्या बताओ, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी एंड एजेंसी, वो अपने करने वाले हैं। बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी एंड गारंटी जो अगेन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है, एजेंसी वो भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है। कोई दिक्कत नहीं आएगा आज के बाद, अब ये रिवीजन क्लास कर लो, खाली आप ये रिवीजन क्लास कर लो बेटा। लगभग एक्सपेक्टेड है 7 PM तक हम लोग का ये मैराथन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई अगेन रिपीट, स्टिक, प्लीज स्टिक स्ट्रिक्टली टू दिस टाइमलाइंस। 11 AM to 1 PM हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, एनआई एक्ट 1881 करने वाले हैं। 1 PM to 4 PM इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जनरल क्लॉज एक्ट होने वाला है। 4 PM ऑनवर्ड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होने वाला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होने वाला है, ठीक है गाइस। अब चैट में कोई ये ना पूछे कि ये मेरे सिलेबस में है कि नहीं है। अगर कोई ये पूछेगा कि ये मेरे सिलेबस में है कि नहीं है, तो भाई वो रिवीजन क्यों कर रहा है जब उसको उसका सिलेबस से नहीं पता। तो ये तो रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन क्या करने आया अगर उसको उसका सिलेबस नहीं बता तो आप जो है उसको काइंडली जो है समझा दीजिएगा। सूरजीत माइटी बोल रहे सर ऑडिट एंड ऑडिटर नहीं होगा। अब बताओ मैं ऐसे प्यारे भोले भाले बच्चों का क्या करूं जो अचानक अचानक जो है जागते हैं कोमा से। कल ही हुआ है, ढिंडोरा पीटा गया था, फिर बच्चे बोलते हैं सर आप इतना बार अनाउंसमेंट क्यों करते हैं। देखो देखो कल ही हुआ है और ये बच्चा पूछ रहा है ऑडिट एंड ऑडिटर्स नहीं होगा, तो ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा, नोट्स कहां मिलेगा सर। मैराथन जब कंप्लीट हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आकर के आप एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, ठीक है, गूगल फॉर्म होगा, उसको फिलअप कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कंपनी लॉ पार्ट 2 के लिए वो फिलअप कर रखा है तो फिर से फिलअप करने का दरकार नहीं है, आप तक हम लोग नोट्स पहुंचा देंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आपने गूगल फॉर्म फिलअप नहीं किया तो गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, आप तक नोट्स पहुंचा दिया जाएगा। अगर ऑलरेडी आपने फिलअप कर दिया है तो फिर से फिलअप नहीं करने का दरकार है, नहीं फिलअप किया है तो आप फिलअप कर दीजिएगा। कब फिलअप करिएगा, अच्छा चैट में बहुत सारे बच्चे पूछेंगे नोट्स क्या होगा, नोट्स क्या होगा,
तो प्लीज बाद बाकी बच्चों को बता देना, आफ्टर मैराथन यू नीड टू फिल अप अ फॉर्म इन द कमेंट बॉक्स। आफ्टर मैराथन यू नीड टू फिल अप अ फॉर्म इन द कमेंट बॉक्स। Sir's team is going to send you the notes. पूरा डिटेल रिवीजन होने वाला है, कुछ स्किप नहीं किया जाएगा, एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया जाएगा। इट्स अ डिटेल्ड रिवीजन। और मेरा डिटेल रिवीजन का मतलब आप समझ जाओ, समझ जाओ आप। बहुत सारे, छोड़ो यार क्या बोलना, बट बहुत सारे रेगुलर बैच से भी ज्यादा तुमको कंटेंट मिलने वाला है, डिटेल रिवीजन रहने वाला है। चलो आ जाओ। बट आई विल बी अ टच स्पीडी बिकॉज आई हैव टू कवर एवरी एस्पेक्ट, सो आई विल बी अ टच स्पीडी। लगभग 250 पेजेस का पीपीटी नोट्स बना है, 250 पेजेस का पीपीटी नोट्स बना है। ये नोट्स आपको मैराथन एंड होने के बाद एक गूगल फॉर्म है, वो अगर आपने भर दिया तो बढ़िया बात है, नहीं भरा तो भर दीजिएगा। मैराथन ओवर होने के बाद आप भर देंगे और हमारी टीम जो है आपको नोट्स जो है वो भेज देगी। चलो, और जी हां, अरे क्या बात, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे बॉयज एंड गर्ल्स, लॉट्स ऑफ लव। और आज पूरी की पूरी एमईपीएल टीम जो है ना, देखो मेरा मैराथन खत्म होगा लगभग 7 पीएम तक, उसके बाद 8 पीएम 8 पीएम 8:30 पीएम एंड 9 पीएम तुम लोग के लिए जबरदस्त सरप्राइज गिफ्ट्स है, सरप्राइज गिफ्ट्स है। वो सरप्राइज गिफ्ट्स क्या क्या है? अरे भाई बहुत सारा सरप्राइज गिफ्ट है। 8 पीएम जो है ना, सीए इंटर वाले बच्चे 8 पीएम आएंगे, सीएमए इंटर वाले बच्चे 8:30 पीएम और सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे 9 पीएम। आज ही 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, ठीक है? 8 बजे, 8:30 बजे और 9 बजे। 8 बजे सीए इंटर के लिए, 8:30 बजे सीएम इंटर के लिए और 9 बजे सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। तीनों के लिए अलग अलग सरप्राइज गिफ्ट है, सबके लिए सेम नहीं है, तीनों के लिए अलग अलग सरप्राइज गिफ्ट है। इसी चैनल पर सारी टीम के साथ आप मिल सकेंगे और जबरदस्त सरप्राइज गिफ्ट है। चलो बॉयज एंड गर्ल्स, अब किस चीज का वेट है? चलो स्टार्ट करते हैं। जय माता दी, लेट अस स्टार्ट बॉयज एंड गर्ल्स। मैं अब चैट नहीं देखने वाला हूं और मेरे को अगर लगा कि चैट में ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रहा है तो मैं चैट को क्लोज कर दूंगा, तो प्लीज डिस्टर्ब ना करें। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। अरे स्टार्ट करने के पहले तुम मेरे वॉरियर हो कि नहीं हो? हाँ सर हम आपके वॉरियर है सर, आप इतना कुछ हमारे लिए करते हैं, आप जो बोलेंगे सर कर देंगे, जान भी मांगेंगे सर दे देंगे। नहीं, जान तो मैं आपके लिए दूंगा, आप जान मत दीजिए, आप मेरी जानो, आप मेरी जानो। आप खाली ये वीडियो को जो है ना अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मोहित अग्रवाल सर का भी जो है एक टीचर है, मोहित अग्रवाल सर भी एक टीचर है जो पढ़ाते हैं, इंडिया को पता चल जाए। तो काइंडली जो है शेयर कर दो सर। आप भी ना, अरे भाई नहीं, आप सोचते हैं कि नहीं शेयर क्यों करें, सबको तो पता ही है। नहीं, आपका जितना रिया उतना और किसी का नहीं होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को, ठीक है, कि प्लीज शेयर किया करो, ये सब जो सेशंस रहता है ना, प्लीज शेयर किया करो अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां जहां तुम लोगों। चलो शेयर कर दिए हैं सर। अगेन यार, व्यूअर्स वाचिंग इज टू लाइक का रेशियो बड़ा खराब है यार। ऐसे कौन से बच्चे जो लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो को? चलो भाई लाइक मार दो, अटेंडेंस लगा दो और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो लेट अस हिट इट, लेट अस हिट इट। लेट्स हिट इट बॉयज एंड गर्ल्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आ जाइए भाई, एनआई एक्ट 1881 में। हाँ जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। रेगुलर बैच का अगर हम लोग बात करें तो बेटा रेगुलर बैच में एनआई एक्ट कंप्लीट करने में मेरे को लगभग लगभग 7 to 8 क्लासेस लगते हैं। 16 घंटा का कंटेंट रहता है, 16 घंटा का कंटेंट रहता है, तब जाकर के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कंप्लीट होता है। बट अभी हम रिवीजन करवा रहे हैं, 1 hour 45 मिनट्स में आपको पूरा 16 घंटा का जो कंटेंट आपके अंदर घोल करके जो है ना एकदम पिला देंगे आपको, एनआई एक्ट का पूरा एकदम आमरस आपको पिला देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। The lecture is going to be in the mix of Hindi and English both, so that I can cater all over India students. Okay, so it is going to be in mix of Hindi and English both. Okay, sir. Everything is perfect.
बच्चे बोल रहे हैं सर 8 नहीं 9 क्लास था। हाँ भाई सॉरी 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 9 क्लास था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बॉयज एंड गर्ल्स लेट अस रीड इट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में सबसे पहले आपको जानने का मन करता होगा कि आखिर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको बता दूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ना, एक्ट हैज कंप्लीटली फेल्ड टू डिफाइन व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने खाली बताया 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ठीक है। सो द एक्ट फेल्स टू डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 3 टाइप्स ऑफ एनआई आर देयर, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक का सेक्शंस क्या है, सेक्शन 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली, सेक्शन 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली, ओके, सेक्शन 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। अब तो अगर एक्ट ने एनआई को ठीक से डिफाइन नहीं किया तो फिर किसने किया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन तो चाहिए, बिल्कुल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन तो चाहिए बेटा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है बाय जस्टिस विलिस जे, बाय जस्टिस विलिस जे। So negotiable instrument has been defined as per Justice Willis J. According to Justice Willis J, negotiable instrument means an instrument. Negotiable instrument एक ऐसा instrument है, the property in which is acquired by anyone. Negotiable instrument means an instrument. ये देखो, negotiable instrument means an instrument. According to Justice Willis J, negotiable instrument means an instrument. The property in which is acquired by anyone. Property means ownership. Ownership of negotiable instrument is acquired by anyone who satisfies 2 conditions. He takes it in good faith and for value. So if anyone who takes the negotiable instrument in good faith, without any conspiracy, without any fraud, takes it in good faith and for value means by giving consideration, he will get the ownership of negotiable instrument. Notwithstanding any defect of title in the person, from whom he took it. Notwithstanding any defect of title, notwithstanding मतलब भाड़ में गया any defect of title, irrespective of any defect of title in the person from whom he took it. Notwithstanding भाड़ में गया any defect of title in the person from whom he took it. भले ही सामने वाला चोर है, लेकिन अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उस चोर से ले रहे हैं, चोर ने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, फिर भी आपको उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा अगर आपने गुड फेथ में लिया। आपको नहीं पता था कि जिससे आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं वो सामने वाला चोर है, ये आपको नहीं पता था। आपने गुड फेथ में एक्ट किया और आपने गुड्स बेचा, उसको रुपया दिया, कंसिडरेशन दिया, मतलब आपने वैल्यू दिया, तो आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट, द प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप इन विच इज अक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स इट इन बोना फिडे यानी गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू यानी कंसिडरेशन, नॉटविथस्टैंडिंग एनी डिफेक्ट ऑफ टाइटल इन द पर्सन फ्रॉम होम ही टुक इट। एग्जांपल ए एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ए के पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, बी ने उसको चुरा लिया, बी ने चोरी कर लिया, क्या बी को ओनरशिप मिलेगा? नहीं। क्यों बी को ओनरशिप क्यों नहीं मिलेगा? अरे उसने वैल्यू थोड़ी ना दिया और उसने गुड फेथ में थोड़ी ना एक्ट किया, सुनो। लेकिन मान लो बी जो चोरी कर लिया ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बी चोर है, लेकिन बी अब जो चोर है वो ट्रांसफर कर देता है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सी को इन गुड फेथ, और सी ने उसको वैल्यू भी दिया, कंसिडरेशन भी दिया, तो क्या सी को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा? यस। अब आ जाओ प्रॉमिसरी नोट, बेटा क्या होता है? फटाफट आ जाओ बेटा। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, बॉयज एंड गर्ल्स लेट अस रीड इट। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन नंबर बताओ। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन नंबर 4 है, बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन नंबर 5 है, चेक का सेक्शन नंबर 6 है, सेक्शन 4, 5, 6। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट सेक्शन नंबर 4। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन नंबर 4। प्रॉमिसरी नोट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 क्या होता है बेटा? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रॉमिसरी नोट मींस एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ओरल promissory note can never be made, it has to be in writing. So promissory note means an instrument in writing containing an unconditional undertaking. Undertaking means promise signed by the maker. It should be signed by the maker to pay certain sum of money. Amount payable certain होना चाहिए, to pay certain sum of money to a certain person or to his order or to the bearer of the instrument. Only to a certain person or to his order or to the bearer of the instrument. So देखो promissory note section 4 में मैंने क्या क्या फीचर बताया? It's an instrument in writing. Yes sir, ये writing में होता है, other than bank note और currency note. मतलब करेंसी नोट, देखो देखा जाए तो ये जो करेंसी नोट होता है बेटा, अरे कभी तो करेंसी नोट देखे होगे बेशर्मो? नहीं सर आप दे दीजिए, देख लेते हैं।
मैंने भी डिजिटल देखा है डिमोनेटाइजेशन के बाद। अरे जोक सपाट, करेंसी नोट देखा ना, करेंसी नोट में तुम देखोगे, करेंसी नोट भी तो यार सारा फीचर सेटिस्फाई करता है प्रोमिसरी नोट का। उसमें भी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग रहता है, लिखा रहता है ना, कभी फालतू टाइम में अगर देखो करेंसी नोट में, आई प्रॉमिस टू पे बेयर सम ऑफ ₹2000, आई प्रॉमिस टू पे बेयर, तो उसमें भी तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग रहता है, साइन बाय द मेकर, बिल्कुल गवर्नर ऑफ आरबीआई साइन करता है उसको, साइन बाय द मेकर है, सर्टेन सम ऑफ मनी है, बिल्कुल। जो करेंसी नोट रहता है उसमें भी तो भाई लिखा रहता है ना, आई प्रॉमिस टू पे बेयर सम ऑफ ₹2000, बिल्कुल भाई, सर्टेन सम ऑफ मनी है टू अ सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ बेयरर, बिल्कुल भाई। करेंसी नोट जो है वो बेयरर को पेबल रहता है ना, लिखा रहता है ना, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹2000 टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो करेंसी नोट भी तो सारा फीचर सेटिस्फाई करता है। क्या करेंसी नोट सारा फीचर सेटिस्फाई करता है? हाँ, सेटिस्फाई करता है सारा फीचर प्रोमिसरी नोट का। बट इज इट अ प्रोमिसरी नोट? नो, इट्स नॉट अ प्रोमिसरी नोट, बिकॉज डेफिनेशन में लिख दिया गया अदर देन बैंक नोट करेंसी नोट। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट other than banknote or currency note which contains an unconditional undertaking any promise signed by the maker to pay a certain sum of money only to a certain person or to his order or to the bearer of the instrument. Can oral promissory note be held valid? ना बाबा ना, invalid. Oral promissory note is invalid. ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए promises to pay B in writing 5000 and other sum due। अगर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको 5000 रुपया दूंगा एंड अदर सम ड्यू, ये वैलिड है कि इनवैलिड है? आंसर इज इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है बोलो तो? 5000 एंड अदर सम ड्यू, तो अदर सम ड्यू तो मेंशन नहीं है ना, तो ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया, बिकॉज अमाउंट पेएबल मस्ट बी सर्टेन, ये अदर सम ड्यू अनसर्टेन है। ए प्रोमिसेस टू पे 5000 टू बी इन राइटिंग इफ सी डाइज, साइन वगैरह भी है, इफ सी डाइज। मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे महानुभाव लोग को लगता है कि ये इनवैलिड है क्योंकि यहां पर आ गया इफ सी डाइज। मैं बता दूं ये वैलिड है, ये वैलिड है सर। लेकिन आप तो बोले थे सर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए। हाँ, अभी भी अनकंडीशनल प्रॉमिस ही है, ये अनकंडीशनल माना जाएगा क्योंकि सी का मरना कभी ना कभी तय है। एनी इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन इज रिगार्डेड एज अनकंडीशनल। वैलिड, अनकंडीशनल मींस एनी इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर, तो ये वैलिड है। लेकिन अगर यही बोला जाता कि मैं आपको 5000 जो है प्रॉमिस कर रहा हूं दूंगा इफ सी डाइज लीविंग इनफ सम ऑफ मनी, देखो यहां तक ठीक था, इफ सी डाइज ये तो होना निश्चित है, बट सी डाइज लीविंग इनफ सम ऑफ मनी, सी मरेगा ये पक्का है, पैसा छोड़ करके मरेगा सी, ये पक्का नहीं है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। मैं आपको बता दूं प्रोमिसरी नोट जो है ना, देखो डेफिनेशन में भले लिखा हुआ है पेबल टू सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर टू द बेयरर, बट प्रोमिसरी नोट जो है ना वो एक्चुअल में बेयरर को पेबल नहीं हो सकता, वो सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ही रहेगा। प्रोमिसरी नोट कैन नेवर बी मेड पेबल टू बेयरर, इट हैज टू मेंशन, it has to be payable to a certain person or to his order, it cannot be made payable to bearer. Why sir? Because of section 31 of RBI Act 1934, वहां पर लिखा हुआ है कि promissory note can't be made payable to bearer, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, ध्यान में रखना। promissory note can't be payable to bearer, याद रखना, promissory note जो है ना वो bearer को payable नहीं हो सकता, it has to be payable to a certain person or to the order. So this was everything about promissory note। तालियां दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है ना, एकदम तोप वाला रिवीजन, स्पीड पकड़ लेंगे, आप खाली जुड़े रहो, अचानक से स्पीड पकड़ लेंगे जब फ्लो आ जाएगा, और कोई स्टंट करने नहीं आए हो, ठीक है। मेरे को पता है तुम लोग बोलोगे सर मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है, सब झूठ। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सेल्फ स्टडी जो है रिवीजन के बाद कर लेना, क्योंकि मैं जब आया हूं तुमको सेल्फ स्टडी करवाने, तुमको रिवीजन करवाने, तो ये रिवीजन अगर कर लोगे ना तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी में अगर तुम्हारा मान लो से फॉर एग्जांपल 10 घंटा लगना है जो काम करने में, वो 2 घंटा लगेगा, मतलब तुम्हारा 80% एफर्ट्स कम हो जाएगा, 80% टाइम सेव हो जाएगा इफ यू वॉच दिस मैराथन। Promissory note is done. Bill of exchange, section number 5. Bill of exchange, section number 5, boys and girls. Bill of exchange, section number 5. बेटा bill of exchange भी क्या रहता है? Bill of exchange is also an instrument in writing. Yes, bill of exchange is also an instrument in writing. बिल्कुल ये भी एक instrument in writing है, containing an unconditional। यहां पर क्या है ना, promissory note में undertaking था, यहां पर क्या है? Order है। So bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person। यहां पर जो मेकर है ना वो साइन कर रहा है और डायरेक्ट कर रहा है कि सामने वाला मेरे को पैसा देगा, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। सो ड्रॉयर साइन बाय द मेकर मतलब समझ में आ रहा है, ड्रॉयर ऑफ द बिल जो है ना, ड्रॉयर, मान लो अगर हम गुड्स बेचे हैं, अगर हम माल बेचे हैं आपको, अगर हम आपको माल बेचे हैं तो हम ना बिल ड्रॉ करेंगे आपके ऊपर,
और हम आपको ऑर्डर करेंगे चल पैसा दे, तो साइंड बाय द मेकर यानी ड्रॉ, डायरेक्टिंग द सर्टेन पर्सन टू पे वही सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बेरर। तो क्या मेन फर्क है बेटा प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में, फटाफट देख लो। प्रोमिसरी नोट का सेक्शन नंबर कौन सा बेटा 4 है, बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन नंबर कौन सा बेटा 5 है। प्रोमिसरी नोट सेक्शन नंबर 4 है और बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5। प्रोमिसरी नोट में तो यार ये तो बच्चा बच्चा जानता है, पहला दो डिफरेंस तो बच्चा बच्चा लिख सकेगा। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और यहां पर अनकंडीशनल ऑर्डर। इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, प्रोमिसरी नोट में जो मेकर है ना, जो बना रहा है वो पे करेगा, वो पेयर है ना। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर मैंने आपको माल बेचा है, मैंने गुड्स बेचा है, तो मैं थोड़ी ना पे करूंगा यार, मैं तो तेरे से रुपया पाएगा। मैंने माल बेचा है, आई हैव सोल्ड यू द गुड्स मैन, आई एम हैविंग रिसीवेबल्स फ्रॉम यू, आई हैव सोल्ड यू द गुड्स, सो सेलर इज गोइंग टू ड्रॉ द बिल। तो सेलर इज गोइंग टू ड्रॉ द बिल, तो सेलर ही तो मेकर है ना, तो वो तो पे ही है, उसको तो रुपया मिलेगा। समझ में आ गया सर। प्रोमिसरी नोट में जो बनाता है वो चुकाता है, मेकर इज अ पेयर, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर इज अ पेई। यहां दो ही पार्टी है, मेकर एंड पेई, ठीक है ना। लेकिन यहां पर तीन पार्टी है, मेकर जो ड्रॉयर है, सामने वाला ड्रॉई है, और फिर पेई भी, अगर हम इंडोर्स करते हैं तो कोई और पेई भी हो सकता है। क्लियर है सर। लायबिलिटी जो मेकर का है ना बेटा, लायबिलिटी ऑफ द मेकर, प्रोमिसरी नोट के केस में जो मेकर है वही पेयर है। अरे मेकर ही तो पेयर है, तो उसका लायबिलिटी प्राइमरी है एंड अनकंडीशनल। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉयर का जो लायबिलिटी है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉयर का जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी है एंड कंडीशनल है। क्यों ड्रॉयर का लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है? बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर ही तो ड्रॉयर है ना, तो उसका लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल क्यों है? मान लो मैंने बिल ड्रॉ किया ड्रॉई के ऊपर, तो प्राइमरी लायबिलिटी तो यार सामने वाला ड्रॉई का है, प्राइमरी लायबिलिटी तो ड्रॉई का है। लेकिन मान लो वो बिल क्या किया ना, ड्रॉयर ने इंडोर्स कर दिया, मैंने ये बिल जो है ना इंडोर्स कर दिया, मान लो बैंक के साथ डिस्काउंट करा लिया है, क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया। तो सोचो तो, अगर सामने वाला ड्रॉई फ्यूचर में बिल को मैच्योरिटी डेट पर डिसऑनर कर देता है, तब तो यार ड्रॉयर का लायबिलिटी आ जाएगा ना। अगर फ्यूचर में ड्रॉई डिसऑनर करता है तभी मेरा लायबिलिटी आएगा, अगर मैंने बिल डिस्काउंट कराया था या इंडोर्स किया था, तो मेरा लायबिलिटी जो है ना सेकेंडरी एंड कंडीशनल है। क्लियर है सर, मक्खन एकदम। फिर आ जाओ बेटा चेक, सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 चेक। अरे इतने सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लाइक बटन दबाना भूल गए तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया बेटा, एहसान फरामोश मत बनो, लाइक बटन दबाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ, पॉजिटिव एनर्जी आने दो, लेट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। तो प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, अब बारी है चेक का। चेक का सेक्शन नंबर बताओ 6। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, चेक मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज यार, चेक मीन्स अ बिल ऑफ, चेक तो एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, with two main differences. Drawn on a specified banker. Check is drawn on a specified banker and payable on demand. Bill of exchange is payable on maturity, but check is payable on demand. So check means a bill of exchange which is drawn on a specified banker and payable on demand, and it includes electronic image of truncated check and check in electronic form. So check section number 6 means a BOE drawn on specified banker and payable on demand and includes electronic image of truncated check and check in electronic form. अब मेन डिफरेंसेस क्या है बेटा BOE और चेक के अंदर देख लो। सबसे पहले तो आपको पता है BOE सेक्शन 5, चेक सेक्शन 6। BOE इज पेबल ऑन, पहले BOE का पूरा देख लो। BOE क्या है, पेबल ऑन क्या रहता है? BOE तो बिल तो पेबल ऑन मैच्योरिटी होगा एंड इट इज ड्रॉन ऑन एनीवन, बट चेक क्या है, चेक इज पेबल ऑन डिमांड एंड ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। अच्छा, बिल में दो चीज होता है, क्या दो चीज होता है बताओ तो? सर बिल में ना 3 दिन का ग्रेस डे मिलता है, और सर बिल में ना रेवेन्यू स्टैंप लगाना पड़ता है, लेकिन चेक में 3 दिन का ग्रेस डेट नहीं होता, कोई रेवेन्यू स्टैंप भी नहीं लगता। अब दो चीज ऐसा है जो BOE में नहीं होता लेकिन चेक में होता है, स्टॉप पेमेंट एंड क्रॉसिंग। BOE में स्टॉप पेमेंट क्रॉसिंग नहीं होता, लेकिन चेक में आप स्टॉप पेमेंट करा सकते हो एंड क्रॉसिंग ऑफ चेक भी होता है। क्लियर है सर, मक्खन सर। सर चेक के डेफिनेशन में दो शब्द आए थे, इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक मतलब तो बहुत क्लियर है यार, चेक विच इज मेड यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। चेक विच इज मेड यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर ऑनलाइन, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। चेक मेड यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर ऑनलाइन, उसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक, ठीक है। और ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? ट्रंकेटेड चेक कुछ नहीं है, जो चेक फाड़ दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ड्यूरिंग क्लियरिंग, ठीक है। जो भी एक दूसरे, समझो बैंक लोग एक दूसरे से अपना क्लियरिंग नहीं कराते, पता नहीं बात? हाँ सर पता, बैंक लोग एक दूसरे से अगर रुपया पाते हैं तो किसके थ्रू सेटलमेंट होता है? RBI हम लोग का क्लियरिंग हाउस है,
तो अगर आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक से पाता है और एचडीएफसी बैंक भी आईसीआईसीआई बैंक से पाता है, जो कि होता रहता है, आपस में उन लोग सेटलमेंट नहीं करता, सारा का सारा क्लियरिंग उन लोग को कौन करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। तो जो फिजिकल चेक रहता है ना, पेपर चेक, वो ट्रंकेट कर दिया जाता है, ठीक है, उसका फोटो लेकर के, फोटो यानी उसको डिजिटलाइज करके पेपर को फाड़ दिया जाता है, ठीक है, उसी को ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं। सो इट इज नथिंग बट अ पेपर चेक विच इज ट्रंकेटेड यानी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द क्लियरिंग साइकिल। क्लियर है सर? बट जो ओरिजिनल राइटिंग था ट्रंकेटेड चेक का, ऑब्वियस सा बात है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अरे फाड़ने के पहले उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब फाड़ दो मक्खन सर। क्रॉसिंग ऑफ चेक, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी अभी हम लोग थोड़े पहले सीखे थे कि चेक जो है ना वो क्रॉस किया जा सकता है। कोई मेरे को बता सकता है कितना प्रकार का क्रॉसिंग होता है? सब बच्चे बता देंगे सर, जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग को स्पेसिफिक क्रॉसिंग भी बोलते हैं हम लोग। सो एक होता है जनरल क्रॉसिंग और एक होता है स्पेशल। स्पेशल इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक क्रॉसिंग। दोस्तों स्पेशल क्रॉसिंग को हम लोग स्पेसिफिक क्रॉसिंग भी बोलते हैं, राइट सर, राइट। सुनो, जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है बेटा? जनरल क्रॉसिंग, ये दोनों क्या है? ये दोनों से चेक प्रोटेक्ट होता है। चेक गेट्स प्रोटेक्टेड, 100% प्रोटेक्शन का ही नहीं मिलता, बट चेक थोड़ा बहुत जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। कैसे प्रोटेक्ट होता है मैं आपको बताता हूं, कैसे प्रोटेक्ट होता है। कैसे प्रोटेक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। रेगुलर बैच में समझाया हुआ है, लेकिन अभी मैं एफर्ट ले रहा हूं एकदम टनाटन आपको रिवाइज करा दो। मान लो से फॉर एग्जांपल कोई क्रॉसिंग नहीं किया हुआ है, नॉर्मल चेक है, कोई क्रॉसिंग नहीं किया हुआ, अकाउंट पे वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई लाइन ट्रांसफर्स लाइन कुछ नहीं खींचा हुआ, नॉर्मल चेक है, मेरा स्टूडेंट ने मेरे को दिया, मेरा स्टूडेंट भरत है, भरत ने मुझे ये चेक दिया, ठीक है। अब वो चेक मान लो चोर चोरी कर लिया, चोर चोरी करके, भरत ने मान लो आईसीआईसीआई बैंक का चेक दिया था, वो चोर चेक मेरे से चोरी करके आईसीआईसीआई बैंक के पास गया और आईसीआईसीआई बैंक बोला भाई चेक पलटो, साइन कर दो, हमको इंडोर्स कर दो। चेक के पीछे लिख करके इंडोर्स कर सकते हैं अपने। तो चोर क्या किया, चेक के पीछे साइन कर दिया, मोहित अग्रवाल का डुप्लीकेट साइन मार दिया। आईसीआईसीआई बैंक के पास थोड़ी ना मोहित अग्रवाल का साइन है, भरत का बैंक था आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। और चोर क्या किया, मेरे से चेक चोरी कर लिया और पेइंग बैंकर के पास चला गया। चोर चेक चोरी करके पेइंग बैंकर आईसीआईसीआई बैंक के पास चला गया और उसने चेक इंडोर्स कर दिया आईसीआईसीआई बैंक को और काउंटर पे पैसा ले लिया। पैसा तो गया और बैंक को क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज बैंक हैज एक्टेड इन गुड फेथ। उसको नहीं पता था कि सामने वाला चोर है, एंड वैल्यू भी दिया है, पैसा भी दिया है। तो अभी अभी हम लोग थोड़े पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन पढ़े थे कि किसी को भी एनआई का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, वो इज एक्टेड इन गुड फेथ एंड गिवन वैल्यू। सो बैंक हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड गिवन वैल्यू, सो बैंक को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक भरत का अकाउंट से रुपया काट लेगा, पूरे ट्रांजेक्शन में भुगतेगा कौन? तुमको लग रहा है भरत ना, एमए भरत थोड़ी ना मेरे को फिर से फीस देगा यार, समझो चीज को। तो हम क्या करेंगे फिर? हम चोर के ऊपर केस करेंगे, पुलिस ढूंढते रहेगा, जय राम जी की। भरत अरोरा, भरत अरोरा बोल रहा है मैंने कब दिया चेक आपको? अरे बेशरम, चला समझ में आ गया सर, क्लियर है सर। अब मैं चैट वगैरह नहीं देख रहा हूं प्लीज। तो अब चेक प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? चेक प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है, दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन टान दिया जाता है। जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है बेटा? दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन टान दिया जाता है। जनरल क्रॉसिंग में दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन टान दिया जाता है विद और विदाउट एनी वर्ड्स रिटन बिटवीन देम। इट इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। इट्स एन इंस्ट्रक्शन, इट इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेइंग बैंकर। इट इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेइंग बैंकर। जनरल क्रॉसिंग इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेइंग बैंकर कि इंसानों को पैसा मत देना, सीधा अकाउंट में पैसा डालना। ये देख, इट्स एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेइंग बैंकर टू पे द प्रोसीड्स ऑफ चेक ओनली टू अनदर बैंकर। तो अब मान लो अगर चेक में ये जनरल क्रॉसिंग किया हुआ रहता और ये चेक चोर चोरी करके आईसीआईसीआई बैंक के पास जाता, आईसीआईसीआई बैंक क्या उस चोर को काउंटर पे पैसा देता? नहीं देता, क्योंकि जनरल क्रॉसिंग किया हुआ है, वो सीधा अकाउंट में रुपया डिपॉजिट करेगा। समझ में आ गया सर? तो इट्स एन इंस्ट्रक्शन टू द पेइंग बैंकर कि तुम इंसान को पैसा मत देना, कलेक्टिंग बैंकर को पैसा देना। पेइंग बैंकर खाली बैंकर को पैसा देगा। स्पेशल क्रॉसिंग तो एक लेवल और ऊपर है। स्पेशल क्रॉसिंग में तो क्या होता है, हम लोग ना बैंकर का नाम भी लिख देते हैं। तो स्पेशल क्रॉसिंग में ये दो डंडी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट बैंकर का नाम पक्का रहेगा। मान लो एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक। इससे क्या होगा, इट्स एन इंस्ट्रक्शन टू पेइंग बैंकर। पेइंग बैंकर कौन था? आईसीआईसीआई, कि यू विल ओनली पे द प्रोसीड्स टू एचडीएफसी बैंक, नो अदर बैंकर।
General crossing was an instruction to paying banker. General crossing was an instruction given to the paying banker. General crossing was an instruction given to the paying banker to pay the proceeds to another banker, any banker. But special crossing में it's an instruction given to the paying banker to pay the proceeds only to the particular banker whose name is mentioned. अलग लेवल का प्रोटेक्शन है, जबरदस्त प्रोटेक्शन. नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग. बेटा रेगुलर बैच में ये पूरा एक क्लास में समझाते हैं एग्जांपल्स के साथ, बट अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन चल रहा है, समझ में आ गया होगा. जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है? इट्स एन इंस्ट्रक्शन कि पेइंग बैंकर जो है ना इंसान को पैसा देगा, नहीं, पेइंग बैंकर किसको देगा? कलेक्टिंग बैंकर को पैसा देगा. स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है? पेइंग बैंकर स्पेसिफाइड कलेक्टिंग बैंकर को सिर्फ पैसा देगा जिसका नाम मेंशन है. क्लियर है? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग एग्जाम में हर टर्म में समझ लो, हर दूसरा टर्म में आता है, और 90% बच्चे हर दूसरा टर्म में गलत करके आते हैं. एग्जाम में आ जाएगा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग. क्या मतलब? अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है तो क्या ट्रांसफरेबल है? अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नॉट नेगोशिएबल लिख दिया जाए तो क्या वो ट्रांसफरेबल रहेगा? बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ट्रांसफरेबल फिर नहीं रहेगा. अरे ट्रांसफरेबल रहेगा. नॉट नेगोशिएबल का यह मतलब नहीं होता कि इट्स नॉट ट्रांसफरेबल. इट इज वेरी वेल ट्रांसफरेबल. तो इट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट ट्रांसफरेबल. ये बात तो दिमाग में बैठा लो. इट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट ट्रांसफरेबल. इट इज वेरी वेल ट्रांसफरेबल. तो फिर क्या है? तो फिर क्या है भाई? पहले मैं आपको बता दूं, इट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट ट्रांसफरेबल. इट इज वेरी वेल ट्रांसफरेबल. तो फिर नॉट नेगोशिएबल मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल मतलब समझ में आया था ना तेरे को? नेगोशिएबल समझ में आया था ना? तो नॉट नेगोशिएबल भी समझ में आना चाहिए. जैसे गुड समझ में आता है तो नॉट गुड समझ में आना चाहिए, है ना? इंटेलिजेंट समझ में आता है तो नॉट इंटेलिजेंट समझ में आना चाहिए. ब्यूटीफुल समझ में आता है तो नॉट ब्यूटीफुल समझ में आना चाहिए. वैसे नेगोशिएबल अगर समझ में आता है तो नॉट नेगोशिएबल भी समझ में आना चाहिए. नेगोशिएबल में क्या था? नेगोशिएबल का डेफिनेशन में खास बात क्या था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स इट इन बोना फिडे एंड फॉर वैल्यू. भले ही सामने वाला का टाइटल डिफेक्टिव था. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि अगर आप चोर से भी लोगे ना, चोर से भी लोगे तो भी आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा अगर आपने गुड फेथ और वैल्यू दिया. तो नॉट नेगोशिएबल लिख दिया जाए तो समझ जाओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक चोर भी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता था. नॉट नेगोशिएबल में समझ आ गया सर, एक चोर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता, although you satisfy both the conditions of acting in good faith and for value, but still a thief cannot transfer the ownership to you if you, भले ही आपने गुड फेथ में एक्ट किया और वैल्यू दिया है. ये होता नॉट नेगोशिएबल. मतलब लेने के पहले तुमको जांच लेना पड़ेगा कि सामने वाला चोर तो नहीं है ना, और अगर चोर निकला तो तुमको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा. It can be transferred, but a non-owner cannot transfer its ownership even if the other person took it in good faith and for value. सर आज तक नहीं समझ में आया था, अभी समझ में आ गया. और क्या तरीका था सर? क्या तरीका था? नेगोशिएबल समझ में आ गया था तो नॉट नेगोशिएबल भी समझ में आ जाएगा. क्लियर है सर? मक्खन. हाँ जी, अब आ जाइए होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर. Boys and girls, please come to holder and holder in due course. होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर आ जाइए. होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर आ जाइए. बच्चों ये क्लियर हुआ ना ये वाला कंसेप्ट नॉट नेगोशिएबल? फटाफट मेरे को बता दो बेटा, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नॉट नेगोशिएबल क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर. ऑसम सर, ऑसम, मक्खन है सर, जबरदस्त सर. चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स. आ जाइए बेटा होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर. होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर आ जाइए बेटा, फटाफट आ जाइए. लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. कोई भी पोर्शन रिपीट ना करने बोले, क्योंकि ये रेगुलर बैच नहीं चल रहा है, ये रिवीजन चल रहा है. रिस्पेक्ट द रिवीजन एंड द टाइम.
क्यों, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग खाली, समझ में आ रहा है, इक्का दुक्का कंसेप्ट करने वाले हैं, सारे कंसेप्ट का करवाना है। तो आपको एकदम ध्यान लगाना है, एकदम ध्यान लगाना है। लेट अस रेट होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर आ जाइए भाई। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स बता देता हूं। होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसा लीगल ओनर है, दोनों ही लीगल ओनर है, पहले ये बात समझ लो। एक चोर को रास्ते में पड़ा हुआ बिल मिल गया, या चोर बिल चोरी कर लिया, चोर ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चोरी कर लिया, या फिर तुमको रास्ते में पड़ा हुआ, यू आर अ फाउंडर ऑफ द लॉस्ट बिल, तो तुम्हारे हाथों में भले बिल है बट तुम होल्डर नहीं हो, तुम लीगल ओनर नहीं हो। रास्ते में पड़ा हुआ चीज उठा लोगे, क्या लीगल ओनर बन जाओगे? नहीं, दोनों ही लीगल ओनर है। होल्डर भी लीगल ओनर होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स भी लीगल ओनर होता है, मैं बता दूं। तो चोर होल्डर भी नहीं होता, होल्डर इन ड्यू कोर्स बहुत दूर का बात है, वो होल्डर भी नहीं होता। जो फाउंडर ऑफ द लॉस बिल रहता है वो भी होल्डर नहीं रहता, एजेंट भी होल्डर नहीं रहता। क्लियर है सर? क्योंकि उन लोग ओनर नहीं है। तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स दोनों लीगल ओनर है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास लीगल ओनरशिप आया है बाई पेइंग कंसिडरेशन in good faith and he has acquired the bill before maturity. He is a legal, HIDC is a legal owner who has acquired an after paying consideration in good faith and he has acquired the bill before maturity. और इसको ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा, ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, he is more privileged. NI Act 1881 has given more privileges to HIDC in comparison to holder. सारा प्रिविलेज HIDC को है। हाँ, HIDC होल्डर तो है ही, ऑब्वियस बात है, होल्डर मतलब लीगल ओनर, तो HIDC लीगल ओनर तो है ही, होल्डर तो है ही। So every holder in due course is a holder, but every holder is not a holder in due course. बहुत बार सुने होंगे बट बहुत बार भूल जाते होंगे। मैं बता दूं, जैसे मोहित अग्रवाल, बड़ा नाम क्या है रे? मोहित अग्रवाल, और एक है मोहित। तो हर मोहित अग्रवाल मोहित तो होता ही है, हर मोहित अग्रवाल मोहित तो होता ही है, बट क्या हर मोहित मोहित अग्रवाल होगा? नहीं। वैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स नाम में तो होल्डर है। हाँ? जैसे मोहित अग्रवाल के नाम में मोहित है, तो हर मोहित अग्रवाल मोहित होता है, वैसे होल्डर इन ड्यू कोर्स के तो नाम में होल्डर है, तो हर होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर तो होता ही है, बट हर होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता। क्लियर है सर? सर कौन सा होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता है? जिसने कंसिडरेशन देकर के लीगल ओनरशिप हासिल किया है, हु हैज अक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट बाय पेइंग कंसिडरेशन इन गुड फेथ एंड बिफोर मैच्योरिटी, मोर प्रिविलेजेस आर गिवन एंड एवरी HIDC इज होल्डर। जैसे मान लो मैंने गुड्स बेचा और तुम्हारा बिल ड्रॉ किया, गुड्स बेच करके बिल ड्रॉ किया, तो मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं। गुड्स बेच करके बिल ड्रॉ किया, इंडोर्स किया, तो मैं HIDC हूं। लेकिन होल्डर कौन होता है? लीगल ओनर, बट ही हैज नॉट पेड, ही हैज नॉट नेसेसरीली पेड द कंसिडरेशन। गुड फेथ भी यहां पर जरूरी नहीं है, ही माइट हैव अक्वायर्ड द बिल इवन आफ्टर मैच्योरिटी, इनहेरिटेंस वगैरह के बाद, है ना? लेस प्रिविलेजेस है। एवरी होल्डर डज नॉट बिकम HIDC। एग्जांपल, गिफ्ट इनहेरिटेंस, मैंने अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुमको गिफ्ट कर दिया, या फिर मान लो से फॉर एग्जांपल किसी के दादाजी वसीयत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने पोता के नाम करके चले गए, तो अगर दादाजी वसीयत में विल बना करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पोता के नाम करके चले गए, तो ऑब्वियस बात है वो पोता होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, तो इनहेरिटेंस। ठीक है? और हो सकता है वो आफ्टर मैच्योरिटी उसको बिल मिलाओ, पॉसिबल है। इन लोग बताओ होल्डर है कि नहीं है, वेदर दे आर होल्डर और नॉट। मतलब एग्जाम में कितना बार आया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, मैं बयान नहीं कर सकता, पढ़ा सकता हूं, फटाफट बताओ यस और नो में बताना, होल्डर है कि नहीं है। बिल स्टोलन, सर हाथों में तो बिल है ही, अरे हाथों में बिल है तो होल्डर नहीं होता, लीगल ओनर है क्या? चोर क्या लीगल ओनर है क्या? नहीं। बी फाउंड अ बिल ऑन द रोड, नो, ही इज ऑल्सो नॉट अ होल्डर। एजेंट इज ऑल्सो नॉट अ होल्डर। गिफ्ट मिला है, हाँ तब गिफ्ट मिला है तो लीगल ओनर है। होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है तो क्या हो? लीगल ओनर तो है ना, गिफ्ट मिला है, इनहेरिटेंस हुआ है, होल्डर है। ए इनहेरिटेड द बिल, होल्डर है। एफ के पास बिल है बट कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी ऑर्डर पास कर दिया है। ओ बाबा, अगर कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी ऑर्डर पास कर दिया है तो उसका सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, वो सब कोर्ट के पास वेस्ट करेगा, है ना? तो अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तब ये होल्डर नहीं है। अब आ जाओ प्रिविलेजेस ऑफ HIDC, प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, फटाफट आ जाइए बॉयज एंड गर्ल्स। प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर जबरदस्त, मतलब आई एम सो हैप्पी द वे द रिविजन इज गोइंग, जबरदस्त, ऑसम, अद्भुत, लवली। अरे बेशर्मो, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह शेयर तो कर सकते हो यार, शेयर तो कर दो, कम से कम ये वीडियो को शेयर तो कर दो। बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं हम लोग का छूट जाएगा, अरे मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं, शेयर कर दो, 30 सेकंड्स में दे रहा हूं, शेयर कर दो भाई, सबको ले आओ। और नोट्स वगैरह कहां से मिलेगा? वो आप तक पहुंच जाएगा, हमारा ऐप में भी हम लोग लगा देंगे, MEPL क्लासेस ऐप, वहां ढूंढने में दिक्कत हो तो गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो भर देना, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, उसको भर देना।
ठीक है। बच्चे पूछते हैं सर आपके एनर्जी का राज क्या है? आप लोग हैं और कोई नहीं। इट जस्ट देखो, ये इतना जो मेहनत है ना, ये बिना लव के नहीं हो सकता। मतलब एक लेवल के बाद फिर रुक जाता है। आप देखते होंगे, आपको लगता होगा बस, मतलब और मोहित सर क्या रिवीजन कराएंगे, तो फिर आपको एक अनाउंसमेंट आता होगा, अरे ये भी है, अरे वो भी है। तो ये सब जो है ना, मैं आपको बता दूं, बिना प्यार के नहीं हो सकता, बिना प्यार के नहीं हो सकता। चलो, प्रिविलेजेस ऑफ एचआईडीसी में आपका स्वागत है। आ जाइए, प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये नोट्स एग्जॉस्टिव है, इतना पढ़ करके जाओगे आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स में आ जाओ बेटा। प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, बेटा प्रिविलेजेस ऑफ एचआईडीसी। देखो, इन केस ऑफ फॉर्जरी, फॉर्जरी समझ में आ रहा है? हाँ सर, चोरी हो गया, बिल्कुल फटाफट एकदम। हाँ, इन केस ऑफ फॉर्जरी, प्रिविलेजेस ऑफ एचआईडीसी इन केस ऑफ फॉर्जरी, मतलब चोरी हो गया। तो देखो क्या होता है, अगर फॉर्जरी, चोरी होकर के, चुरा लिया है बिल जो तुमने, अगर वो एचआईडीसी के पास चला गया ना, तो सनम वो जाकर के अपना कोई भी प्रायर पार्टी को स्यू कर सकता है। ठीक है, तो एचआईडीसी के पास भली चोरी किया हुआ बिल पहुंच गया, लेकिन एचआईडीसी अपने सारे प्रायर पार्टी लोग को स्यू कर सकता है पैसा मांगने के लिए। सो इन केस ऑफ फॉर्जरी, एचआईडीसी कैन स्यू एनी ऑफ द प्रायर पार्टी। एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है ऐसे भी ये सब एग्जांपल्स ही आते हैं। एग्जांपल देखो, बी परचेज द गुड्स, ठीक है, बी जेन्युइन पार्टी है, उसने गुड्स खरीदा, किससे खरीदा? ए से। ए भी जेन्युइन पार्टी है, बेचारा ए माल दे रहा है, एंड एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बी ने माल खरीदा है ए से, बी ने माल खरीदा ए से, और इसलिए ए ने उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया बी के ऊपर, विच वाज एक्सेप्टेड बाय बी, ड्रॉन बाय ए, एक्सेप्टेड बाय बी। ओके, तो अब बिल किसके हाथ में रहेगा? ऑब्वियस बात है, सेलर ए है तो ए के हाथ में रहेगा। हे भगवान, ए के हाथ में जो बिल था, सी फॉर चोर, चोरी कर लिया, बिल स्टोलन बाय सी फॉर चोर। अब क्या हुआ? चोर जो है ना, चोर जिसके हाथ में बिल है, वो भागा भागा गया डी के पास, डी को बिल दे करके, बिल इंडोर्स करके उससे सामान खरीद लिया। तो डी बेचारा जो है ना, उसको नहीं पता कि सामने वाला चोर है। डी ने गुड्स बेचा ना, डी ने गुड्स बेचा ना, हाँ सर, डी ने गुड्स बेचा मतलब वैल्यू दिया। सो डी के पास ये जो बिल आ रहा है, क्या डी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? भले सामने वाला चोर है, बट डी क्या दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, डी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो एचआईडीसी है, बिकॉज ही अक्वायर्ड द बिल इन गुड फेथ। उसको नहीं पता था कि सामने वाला चोर है, and he has acquired the bill by paying consideration and before maturity. So D becomes holder in due course. He can recover from any of the prior party. मतलब D जो है ना, C, B, A किसी को भी स्यू कर सकता है इन लोग से अमाउंट रिकवर करने के लिए। मक्खन सर, मतलब जस्ट इमेजिन द सीन, आंख बंद करो और सीन इमेजिन करो। किसका बिल खो गया था? ए का। ए बिल ढूंढे जा रहा है, ठीक है लिटरली ऐसा नहीं होता, बट याद रखने के लिए इमेजिन करो, ए बिल ढूंढे जा रहा है, अचानक से होल्डर इन ड्यू कोर्स का एंट्री होता है डी का। कहीं तुम इसी बिल को तो नहीं ढूंढ रहे हो? ए बोलता है हाँ यही तो है। डी बोलता है चलो पैसा दो, बिल का पैसा। बोला क्या बोल रहे हो, मेरा ही बिल चोरी हुआ, हम ही पैसा दे। हाँ, मैं एचआईडीसी है, ये रहा देख, रसीद वसीद सब लेकर के आया भाई, सब रसीद वसीद लेकर के आया है, मैंने ये माल खरीदा है गुड फेथ में, वैल्यू भी दिया है, चल चल बानाबाजी नहीं, पैसा दे, पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है सर? याद रखना, एचआईडीसी ऑलवेज गेट अ बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर। ऑब्वियस बात है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑलवेज गेट्स अ बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर। या ट्रांसफरर कौन था? चोर था, बट एचआईडीसी गेट्स अ बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर चोर। एग्जांपल सेम एज अबव। मतलब जो डिफेक्ट है ना, एचआईडीसी जो है ना, उसके पास आने से सारा डिफेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। द डिफेक्ट गेट्स एलिमिनेटेड इन द हैंड्स ऑफ एचआईडीसी। आहा, अति सुंदर। द डिफेक्ट गेट्स एलिमिनेटेड, मतलब एचआईडीसी जो है ना, गंगा नदी के समान है, वहां पर जो भी बिल आएगा, एचआईडीसी है ना, वो गुड फेथ में लिया है ना, बिल्स पवित्र हो जाएगा। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आएगा एचआईडीसी के पास, पवित्र हो जाएगा, सारे मैल धुल जाते हैं एचआईडीसी के पास आने पर, सारे मैल धुल जाते हैं। डिफेक्ट गेट्स एलिमिनेटेड इन द हैंड्स ऑफ एचआईडीसी। मक्खन सर, अब एग्जाम में एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। मैं बता दूं, ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में मतलब 75% बच्चे जो है ना, वो गलत करते हैं। ये रिवीजन के बाद गलत नहीं होगा। सुन लो भाई, इसमें क्या है, सुन लो, सुन लीजिए देखिए, जो ड्रॉयर है, मान लो बी, ठीक है, और ए ड्रॉई है, ठीक है, तो बी ड्रॉयर है और ए ड्रॉई है, बिल बी के हाथ में था,
क्योंकि बी ही ड्रॉयर था। स्टोलन बाय सी, ठीक है। ओए सुन, बी के हाथ में जो बिल था, सी फॉर चोर, चोरी कर लिया, ठीक है सर, सी फॉर चोर, चोरी कर लिया। अब ये बिल किसके पास गया? डी के पास, जो एचआईडीसी है। डी ने गुड्स वगैरह बेचा, ठीक है, डी एचआईडीसी है, तो डी को ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। अब डी जो है ना, ये ई को ट्रांसफर कर रहा है, एंड ई को अच्छे से पता है कि इट वॉज स्टोलन बाई सी। ई को अब अच्छे से पता है कि जो बिल डी ट्रांसफर कर रहा है, डी के पास आया था चोर से, यह बात ई को पता है। मेरे सवाल को जवाब दो, क्या ई भी एचआईडीसी माना जाएगा, और क्या ई अपने प्रायर पार्टी को स्यू कर सकेगा? भले ही इसको पता है कि यह बिल चोरी का था, फिर भी ई चोर से थोड़ी ना ले रहा है भाई, ई तो खुद एचआईडीसी से ले रहा है। तो बिल में तो सारा डिफेक्ट जो है वो दूर हो चुका है एचआईडीसी के पास आने के बाद। तो अब अगर ई को यह बात पता भी है ना कि डी को यह बिल चोर से मिला है, तो ई इसमें क्या करेगा? क्या ई कॉन्स्पिरेसी में थोड़ी ना है, ठीक है, ई थोड़ी ना यार चोर से बिल ले रहा है, तो ई को ओनरशिप बिल्कुल मिलेगा और वो अपने प्रायर पार्टी को स्यू कर सकता है, याद रखना। डी को अगर पता होता कि सी चोर है, तब डी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन डी को तो नहीं पता था ना, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, डी एचआईडीसी बन गया, बिल पवित्र बन गया। अब भले ही ई को यह बात पता है कि डी के पास चोरी का बिल था, डजंट मैटर, ई भी अपना प्रायर पार्टी को स्यू कर सकता है। मक्खन सर, जबरदस्त, ऑसम। ई कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ऑल द प्रायर पार्टीज, ठीक है। अब आ जाइए बेटा इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट के अंदर। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कम टू इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट। फटाफट आ जाइए दोस्तों, इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाइए। इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट यानी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, अमाउंट लिखना बाकी है, ब्लैंक बिल, ब्लैंक चेक। कभी ब्लैंक बिल, ब्लैंक चेक देखा है? यस सर, बिल्कुल देखा है। तो वो इनकॉइट हुआ ना, इनकम्प्लीट हुआ ना। इन केस ऑफ इनकॉइट इंस्ट्रूमेंट यानी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, HIDC can recover up to the amount supported by the revenue stamp. HIDC can recover the amount supported by the revenue stamp. Clear है सर? तो इनकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है ना बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज ये सब में रेवेन्यू स्टैम्प लगता है, तो रेवेन्यू स्टैम्प जितना अमाउंट तक सपोर्ट करता है उतना अमाउंट तक आप, अगर HIDC है तो उतना अमाउंट तक आप रिकवर कर सकते हैं। देखो इनकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इट्स एन इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज अमाउंट नॉट फिल्ड अप। एग्जांपल देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। अरे ब्लैंक चेक नहीं सुना, इनकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, वैलिड है। ए परचेज किया गुड्स फ्रॉम बी ₹10,000 का, ठीक है, ध्यान से। ए बेचारा खाली 10,000 का माल खरीदा है बी से, एंड एक्सेप्टेड अ ब्लैंक बिल। ए को हड़बड़ी था, ही एक्सेप्टेड अ ब्लैंक बिल एंड गेव अथॉरिटी टू बी कि आप 10,000 भर लेना, मैं आपसे 10,000 का सामान खरीदा, आप 10,000 भर लेना। बी फॉर बदमाश 25,000 25,000 अमाउंट फिलअप कर दिया, और वो रेवेन्यू स्टैम्प भी उतना सपोर्ट करता था जो बिल के ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प था। हे भगवान, ए तो खाली 10,000 का माल खरीदा था, लेकिन बी फॉर बदमाश ने 25,000 का अमाउंट भर दिया उसमें, और फिर इंडोर्स कर दिया सी को, जो कि HIDC है, मतलब उसने कंसिडरेशन दिया है, वैल्यू दिया है, गुड फेथ में एक्ट किया है, सी HIDC है। मेरा क्वेश्चन है, क्या सी ए से पूरा 25,000 रिकवर कर सकता है? हाँ, सी HIDC है, वो बी और ए से पूरा 25,000 रिकवर कर सकता है। सी कैन सी बी या फिर ए फॉर 25,000 बिकॉज सी इज एन HIDC। मक्खन सर, बी ए से 25,000 नहीं मांग सकता, 10,000 मांग सकता है, बट सी बिंग HIDC बी और ए से 25,000 मांग सकता है। क्लियर है सर, समझ में आ गया? HIDC को भयानक वाला जो है प्रोटेक्शन मिला है, प्रिविलेजेस मिला है। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट हो, HIDC कैन सी ऑल द प्रायर पार्टीज। बिल्कुल, क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं ये वाला बात। जैसे ये एग्जांपल देख लो, ए एक्सेप्टेड अ बिल। इस बार बिल एक्सेप्ट कौन कर रहा है बेटा? ए एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय बी। बढ़िया बात है, ए हैज एक्सेप्टेड अ बिल, ए हैज एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय बी, ठीक है, यस सर। ए एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय बी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बी दस। अच्छा, ए एक्सेप्ट किया है ना बिल ड्रॉन बाय बी, हाँ, ए एक्सेप्ट किया बिल ड्रॉन बाय बी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट कि बी जो है ना माल डिलीवर कर देगा। अरे ए एक्सेप्ट किया है बिल मतलब बी ड्रॉ किया है। बी ड्रॉ क्यों किया है बिल? क्योंकि बी सेलर है, बी विल डिलीवर द गुड, और ये सौदा हुआ था कि बी विल डिलीवर द गुड्स ऑन 10th जनवरी, ठीक है, बढ़िया बात है, 10 जनवरी तक बिल गुड्स डिलीवर हो जाना चाहिए। फिर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 10 जनवरी तक गुड्स डिलीवर हो जाना चाहिए। बी इंडोर्स द बिल टू सी। अब बी क्या किया, ये बिल जो था इंडोर्स कर दिया सी HIDC को। अगर बी डिलीवर नहीं करता है गुड्स ए को, डजंट मैटर, सी HIDC है,
देन बी कैन नॉट sue ए। ऑब्वियस बात है, बी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा तो वो ए को sue कर सकता, बट सी बीइंग एचआईडीसी कैन sue बोथ बी एंड ए। मक्खन सर, ऑसम ऑसम। इसको पढ़ो, पॉइंट नंबर 6 को पढ़ो एक बार फटाफट बॉयज एंड गर्ल्स, रीड पॉइंट नंबर 6। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बट एक बार इसको पढ़ो, पॉइंट नंबर 6 को पढ़ो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वेरी फास्ट गाइस। जिन लोग अभी वीडियो देखना चालू किया फटाफट लाइक बटन दबा दो, अगर अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है तो। पढ़ा? अगर फिक्टिशियस नाम पर बिल बन जाता है, एचआईडीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एचआईडीसी को कोई नहीं बोल सकता नहीं नहीं यहां पर तो जो फिक्टिशियस नाम पर बिल बना था ना, इसलिए बिल इनवैलिड है। एचआईडीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही नाम नकली है। जो एचआईडीसी को दिया, जो भी प्रायर पार्टीज है, सबको एचआईडीसी आकर के ठोकेगा, यानी केस करेगा, स्यू करेगा अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए। सो इवन इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल, एचआईडीसी कैन रिकवर अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम ड्रॉयर ऑफ द बिल। क्लियर है सर? ए ड्रीव अ बिल ऑन फिक्टिशियस नेम बी एंड एंडोर्स्ड टू सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम ए। जोरदार तालियां, ये था प्रिविलेजेस ऑफ एचआईडीसी, ये था प्रिविलेजेस ऑफ एचआईडीसी। अब आ जाओ बेटा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में आ जाओ, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, फटाफट आ जाओ बॉयज एंड गर्ल्स। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, बेटा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन है मेड इन इंडिया, ड्रॉन या मेड इन इंडिया। देखो बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर है तो ड्रॉन, प्रॉमिसरी नोट है तो मेड, है ना? बिल ऑफ एक्सचेंज चेक है तो ड्रॉन बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट है तो मेड। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मेड इन इंडिया एंड दूसरा कंडीशन या तो पेबल इन इंडिया हो या फिर ड्रॉन अपॉन अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। पहला कंडीशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट विच इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया ये तो करना ही है, एंड आइदर पेएबल ऑल्सो इन इंडिया, चलो, या फिर पेएबल आउटसाइड इंडिया है, बट ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। चुप हो जाइए सर, मेड इन इंडिया एंड पेएबल इन इंडिया या फिर ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मक्खन। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा वो फॉरेन माना जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो इनलैंड, एक भी छूट गया तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सर नेगोशिएशन बैक क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशन बैक सर? सर व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशन बैक सर? सर आखिर नेगोशिएशन बैक क्या होता है सर? नेगोशिएशन बैक क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनो। नेगोशिएशन बैक क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनो। जब इंडोर्स किया हुआ बिल खुद ही अपने पास आ जाए, अरे बाप रे क्या बोल रहे हैं सर, फिर से बोलिए। जब इंडोर्स किया हुआ बिल फिर से मेरे पास आ जाता है ना, इसको नेगोशिएशन बैक बोलते हैं। मतलब जो प्रायर पार्टी था वो फिर से होल्डर ऑफ द बिल बन जाता है, इसको नेगोशिएशन बैक बोलते हैं। व्हेन एनी प्रायर पार्टी ऑफ द बिल again becomes the holder, when any prior party of the bill again becomes the holder, again gets back the bill, this concept is called negotiation back. This concept is called negotiation back. जो प्रायर पार्टी है उसको फिर से जब बिल मिल जा रहा है, when the prior party again gets back the bill, this is called negotiation back. एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये एग्जांपल देखो। मान लो ए ने माल बेचा बी को, ए ने माल बेचा बी को और उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, ठीक है? ए ने माल बेचा बी को और उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, ठीक है? ए ने माल बेचा बी को और उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया।
तो बिल ड्रॉ कर दिया बी के ऊपर, तो ऑब्वियस बात है ना, अभी बिल किसके हाथ में है बेटा, अभी बिल है ए के हाथ में। अब ए क्या किया भाई, ए इसको इंडोर्स किया सी को। अरे यार, ए वाज सपोज टू पे सम अमाउंट टू सी, ए इज हैविंग द बिल, ए वाज हैविंग सम अमाउंट पेबल टू सी, तो ए अपना बिल इंडोर्स कर दिया सी को, सी ने इंडोर्स कर दिया डी को, डी ने इंडोर्स कर दिया ई को, ई ने ये इंडोर्स कर दिया, फिर से मान लो ई वाज हैविंग सम पेबल टू सी, ई ने इंडोर्स कर दिया सी को। ओ माय गॉड, C was supposed to pay to D, C endorsed a bill to D. D was supposed to pay to E, D endorsed a bill to E. E was also having some payable amount to C, so E endorsed the same bill to C. तो C तो प्रायर पार्टी था, उसके पास घूम फिर करके बिल वापस आ गया, बूमरैंग, ये रहा बूमरैंग की तरह फेंके और मेरे पास बिल वापस आ गया। मतलब जो प्रायर पार्टी है C, उसके पास घूम फिर करके बिल वापस आ गया। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं नेगोशिएशन बैक। अब हम लोग क्या सीखे हैं कि इन लोग सब HIDC है, तो HIDC तो अपना प्रायर पार्टी लोग को स्यू कर सकता है। ये देखा जाए तो E का प्रायर पार्टी सी है ना, सोचो ना, ई का प्रायर पार्टी सी है, तो ई तो फिर सी का गला पकड़ सकता है, चल चल पैसा दे, लेकिन बिल तो फिर से सी के पास भी आ गया, तो सी का भी तो प्रायर पार्टी ई है, सी का भी तो प्रायर पार्टी ई हो गया, तो फिर सी भी ई का गला पकड़ेगा। तो नेगोशिएशन बैक में ये बोला गया, क्योंकि ई के पास ये पहले अधिकार आया था, देखो ना, ई के पास पहले अधिकार आया था कि वो सी का गला पकड़े, यानी सी से रुपया मांगे, इसलिए भली बिल नेगोशिएट बैक होकर किसी के पास आ गया है, सी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ई, C cannot recover the amount from E। वैसे ही D का प्रायर पार्टी कौन है? C। D का प्रायर पार्टी कौन है? D का प्रायर पार्टी C है, क्योंकि D ऑलरेडी C का गला पकड़ रखा है, C D का गला नहीं पकड़ सकता। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। लेकिन C ऑब्वियस बात है, A और B से तो रिकवर कर ही सकता है। ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ टू प्रिवेंट सर्किटरी एक्शन, नहीं तो फिर समझ में आ रहा ना, एग्जाम रेगुलर बैच में ऐसे गला भी पकड़ करके दिखाते थे, यस सर, टू प्रिवेंट सर्किटरी एक्शन। मक्खन सर, फिर से ये वाला डायग्राम देख लो बेटा एक बार, क्या हुआ नेगोशिएशन में, फिर से एक बार देख लो बेटा। कुछ ऐसा हुआ, ए ने माल बेचा था बी को, इसलिए बी ने बिल एक्सेप्ट करके ए को दिया, ठीक है। अब ए ने इंडोर्स कर दिया सी को, सी ने इंडोर्स कर दिया डी को, डी ने इंडोर्स कर दिया ई को, ई ने इंडोर्स कर दिया सी को, तो नेगोशिएशन बैक हो गया ना। यहां पर प्रायर पार्टी सी था, उसके पास फिर से बिल आ गया, तो यहां तो नेगोशिएशन बैक हो गया ना। अब कानून क्या बोलता है, क्योंकि ये ई ऑलरेडी सी से रुपया मांगने का हक रखता था, क्योंकि ई ऑलरेडी सी का गला पकड़ रखा है, ई तो अपना सारा प्रायर पार्टी लोग से रुपया मांग सकता है, तो ई का माना था प्रायर पार्टी, सी भी था, उससे रुपया मांग रहा था, इसलिए ये वाला सी ई से रुपया नहीं मांग सकता, क्योंकि ई के पास पहले अधिकार आया सी से रुपया मांगने का, इसलिए वाला सी ई से रुपया नहीं मांग सकता। वैसे ही ये डी का भी प्रायर पार्टी है सी, तो डी अपना प्रायर पार्टी सी का गला पकड़ रहा है, इसलिए ये सी डी से नहीं मांग सकता, नहीं तो सर्कुलर एक्शन हो जाएगा, सर्किटरी एक्शन हो जाएगा। मक्खन सर एकदम। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिवीजन चल रहा है तो अभी यहीं पर बता देता हूं, कि भाई अगर सी ने सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट कर रखा है, सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट में क्या होता है, सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट में हम लोग बोलते हैं, ले भाई बिल मैं इंडोर्स तो कर रहा है, लेकिन तुम मेरे ऊपर स्यू नहीं कर सकता, अगर फ्यूचर में बिल डिसऑनर हो जाए तो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता, ये होता है सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट। अगर सी फॉर चाणक्य बुद्धि है, सी फॉर चाणक्य बुद्धि, वो सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट किया, तब सी को तो कोई स्यू नहीं कर सकता, इसका मतलब तब ई और डी, ये वाला ई और ये वाला डी फिर सी को स्यू नहीं कर सकता। तब अगर सी के पास ये बिल नेगोशिएशन बैक के बाद आ जाता है ना, क्योंकि ई और डी सी को नहीं स्यू कर सकता, क्योंकि सी ने सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट किया है, क्योंकि सी ने सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट किया है, क्योंकि सी ने सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट किया है, तो ई और डी सी को स्यू नहीं कर सकता। समझ में आया क्या? सी ने क्या किया, सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट किया, तो नोबडी कैन स्यू सी, तो ई और डी सी को स्यू नहीं कर सकता। अब अगर ये बिल घूम फिर करके सी के पास आता है ना, नेगोशिएशन बैक होकर के, तो ये वाला सी ई और डी को भी स्यू कर सकता है, क्योंकि ई और डी इस बार सी को स्यू नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट। सो इफ दिस सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट
घूम फिर करके ये वाला बिल सी के पास नेगोशिएट बैक होकर के आता तो ये वाला सी ई और डी को सेव कर सकता है। जबरदस्त सर, ऑसम। क्वेश्चन देखो, कैन सी, बिना सेंस रिकॉर्ड्स के, कैन सी स्यू ई एंड डी इफ द बिल इज डिसऑनर्ड? नो, बिकॉज ई डी हैड द राइट टू स्यू सी। क्लियर है सर, बट इफ इट वाज सेंस रिकॉर्ड्स तब तो हो जाता। मक्खन सर, जबरदस्त। 6 टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट्स में आ जाइए बॉयज एंड गर्ल्स। 6 टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट्स आ जाइए। 6 प्रकार का इंडोर्समेंट। 6 टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट में 3 देसी 3 विदेशी, 3 देसी 3 विदेशी, 3 देसी और 3 विदेशी। बच्चा पूछ रहा है सर आप लाइव बैच लेते हो कि आप जीडीपीडी देते हो? मैं बच्चों को बता दूं, समय समय पर लाइव एट होम बैच भी आता है और जीडीपीडी वही लाइव एट होम बैच को हम लोग रिकॉर्ड करके देते हैं। ठीक है, तो लाइव बैच भी चलता है और जीडीपीडी भी चलता है। सर कहां से बुकिंग करना पड़ता है? www.meplclasses.com, यहां से बुकिंग करना पड़ता है बेटा, यहां से meplclasses.com से। अब दोबारा मत पूछना बेटा, meplclasses.com में जाओ, कोर्स सिलेक्ट करो और टना टन टन अपना कोर्स बुक कर लो और सही हाथों में जुड़ जाओ, सही हाथों के साथ जुड़ जाओ, सही जगह आ जाओ, तुम्हारा बल्ले बल्ले है। 6 टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट्स, 6 प्रकार के इंडोर्समेंट्स। तीन देसी 3 विदेशी, नाम है रे ऐसा, देसी नाम और विदेशी नाम। सुनो, ब्लैंक इंडोर्समेंट, ब्लैंक और एक नाम होता है जनरल इंडोर्समेंट, फिर होता है स्पेशल और एक नाम होता है स्पेशल इंडोर्समेंट का फुल इंडोर्समेंट, फिर सेंस रिकॉर्ड, सेंस प्राइस, फैकल्टेटिव। ठीक है, 6 प्रकार के इंडोर्समेंट होता है। ब्लैंक यानी जनरल, स्पेशल यानी फुल, फिर सेंस रिकॉर्ड्स, अरे ब्लैंक यानी जनरल, फिर स्पेशल यानी फुल। तो ब्लैंक, जनरल इंडोर्समेंट, स्पेशल और फुल इंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, फिर सेंस रिकॉर्ड, सेंस प्राइस, फैकल्टेटिव। चलो, ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट, थोड़ा फास्ट यार, रिवीजन चल रहा है, तुम लोग भूल जाते हो क्या? हाँ, ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट में क्या होता है? ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट बेसिकली कंटेन्स सिग्नेचर ऑफ द इंडोर्सर। ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट कंटेन्स, इंडोर्सर खाली क्या कर देता है? साइन कर देता है। ठीक है, अच्छा, इंडोर्समेंट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एलोंगे व्हिच मींस राइटिंग ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। राइटिंग ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखते हो? इंडोर्स्ड एंड साइन बाय द इंडोर्सर। So it has originated from Latin word elonge, which means writing on the back of the instrument. Okay. Blank endorsement में क्या होता है? इंडोर्सर खाली साइन कर देता है, इंडोर्स कर देता है, इंडोर्सी का नाम नहीं लिखा हुआ रहता, इंडोर्सी का नाम नहीं लिखा हुआ रहता, इसलिए पेबल टू बेयरर हो जाता है। स्पेशल और फुल इंडोर्समेंट में हम साफ साफ लिखते हैं इंडोर्स टू भरत और टू हिज ऑर्डर, इट विल कंटेन द नेम ऑफ द इंडोर्सी एंड पेबल टू हिज ऑर्डर, पे टू राम और टू हिज ऑर्डर। रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट में क्या होता है? इंडोर्सर जो है ना लिख देता है पे टू राम ओनली, ताकि राम और किसी को इंडोर्स नहीं कर सके। इंडोर्सर रेस्ट्रिक्ट्स द फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लाइक पे टू राम ओनली। सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट, सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट, रिकॉर्स अभी थोड़े पहले मैंने समझा दिया था। सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट, यस सर, कि भाई जो इंसान सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट करेगा आप उसको स्यू नहीं कर सकते। क्लियर है सर। सेंस प्राइस इंडोर्समेंट में क्या होता है? आप बिल के ऊपर किया हुआ खर्चा भी उससे रिकवर नहीं कर सकते हैं। सेंस रिकॉर्ड्स में क्या होगा? अगर मैं सेंस रिकॉर्ड्स कर रहा है, बिल अगर डिसऑनर हो जाए, मेरे को सू नहीं कर सकता तुम बिल का अमाउंट के लिए। सेंस प्राइस अगर मैं कर रहा है, बिल के ऊपर जो खर्चा हुआ है जैसे नोटिंग चार्ज वगैरह, वो भी मैं रिकवर, तुम मेरे से रिकवर नहीं कर सकता, मैं नहीं देगा वो सब। तो होता है सेंस प्राइस इंडोर्समेंट। और फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट क्या होता है? फैकल्टेटिव जो है ना, डोंकी लोग करता है फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। इंडोर्सी को बोलता है, अगर इंडोर्सी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर में बिल डिसऑनर हो जाए ना, तो नॉर्मली इंडोर्सी अपना प्रायर पार्टी लोगों को स्यू कर सकता है नोटिस ऑफ डिसऑनर देकर के। लेकिन अगर मैंने फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट किया है बिना नोटिस ऑफ डिसऑनर भी है, तुम मेरा गला पकड़ सकते हो, मेरे को स्यू कर सकते हो। यह होता है फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। पार्टी कैन बी स्यूड विदाउट द नोटिस ऑफ डिसऑनर। अब आ जाओ, हे भगवान, सेलिब्रिटी सेक्शन, सेलिब्रिटी सेक्शन आ जाइए। सेलिब्रिटी सेक्शन के अंदर सेलिब्रिटी सेक्शन में आपका स्वागत है। सेलिब्रिटी सेक्शन में आपका स्वागत है। सेक्शन 138 बाउंसिंग ऑफ चेक, यहां से टन टना टन टन देखो,
पूरा लाइन बाय लाइन चलता रहेगा बाउंसिंग ऑफ चेक से रिलेटेड। फटाफट जुड़ जाइए। पूरा सेक्शन 138 का पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग। 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143A, 148, मतलब लाइन बाय लाइन। मतलब यहां से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन भयानक है, भयानक, आना ही आना है। चलिए आ जाइए, सेक्शन नंबर 138, बाउंसिंग ऑफ चेक। सेक्शन नंबर 138, बॉयज एंड गर्ल्स, बाउंसिंग ऑफ चेक। चलिए आ जाइए। हाँ जी, देखो भाई, बाउंसिंग ऑफ चेक में नियम क्या होता है, देख लो पूरा। देखो, बाउंसिंग ऑफ चेक सेक्शन 138 कब अट्रैक्ट होगा? ड्रॉयर ने चेक इशू किया पेई को। ड्रॉयर ने चेक इशू किया ना पेमेंट करने के लिए। मान लो मिस्टर ए ने चेक इशू किया बी को पेमेंट करने के लिए, तो ड्रॉयर हो गया ए जिसने चेक इशू किया बी को पेमेंट करने के लिए, मतलब बी हो गया पेई। और क्यों चेक इशू किया? लायबिलिटी चुकाने के लिए, कोई एडवांस देने के लिए नहीं, कोई गिफ्ट देने के लिए नहीं। इट वॉज नॉट एन एडवांस, इट वॉज नॉट अ रक्षाबंधन गिफ्ट, इट वॉज फॉर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। द चेक वॉज इशूड फॉर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। इट वॉज इशूड फॉर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। चाहे वो लायबिलिटी तुम थोड़ा सा पेमेंट कर रहे थे या पूरा चुकता कर रहे थे, इट वॉज पेड फॉर लायबिलिटी पेमेंट, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी इन पार्ट और फुल। अब बेचारा पेई जो बी था उसने चेक डिपॉजिट किया एंड डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड इन द ड्रॉयर्स बैंक अकाउंट। बी ने अपने बैंक में चेक जमा किया और क्योंकि ए के खाते में पैसा नहीं था, चेक वॉज डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड इन एज बैंक अकाउंट। अब नियम क्या होता है जब चेक डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड? पेई पेई जो कि बी है, जिस दिन बी को पता चला बैंक से कि भाई चेक तो डिसऑनर हो गया है क्योंकि ए के अकाउंट में पैसा नहीं था बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड, द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, मेरे को 30 डेज का टाइम मिलेगा, पेई को 30 डेज का टाइम मिलेगा। वो एक रिटन नोटिस देगा डिमांडिंग इज पेमेंट फ्रॉम ए। सो पेई विल इशू अ रिटन नोटिस टू ड्रॉयर डिमांडिंग इज पेमेंट। अच्छा, पेई के पास कितना दिन का टाइम है? 30 डेज का टाइम है। 30 डेज कहां से? जिस दिन बैंक ने मेरे को इंफॉर्मेशन दिया कि चेक हैज बीन डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड, पेई विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव बाय हिम विल इशू अ रिटन नोटिस डिमांडिंग इज पेमेंट। और जिस दिन रिटन नोटिस मिल गया ड्रॉयर को, 15 दिन के अंदर पेमेंट करेगा। पेई विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द इंटीमेशन शैल इशू रिटन नोटिस टू ड्रॉयर डिमांडिंग द पेमेंट। मैं 30 डेज के अंदर रिटन नोटिस देगा तेरे को और तू यानी ड्रॉयर 15 दिन के अंदर मेरे को पेमेंट करेगा। जिस दिन तेरे को नोटिस मिल गया वहां से 15 दिन के अंदर तू मेरे को पेमेंट करेगा। फेलिंग विच, अगर 15 दिन के अंदर तुमने पेमेंट नहीं किया तो ड्रॉयर को 2 साल तक का जेल या फिर फाइन भरना पड़ेगा उसको। जितना चेक बाउंस हुआ है उसका ट्वाइस, 10 लाख का चेक बाउंस हुआ, 20 लाख का फाइन भरना पड़ेगा और बोथ। पूरा मक्खन की तरह क्लियर है। एकदम मक्खन की तरह क्लियर है। imprisonment up to 2 years, समझ में आ गया सर? imprisonment up to 2 years और फाइन up to twice the amount of check और both। फिर से ये 7 पॉइंट सुन लो। बाउंसिंग ऑफ चेक सेक्शन 138 का कब अट्रैक्ट होता है? ड्रॉयर ने चेक इशू किया फॉर मेकिंग पेमेंट टू पेई, ड्रॉयर ने चेक इशू किया फॉर मेकिंग पेमेंट टू पेई
एंड इट वाज द चेक इशूड फॉर द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, आइदर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए था, एडवांस या गिफ्ट के लिए नहीं था, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए था, आइदर इन पार्ट और इन फुल। पेई ने चेक जमा किया और it was dishonored because of insufficient fund in the drawer's bank account. The check was dishonored. Now payee will have 30 days time, that within 30 days from receiving the intimation that the check is dishonored, he will have to issue a written notice to drawer demanding his payment, and drawer on receiving the notice within 15 days he will make the payment, failing which up to 2 years imprisonment or fine up to twice the amount of check, or both. मक्खन सर, ये वाला केस देखो और बताओ सेक्शन 138 अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। चेक इशूड एज गिफ्ट एंड बाउंस, नहीं अट्रैक्ट होगा। लायबिलिटी के लिए जब चेक बाउंस होता है तभी अट्रैक्ट होता है। लोन मैंने दिया था, चेक से वो बाउंस हो गया, नहीं अट्रैक्ट होगा। रीपेमेंट लेकिन अगर मैं कर रहा था, लोन का रीपेमेंट, लोन ले रखा था उसका रीपेमेंट कर रहा था और बाउंस हो गया, तब तो लायबिलिटी का चेक बाउंस हुआ है, तब यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखो। चेक इशूड टू लायबिलिटी होल्डर, चेक वॉज इशू टू लायबिलिटी होल्डर, मैंने चेक इशू कर दिया अपने क्रेडिटर को, हाँ चेक इशू कर दिया मैंने अपने क्रेडिटर को और स्टॉप पेमेंट करा दिया। चेक इशू तो कर दिया क्रेडिटर को और क्या करवा दिया, स्टॉप पेमेंट। बैंक को फोन करके बोल दिया मैंने क्रेडिटर को चेक इशू किया है, बैंक स्टॉप पेमेंट, स्टॉप पेमेंट। वो तो क्रेडिटर सर के ऊपर नाच रहा था इसलिए एक बार चेक दे दिया, स्टॉप पेमेंट कर। या फिर आज लायबिलिटी होल्डर कि भाई चेक एक हफ्ता बाद जमा करना, लेकिन लायबिलिटी होल्डर एक हफ्ता बाद नहीं, तुरंत चेक जमा कर दिया। या तो मैंने लायबिलिटी होल्डर को बाद में चेक जमा करने बोला था लेकिन उसने तुरंत कर दिया, या मैंने बैंक को स्टॉप पेमेंट करने बोला था, ये भी बाउंसिंग ऑफ चेक माना जाएगा। क्योंकि तुम तो लायबिलिटी होल्डर को ऐसे हैरेस कर रहे हो, टरका रहे हो, चेक इशू करते हो और बैंक को बोलते हो स्टॉप पेमेंट, ये भी बाउंसिंग ऑफ चेक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मोदी सीमेंट लिमिटेड वर्सेस कुशिल कुमार नंदी। मोदी सीमेंट लिमिटेड, ठीक है, कंट्रोल करना अपने भावनाओं को। मोदी सीमेंट लिमिटेड वर्सेस कुशिल कुमार नंदी। एडवांस दिया क्रेडिटर को, हाँ तो एडवांस आना, बाउंसिंग ऑफ चेक अट्रैक्ट नहीं होगा, भले चेक बाउंस हो गया, सेक्शन 138 अट्रैक्ट नहीं होगा। जबरदस्त जबरदस्त, अद्भुत, ऑसम ऑसम, सुपर्ब। सेक्शन 139 क्या बोलता है, अगर वाकई में देखो जब भी चेक बाउंस होगा ना तो कोर्ट जो है ना, कोर्ट हमेशा ड्रॉयर को शक के नजरों से देखेगा। मान लो मैंने अपनी बहन को चेक दिया, रक्षाबंधन गिफ्ट दिया और बाउंस हो गया, मैंने अपनी सिस्टर को राखी का गिफ्ट दिया और वो चेक बाउंस हो गया, मेरी बहन मेरे ऊपर केस कर दी बाउंसिंग ऑफ चेक का, मेरे को 30 डेज के अंदर रिटर्न नोटिस दी, पैसा दे, मैंने नहीं दिया, 15 दिन में वो केस कर दी बाउंसिंग का। कोर्ट ड्रॉयर को ही शक के नजरों से दिखेगा। सर आप तो बोले थे गिफ्ट में अट्रैक्ट नहीं होता, मेरे को ये साबित करना पड़ेगा कि ये गिफ्ट था एंड इट वाज नॉट अ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। द ओनर्स टू प्रूव दैट इट वाज अ गिफ्ट एंड इट वाज नॉट अ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी विल लाई ऑन द ड्रॉयर। सेक्शन 139 बोलता है द कोर्ट विल टेक अ जनरल अजम्पशन दैट, कोर्ट तो एज्यूम करके चलेगा भाई कि जो चेक बाउंस हुआ है ना वो लायबिलिटी होल्डर का ही था, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव बाय द ड्रॉयर। अगर कॉन्ट्ररी है तो मेरे को साबित करना पड़ेगा, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव बाय द ड्रॉयर। हाँ 11 लाख का गिफ्ट, अरे बेशमो, हाँ दिव्या मैम बिल्कुल सही जवाब। और भाई जितना मेहनत दिव्या अग्रवाल मैम करती हैं, दिखता नहीं है, मेरा मेहनत दिख जाता है, बट दिव्या मैम भी जो है ना एकदम लगातार डटे रहती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उनका सेशंस भी मिस ना करें। पूरी MEPL की टीम, सारी फैकल्टीज जो है आपके लिए एकदम जी जान लगा देती है। आगे बढ़ रहे हैं, ये हो गया सेक्शन 138। 139 तो बाउंसिंग था। 139 क्या बोलता है, 139 बोलता है कोर्ट विल टेक अ जनरल assumption that the check which has got bounced it was issued to liability holder unless drawer proves the contrary। 140 क्या बोल रहा है, 140 बोल रहा है ड्रॉयर को ये कोई डिफेंस नहीं है, ड्रॉयर कैन नॉट टेक इट एज अ डिफेंस कि हमको तो नहीं पता था ना कि मेरा चेक बाउंस हो जाएगा, गलती से हो गया, मेंस रिया गिल्टी माइंड नहीं था, गलती से हो गया। इट इज नॉट अ डिफेंस दैट ड्रॉयर हैड नो आइडिया दैट चेक इशू टू लायबिलिटी होल्डर विल गेट बाउंस, ये कोई डिफेंस नहीं है, सेक्शन 140 बोलता है। 141 बोलता है कंपनी का अगर चेक बाउंस हुआ है, जिस समय चेक इशू किया गया था उस समय जो ऑफिसर इंचार्ज थे वो लायबल होंगे। आई रिपीट, कंपनी का जो चेक इशू किया गया और बाउंस हो गया, तो जिस समय चेक इशू किया गया था जो ऑफिसर इंचार्ज, वो लायबल होंगे। इफ कंपनी चेक गॉट बाउंस, ऑफिसर इन डिफॉल्ट
at the time when the check was issued would be liable. मक्खन सर 142 cognizance of offense, मतलब किस कोर्ट में जाकर के केस लड़ा जाएगा? बाउंसिंग ऑफ चेक का किस कोर्ट में जाकर के जो है केस लड़ा जाएगा? देखो, अगर पेई ने क्या किया, चेक जो है ना अपने बैंकर के पास जमा किया, तो केस फाइल होगा उस कोर्ट में जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर मेरा बैंक ब्रांच लाई करता है। समझ में आ गया सर? अरे पेई भाई सुनना, पेई ने जिस बैंक में चेक जमा किया, पेई ने अपने बैंक में चेक जमा किया होगा। जनरली 99% केसेस में पेई अपने बैंक में चेक जमा किया, चेक बाउंस हो गया। द केस विल बी फाइल्ड इन दैट कोर्ट अंडर हुज जुरिस्डिक्शन, उस कोर्ट के अंदर जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, जिस कोर्ट के एरिया में पेई का बैंक ब्रांच लाई करता है। और बाद बाकी केस में इन एनी अदर केस उस कोर्ट में केस लड़ा जाएगा जहां पर ड्रॉई बैंक ब्रांच लाई करता है। ड्रॉई बैंक ब्रांच मतलब ड्रॉयर का बैंक। इन एनी अदर केस इन दैट कोर्ट अंडर हुज जुरिस्डिक्शन ड्रॉई बैंक ब्रांच लाइज। मक्खन तो बहुत सिंपल है, किस कोर्ट में केस लड़ा जाएगा? बाउंसिंग ऑफ चेक का। पेई ने अगर अपने बैंक में चेक जमा किया तो ऑब्वियस बात है पेई का बैंक ब्रांच जिस कोर्ट के अंडर आता है उस कोर्ट में लड़ा जाएगा। इन एनी अदर केस ड्रॉई बैंक जिस कोर्ट के अंदर आता है, ड्रॉई बैंक ब्रांच जिस कोर्ट के अंदर आता है उस कोर्ट के अंदर केस लड़ा जाएगा। क्या समरी ट्रायल हो सकता है? समरी ट्रायल मतलब फटाफट केस को स्पीडी डिस्पोजल करना। स्पीडी डिस्पोजल किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। सेक्शन 143 बोलता है द कोर्ट, जहां पर सेक्शन 138 वाला केस फाइल हुआ है। पहले बात तो ये बताओ कि वो कौन सा कोर्ट रहेगा, क्या औकात रहेगा? कोर्ट का भी तो अलग अलग लेवल होता है ना। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहेगा। द कोर्ट वेयर सूट विल बी फाइल्ड इन रिलेशन टू सेक्शन 138 शैल बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। हाँ, इन लोग स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस ट्राई कर सकता है, स्पीडी डिस्पोजल कर सकता है। समरी ट्रायल मतलब स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस। समरी ट्रायल का मतलब होता है बेटा स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस। बट मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 2 साल की जगह, फिर फटाफट हो रहा है ना, तो 2 साल की जगह 1 साल का ही सजा होगा और फाइन 5000 और बोथ। कोर्ट अगर समरी ट्रायल कर रहा है लेकिन लगा नहीं यार ये तो जल्दी नहीं होगा, तो उसको नॉर्मल ट्रायल में कन्वर्ट कर सकता है। कोर्ट ने एक बार समरी ट्रायल चालू कर दिया और ड्यूरिंग समरी ट्रायल लगा नहीं इतना फटाफट नहीं हो सकता, ये बहुत झोल झाल है, तो उसको नॉर्मल ट्रायल में कन्वर्ट कर सकता है कोर्ट कभी भी। सेक्शन 143A में आओ, पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कॉम्पेंसेशन। सेक्शन 143A, बॉयज एंड गर्ल्स फटाफट आ जाइए सेक्शन 143A के अंदर। सेक्शन 143A के अंदर आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। 143A, पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कॉम्पेंसेशन। देखो, बाउंसिंग ऑफ केस का, बाउंसिंग ऑफ चेक का जो केस है, तुमको क्या लगता है? बाउंसिंग ऑफ चेक का जो केस है तुमको क्या लगता है तुरंत खत्म हो जाएगा? सालों साल चलता है, 5 साल 7 साल 10 साल तक केस चलता है। तो बेचारा पेई तो रूखा सूखा ही बैठा है केस करके। पेई बेचारा, पेई को तो पैसा मिलना था, चेक बाउंस हो गया, ड्रॉअर के ऊपर केस कर दिया, 10 साल तक बैठा रहा है। तो इसलिए सेक्शन 143 आया जो कि बोलता है इंटरिम कंपेंसेशन कोर्ट जो है अवॉर्ड कर सकता है। द कोर्ट कैन ऑर्डर कि है ड्रॉयर चल 20%, मैक्सिमम 20% कोर्ट जो है ना ड्रॉयर को बोल सकता है चल इंटरिम कंपेंसेशन दे, मैक्सिमम 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक बाउंस विद द पे। तो कोर्ट के पास पावर है, वो ड्रॉयर को बोल सकता है ड्रॉयर चल पेई को रूखा सूखा मत रख, 20% ऑफ जो चेक तेरा बाउंस हुआ ना 20% जमा कर पेई को, मैक्सिमम 20%। अब जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया ड्रॉयर को, अप टू 20% तक कोर्ट कुछ भी अमाउंट ऑर्डर कर सकता है। ड्रॉयर विल पे सच अमाउंट टू पे। ड्रॉयर वो इंटरिम कंपेंसेशन पे, केस चलेगा, कौन सच कौन झूठ बाद में, पहले 20% जमा कर पे को। ड्रॉयर वो रुपया जमा करेगा पे को विद इन 60 डेज ऑफ सच ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। हाँ, फर्दर 30 डेज मिल सकता है इफ देयर इज अ जेन्युइन कॉज, तब कोर्ट उसको फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है। मतलब ड्रॉयर वो 20% मैक्सिमम अमाउंट जो पे को देगा विद इन 60 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट प्लस मैक्सिमम 30 डेज। अच्छा, बाद में अगर ड्रॉयर केस जीत गया, बाद में अगर ड्रॉयर केस जीत गया, पता चला ड्रॉयर सही था, पे बदमाश था, ड्रॉयर केस जीत गया, तब क्या होगा? तब पे को ऑर्डर किया जाएगा चल तेरे को जो इंटरिम कंपेंसेशन मिला था ना बदमाश, चल वापस कर ड्रॉयर को विद इन 60 डेज प्लस 30 डेज का एक्सटेंशन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। इफ लेटर ऑन ड्रॉयर गेट्स एक्विटेड, एक्विटेड मतलब बाइज्जत बरी, जीत गया केस। कन्विक्टेड मतलब दोषी, एक्विटेड मतलब नॉट दोषी, क्लीन। सो इफ लेटर ऑन ड्रॉयर गेट्स एक्विटेड, तो पे चल रिफंड कर
जो भी अमाउंट तेरे को मिला चल रिफंड कर, वो भी ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट एट बैंक रेट ऑफ आरबीआई प्रीवेलिंग एट द स्टार्ट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट में बैंक रेट ऑफ आरबीआई प्रीवेल करोगा उस ब्याज के साथ रिफंड कर, एंड पे रिफंड कर देगा वो अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट विद इन 60 डेज प्लस फर्दर 30 डेज इफ अलाउड बाय द कोर्ट। सर इंटरेस्ट कब से चार्ज होगा? जिस दिन पे को रुपया मिला था वहां से लेकर के इंटरेस्ट चार्ज होगा जब तक वो रिफंड नहीं कर देता। ये था 143A। सेक्शन 148 मिलता जुलता है। अब क्या हुआ ना, मान लो से फॉर एग्जांपल हायर कोर्ट में केस चला गया, पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट टू ऑर्डर द पेमेंट पेंडिंग द अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। मान लो ड्रॉयर कन्विक्ट हुआ, ड्रॉयर कन्विक्ट हुआ, ध्यान से, हां ड्रॉयर कन्विक्ट हुआ। मान लो ड्रॉयर कन्विक्ट हुआ, ड्रॉयर वाज कन्विक्टेड बाय द लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट ने ड्रॉयर को कन्विक्ट किया कि भाई तुम गलत है, पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। अब ड्रॉयर चला गया एपिलेट कोर्ट, हायर अथॉरिटी के पास, हायर कोर्ट के पास। अब वो एपिलेट कोर्ट बोलेगा तेरा अपील सुनेंगे, ड्रॉयर रुक, तुम लोअर कोर्ट से हार कह रहा है, पहले पेई को तुम रुपया जमा कर। देख, इफ ड्रॉयर फाइल्स एन अपील टू द एपिलेट कोर्ट, ड्रॉयर इज फाइलिंग एन अपील टू द एपिलेट कोर्ट अगेंस्ट द लोअर कोर्ट ऑर्डर बिकॉज लोअर कोर्ट हैज कन्विक्टेड द ड्रॉयर। तब अपीलेट कोर्ट क्या करेगा? अपीलेट कोर्ट ड्रॉयर को बोलेगा चल पेई को रुपया जमा कर, मिनिमम 20%। 143A में मैक्सिमम 20% है, यहां मिनिमम 20% है। जनरल प्रैक्टिस हम आपको बताते हैं, एपिलेट कोर्ट लोग जो है ना 100% रुपया जमा करने बोल देता है, या 80% 70%, मतलब ह्यूज चंक जमा करवाता है पेई के पास, क्योंकि ऑलरेडी वो लोअर कोर्ट में केस हार गया। 10 साल बाद तो फैसला आया लोअर कोर्ट का डैश, अब एपिलेट कोर्ट में 5-7 साल केस और चलेगा। तो इसलिए एपिलेट कोर्ट को भी पता है, इसलिए वो ड्रॉयर को बोलता है भाई तुम केस हार गए हो, एक बार तो 80% 90% 100% जो भी हम बोल रहे हैं जमा करो, मिनिमम 20% हम पक्का बोलेंगे, शैल कंपल्सरी, मिनिमम 20% तुम बोलेंगे कि पेई को दो। कितना दिन के अंदर दोगे? वही 60 प्लस, बल्ले बल्ले सेम है डेज, 60 प्लस 30 डेज। अब बाद में अगर एपिलेट कोर्ट में ड्रॉयर एक्विट हो गया, हाँ बाइज्जत बरी हो गया, जीत गया केस ड्रॉयर, तब फिर वही होगा, पेई जो है पूरा रुपया रिफंड करेगा ड्रॉयर को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रेट, जब से उसको रुपया मिला था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वही बैंक रेट ऑफ आरबीआई रिफंड करेगा। और कितना दिन? वही 60 प्लस 30। इफ लेटर ऑन ड्रॉयर इज एक्विटेड, जीत गया केस ड्रॉयर, पे शैल रिफंड विद इंटरेस्ट विद इन 60 प्लस 30 डेज। मक्खन सर ये एग्जाम में आ सक आया हुआ नहीं है, ठीक है, बट कमिंग सून बॉयज एंड गर्ल्स, कमिंग सून। याद रखना सेक्शन 143A जो है ना, ये केवल नए केसेस के ऊपर है, पुराने पेंडिंग केसेस के ऊपर नहीं है, ये अमेंडमेंट था, तो ये प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा बिकॉज इट वाज ऑल टुगेदर अ न्यू सेक्शन। 143A का प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है बिकॉज इट वाज ऑल टुगेदर अ न्यू सेक्शन। केस का नाम है, कोई तुमको नहीं बताएगा, इंस्टीट्यूट की किताब में भी नहीं मिलेगा, ये मेरा रिसर्च है जो तुमको पता चल रहा है। जी जे राजा वर्सेस तेजराज सुराना, एग्जाम में ये क्वेश्चन डी है, कभी भी आ सकता है। 143A पुराने केसेस के ऊपर लागू नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है 143A का। कहां बोला गया प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है? कोर्ट में ने बोला, जी जे राजा वर्सेस तेजराज सुराना का जजमेंट है। और 148 जो है ना, ये पहले भी था, तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा, ये पुराने केसेस के ऊपर भी लागू होगा। 143A खाली नए केसेस के ऊपर लागू होता है, 148 रेट्रोस्पेक्टिव पुराने केसेस के ऊपर भी लागू होता है। इसका केस का नाम क्या था? अजय विनोद चंद्र शाह, अजय विनोद चंद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। केस लॉ का नाम भी याद कर लेना। तो 143A का प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, जीजे राजा वर्सेस तेजराज सुराना में बोला गया, और 148 का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, अजय विनोद चंद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बोला गया। रेगुलर बैच में केस भी समझाया जाता है, बट अभी मैराथन रिवीजन चल रहा है। मक्खन है सर। मैच्योरिटी डेट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, बिल्कुल सर। मैच्योरिटी डेट क्या रहता है बिल का? स्पेसिफाइड डेट जब मैच्योर हो रहा है प्लस 3 डेज ग्रेस। अगर मैच्योरिटी पब्लिक हॉलिडे पे पड़ रहा है तो आप इमीडिएटली, पब्लिक हॉलिडे पे पड़ रहा है तो प्रीसीडिंग डे ले लेते हैं, सडन हॉलिडे पे पड़ रहा है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे ले लेते हैं। क्लियर है सर? फिर जो काम का चीज है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। मटेरियल ऑल्ट्रेशन में आ जाओ, मटेरियल ऑल्ट्रेशन में आ जाइए।
पढ़िए। अरे 2 लाइन तो खुद से पढ़ो भाई। चलो स्टार्ट करते हैं मटेरियल ऑल्टरेशन। भाई मटेरियल ऑल्टरेशन क्या होता है देखो, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूरा कैरेक्टर या ऑपरेशन ही बदल दे, राइट एंड लायबिलिटी को ही चेंज कर दे, वो मटेरियल ऑल्टरेशन है। जैसे आपने टाइम डेट प्लेस चेंज कर दिया, ठीक है, आपने टाइम डेट प्लेस चेंज कर दिया, अमाउंट पेएबल ही चेंज कर दिया, इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, ये सब क्या होता है बेटा, मटेरियल ऑल्टरेशन होता है। सो इफ यू चेंज द टाइम डेट प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल, तब ये मटेरियल ऑल्टरेशन होता है। सचिन गड़ेकर बेटा कुछ भी मत बकवास किया करो बेटा, जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ लो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस तरीके से डिस्टर्ब मत करो। चेंज इन टाइम डेट प्लेस, ठीक है, चेंज इन अमाउंट पेबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब मटेरियल ऑल्टरेशन होता है। मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, हम चैट बॉक्स जो है वो क्लोज कर रहे हैं, आई एम क्लोजिंग द चैट बॉक्स। क्लोज ही है तो बहुत बढ़िया बात है। तो चेंज इन टाइम डेट प्लेस पेमेंट, अमाउंट पेबल में चेंज करना है, सुनना है इधर सुन, अमाउंट पेबल चेंज कर दिया, इंटरेस्ट का रेट चेंज कर दिया, ये सब मटेरियल ऑल्टरेशन। अरे बाबा, तो सर मटेरियल ऑल्टरेशन का इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? वो इंस्ट्रूमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा। Any material alteration will render the negotiable instrument as void. Void against the party who has made such material alteration. तुमने अगर मटेरियल ऑल्टरेशन किया है तो तुम अब उसको इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते हो, वॉइड हो गया। मैं चाहूं तो अभी भी एक्शन ले सकता हूं। इट इज वॉइड अगेंस्ट द पार्टी हु हैज मेड सच मटेरियल ऑल्टरेशन। मक्खन सर, जबरदस्त। फिर डिसऑनर, आपको पता है डिसऑनर बिल का 2 तरीके से होता है, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस एंड नॉन पेमेंट। ये सब इजी इजी टॉपिक्स है जो ऑलरेडी हम लोग रेगुलर बैच में बहुत बढ़िया से डिस्कशन कर रखे हैं, आपको खुद से एक बार रीड कर लेना रहेगा। सारे टफ टॉपिक्स जो है वो मैंने आपको करवा दिए, एनआई एक्ट के सारे टफ टॉपिक्स जो है वो मैंने आपको करवा दिए भाई, ठीक है। तो लोग अक्सर जो है ना कंप्लेन किया करते थे कि सर एनआई एक्ट का कोई रिवीजन नहीं करवाता है। मैं आपको बता दूं, ये 1.5 घंटा जो अभी तक आपने रिवीजन किया है, जो भी 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट, जो भी ये रिवीजन सुपर से भी ऊपर है। मतलब यही रिवीजन से एग्जाम में आप समझ लो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में यही रिवीजन से क्वेश्चन आते हैं। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हमने सब रिवाइज कर लिया, छोड़कर आपको कुछ भी नहीं जाना है। खैर, बट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स मैंने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से रिवीजन करवाया है। आई रियली होप यू हैव लाइक्ड द रिवीजन। आई रियली होप दैट आपको रिवीजन बहुत जबरदस्त लगा है ना? यस सर।
अब जैसे आपने आज सुबह प्लान कर लिए थे उसी तरीके से अपने आगे बढ़ रहे हैं। 1 PM अपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के लिए मिल रहे हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स 1 PM। ठीक है, फिर 2:30 PM जनरल क्लॉज एक्ट होगा। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल 4 PM इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। बेलमेंट प्लेज, इंडेमनिटी गारंटी, और ये टाइमलाइंस अपने स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं आज एजेंसी। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है सीए इंटर सीएस एग्जीक्यूटिव दोनों के है। जनरल क्लॉज एक्ट सीए इंटर सीएस एग्जीक्यूटिव दोनों के है। लेकिन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सभी के सीए सीएमए इंटर एंड एग्जीक्यूटिव। और मैंने बोला ना, जिसको ये नहीं पता उसके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, वो रिवीजन का हकदार ही नहीं है। तो ये तो मत पूछना ये है कि नहीं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स।
आ जाओ बेशर्मो। फास्ट फास्ट फास्ट। Let us hear it, boys and girls. Interpretation of statutes. Interpretation of statutes. बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। 1 घंटा लगेगा मैक्स आपको पूरा रिवीजन करवाने में, ठीक है। सो प्लीज अच्छे से फोकस करके जो है पढ़ते चलिए, अच्छे से फोकस करके पढ़ते चलिए। मैक्स टू मैक्स 1 आवर लगेगा मेरे को ये बोला पूरा चैप्टर आपको बढ़िया से रिवीजन करवाने में। सो लेट अस हिट इट, लेट अस हिट इट, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। और ये सब रिवीजन जो है ना, मतलब 4 चांद लगा देता है। मतलब तुमको जितना सेल्फ स्टडी करने में टाइम लगता, खुद से बिना रिवीजन किए, बिना मेरे रिवीजन करवाए, तुम सेल्फ स्टडी में करने में, सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ रिवीजन करने में जितना समय लगता, तुम देखोगे 80% तुम्हारा टाइम बच जाएगा। मेरा ये 1 घंटा, ठीक है, तुम खुद से रिवीजन करते तुम्हारा 5-7 घंटा लगता। मेरा ये 1 घंटा, अब तुम्हारा खुद का 1-2 घंटा, पूरा ये वाला चैप्टर डन एंड डस्टेड। So never undermine the importance of the revision sessions. These are very, very important revision sessions which are going on. Chalo. Interpretation of statute. What do you mean by statute? Statute means the will of the legislature. Statute का definition क्या होता है? It means the will of the legislature. Interpretation of statute को अगर हम लोग बोले क्या होता है? Understanding the underlying meaning of law. It means understanding the underlying meaning of law, understanding the will of legislature. Interpretation of statute means understanding the will of legislature, understanding the meaning of law. There are 2 rules of interpretation. एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मतलब क्या? लॉ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं? लॉ बना दिया गया, उसको पढ़ेंगे कैसे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उसका मीनिंग कैसे ढूंढेंगे? तो रूल्स लगाते हैं। ये रूल्स जो है खाली इंडिया में फॉलो नहीं होता, इंटरनेशनली फॉलो होता है। ये कोई एक्ट नहीं है, ये चैप्टर कोई एक्ट नहीं है। internationally worldwide accepted rules of interpretation है। There are worldwide rules of interpretation which prevails throughout the world. वही रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई इंडिया का कोर्ट हो, चाहे कोई कोर्ट अमेरिका का हो, कोर्ट्स लोग यही सब रूल्स लगा करके कानून को इंटरप्रेट करते हैं। प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल। सबसे पहले ऑब्वियस बात है, हम लोग प्राइमरी रूल को क्रैक करेंगे, फिर सेकेंडरी रूल को क्रैक करेंगे। तो पेश है प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जी हां, सबसे पहला प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। जो सबसे पहला प्राइमरी रूल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ ना? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन भाई बहुत सिंपल सा बात बोलता है,
कि द वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस यूज इन द लॉ, द वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस यूज इन द लॉ, जो भी वर्ड्स है, फ्रेजेस है, सेंटेंसेस है, यूज इन द लॉ, उसको आप इंटरप्रेट करेंगे बाय यूजिंग नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर एंड नॉर्मल इंग्लिश लिटरेचर। अरे इंग्लिश ग्रामर लगाने का, इंग्लिश लिटरेचर लगाने का और लॉ को पढ़ डालने का, कोई एक्स्ट्रावेगेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीनिंग नहीं लगाने का। द वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस यूज इन द लॉ। देख रहे हो ना रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या है? द वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस यूज इन द लॉ, वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस यूज इन द लॉ will be interpreted, words, phrases and sentences used in the law will be interpreted by giving their most ordinary, natural and popular meaning। जितने भी words used हुए लॉ के अंदर, लॉ में जो भी words used हुए हैं, the words, phrases and sentences used in the law will be interpreted by giving them their most popular, ordinary and natural meaning। कोई extraordinary meaning नहीं देना है, जो meaning चलता है उन लोग का वही देना है, ordinary, natural and popular। and applying the rules of normal English grammar and normal English literature। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का नाम आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा। क्या आया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का नाम? स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन कुमार। सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन कुमार gave the following observation on literal construction। सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस पवन कुमार। तो स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिया रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन में? वही जो अभी हम लोग पढ़े कि लॉ जो है ना, इट विल बी इंटरप्रेटेड बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर। बट if by applying normal English grammar and literature, by doing so it leads to repugnancy, absurdity, repugnancy and absurdity हो जा रहा है, inconsistency आ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोला पहले आप इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर लगाइए, लगा करके अगर आपको लग रहा है हाँ ये तो एब्सर्ड मीनिंग निकल रहा है, इनकंसिस्टेंट मीनिंग निकल रहा है, रिपग्नेंट यानी एब्सर्ड मीनिंग निकल रहा है, तब आप मीनिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, एब्रिज कर सकते हैं। तब आप वर्ड का जो मीनिंग है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, एब्रिज कर सकते हैं, टू रिमूव सच रिपग्नेंसी बट नो फर्दर। Then only the meaning can be modified, extended or abridged to remove such repugnancy and no further। And the onus to prove that the words don't mean by their ordinary, natural and popular meaning it is leading to repugnancy will lie heavily on the party who alleges that the word will have a different meaning। मतलब अगर तुम बोल रहे हो नहीं नहीं वर्ड का ऑर्डिनरी मीनिंग से रिपग्नेंसी आ जा रहा है, तो तुमको साबित करना पड़ेगा रिपग्नेंसी। The onus to prove that the words don't mean what they say lies heavily on the party who alleges it। He should clearly advance some proof regarding such transgression यानी रिपग्नेंसी। मक्खन सर जबरदस्त। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन कुमार में क्या बोला कि भाई रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन ही लगाना है, हर लॉ को तुम इंटरप्रेट करोगे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन लगा करके अनलेस इट लीड्स टू रिपग्नेंसी। सो वर्ड्स का मोस्ट ऑर्डिनरी पॉपुलर एंड नेचुरल मीनिंग लगाना है, वर्ड्स का मोस्ट ऑर्डिनरी पॉपुलर नेचुरल मीनिंग लगाना है by applying rules of English grammar and English literature। But if by doing so if it leads to repugnancy यानी absurdity, inconsistency, then only the meaning of the word can be modified, extended, abridged to remove such repugnancy but no further। But the onus to prove that the words don't mean what they say will lie heavily on the party who alleges it। He will have to clearly advance some proof to prove the repugnancy and then only the meaning can be modified, extended or abridged। तो पहला वाला प्राइमरी रूल, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन एकदम दिमाग में बेटा, एकदम दिमाग में बैठ चुका है बेटा। लिटरल कंस्ट्रक्शन, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन दोनों सेम है। लिटरल कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम क्या रहता है? रूल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। ये हो गया अपना सबसे पहला रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अपने अगर बात करें अभी तो हेडेंस रूल। हेडेंस रूल का और एक नाम क्या रहता है बेटा? हेडेंस रूल का और एक नाम आपका रहता है बेटा, हेडेंस रूल इज आल्सो नोन एज रूल ऑफ मिसचीफ या रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी लोग इसको बोलते हैं। हेडेंस रूल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रूल ऑफ मिसचीफ, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी इसको बोलते हैं। देखो मेन इसका क्रक्स क्या है? मेन इसका क्रक्स ये है कि व्हेन लॉ is ambiguous and capable of more than one interpretation, when the words used in the law are ambiguous, doubtful, capable of multiple interpretation, then that meaning will be taken, that interpretation and that meaning will be taken by which we can suppress the mischief, we can punish the wrong done। पापी का सर्वनाश हो वही वाला मीनिंग लेंगे, जिससे पापी छूट जाए वो मीनिंग नहीं लेंगे, वो वाला मीनिंग लेंगे जिससे पापी का सर्वनाश हो।
ये लाया गया था 1584 में, हेडेंस केस इन इंग्लैंड में, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सोदरा देवी भी यही बोल रखा है कि ये रूल कब अप्लाई होगा, ओनली व्हेन द वर्ड्स यूज्ड इन द लॉ। हमारा सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सोदरा देवी बोला हेडेंस रूल हम लोग तभी अप्लाई करेंगे व्हेन द वर्ड्स यूज्ड इन द लॉ आर एम्बिगुअस, capable of multiple interpretation. That meaning of the word will be taken by which we can suppress the mischief, punish the wrong done, advance the remedy. कोई भी कोर्ट ये हेडेंस रूल लगाने के पहले ना 4 फैक्टर कंसीडर करता है। हेडेंस रूल लगाने के पहले 4 फैक्टर कंसीडर किया जाता है। ये रहा वो 4 फैक्टर्स, ये रहा वो 4 फैक्टर्स जो कंसीडर किया जाता है कि भाई ये जो नया लॉ आया इसके पहले कौन सा जनरल लॉ था, What was the common law prevailing before making of this act? ये नया एक्ट के पहले क्या जनरल लॉ था? What was the mischief यानी डिफेक्ट that common law did not provide for? नया एक्ट लाया है उसके पहले क्या कॉमन लॉ था, और उस कॉमन लॉ में क्या ऐसा चीज था, ठीक है, जो वो डिफेक्ट को सुधार नहीं सक रहा था, मिसचीफ को पनिश नहीं कर सक रहा था, तभी तो नया एक्ट आया। तो व्हाट वाज द मिसचीफ, है ना, एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट एंड रेमेडी फॉर विच पार्लियामेंट पास द एक्ट। नया एक्ट पार्लियामेंट किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, किस मिसचीफ को पनिश करने के लिए लाया, एंड व्हाट वाज द ट्रू रीजन ऑफ सच रेमेडी, व्हाट वाज द ट्रू रीजन बिहाइंड सच रेमेडी। ये चार्टो दिमाग में रखना, आपको याद करना है ये चार्टो फैक्टर्स, ठीक है, कि व्हाट वाज द कॉमन लॉ प्रिवेलिंग बिफोर पासिंग ऑफ द न्यू एक्ट, व्हाट वाज द कॉमन लॉ प्रिवेलिंग बिफोर पासिंग ऑफ द न्यू एक्ट, व्हाट डिफेक्ट्स डिड द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड फॉर, व्हाट डिफेक्ट डिड द कॉमन लॉ, व्हाट मिसचीफ और डिफेक्ट डिड द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड फॉर, एंड व्हाट वाज द ट्रू रीजन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट, what was the object that the parliament tried to achieve by passing the new act, and the true reason of such remedy. रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। प्राइमरी रूल में दो पढ़ चुके हैं, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन हो गया और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी हो गया, हिडेंस रूल और रूल ऑफ मिसचीफ बोलते हैं उसको। तीसरा वाला है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? हाँ जी, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में क्या होता है जी? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बॉयज एंड गर्ल्स, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में when the on the same subject matter there are more than one law, सब्जेक्ट मैटर कितना है? एक, उसके बाद लॉ अनेक। तो किस लॉ को फॉलो करें? जब सब्जेक्ट मैटर एक है और उसके ऊपर लॉ के अलग अलग प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या करें? सारे प्रोविजन को इस तरीके से फॉलो करो कि सारे प्रोविजन का बात रख लिया जाए जितना हद तक हो सके। कंबाइन ऑल द मल्टीपल प्रोविजन एंड फॉलो द कंबाइंड प्रोविजन इन द मैनर दैट नन ऑफ द प्रोविजन गेट्स डिफीटेड। पढ़ो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। When on the same subject matter there exists more than one provision, then we should combine those provisions and follow the combined provision in such a manner that none of the provision gets defeated. इसका भी केस का नाम आपको याद रखना है, राज कृष्णा वर्सेस विनोद कानूनगो। क्लियर है सर? जैसे आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं कि एजीएम जो है ना 15 मंथ्स ऑफ लास्ट एजीएम में होना चाहिए, पढ़ते हैं ना, एजीएम शुड बी हेल्ड विदिन 15 मंथ्स, एजीएम मस्ट बी हेल्ड विदिन 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम। फिर एक तो रहता है एजीएम मस्ट बी हेल्ड विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। किसको फॉलो करें यार? कोई बोल रहे एजीएम कर लो 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम, और एक प्रोविजन बोल रहे आप एजीएम करो विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो लास्ट एजीएम से 15 महीना में करें कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 6 महीना में करें? सर दोनों को फॉलो कर लीजिए, यानी विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो भी पहले है ना, विच एवर इज अर्लियर तक आप पहले कर लीजिए, इससे दोनों प्रोविजन फॉलो हो जाएगा। Here we apply harmonious construction to give effect to both the provision. AGM should be held in the earlier of the above two dates. 15 months of last AGM, 6 months from end of financial, whichever is earlier में कर लो, दोनों प्रोविजन फॉलो हो जाएगा। जैसे तुम एक सब्जेक्ट मैटर हो अपने मम्मी पापा के, तुम्हारी मम्मी तुमको बोल रही है बेटा रात को 10 बजे के पहले घर आना। मम्मी बोल रही है रात को 10 बजे के पहले घर आना, पापा बोल रहे हैं बेटा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं घर ही मत आना। नहीं नहीं, तुम बेटा नॉर्मल बच्चे हो, आतंक नहीं हो। तुम्हारे पापा बोल रहे हैं रात को 11 बजे के पहले घर आना, मम्मी बोल रही है रात को 10 बजे के पहले घर आओ, पापा बोल रहे हैं रात को 11 बजे के पहले घर आओ। यार किसको फॉलो करें यार? दोनों को फॉलो करो यार, दोनों का बात रह जाए तो विच एवर इज अर्लियर। 10 बजे के पहले आ जा। अगर तुम 10 बजे के पहले आ गया तो मम्मी का भी बात रह गया, पापा का भी बात रह गया, क्योंकि 10 बजे के पहले तो 11 बजे के भी पहले ही हुआ ना। क्लियर है सर? मक्खन सर। और एक प्राइमरी रूल है, रूल ऑफ
एडजस्टम जनरस। ऐसा लगता है हैरी पॉटर है आप। रूल ऑफ एडजस्टम जनरस, बिल्कुल रूल ऑफ एडजस्टम जनरस। अब ये एडजस्टम जनरस क्या होता है? ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज। ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज मतलब क्या होता है सर? मान लो लॉ में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे गए हैं, लॉ में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे गए which belong to a particular class and the class was not exhausted, मतलब क्लास में और भी किस्म के वो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। so when law contains certain specific words which belong to a particular class but the class is not yet exhausted, suddenly a general word come. The general word will not be interpreted in a wider fashion. No, the general word will also belong to the same class. The general word will take its color, will take its meaning, color means meaning, from the preceding specific words and belong to the same class to which this preceding specific words belong to. For example, कानून बनाया गया कि एक जू को लेकर के, जूलॉजिकल पार्क को लेकर के कानून बनाया गया, जू विल कंटेन लायन, टाइगर एंड अदर्स. Zoo will contain, according to law, zoo will contain lion, tiger and others. तो lion, tiger specific है, बिल्कुल सर. Law contains specific word lion, tiger. They belong to a particular class of wild animal. The class is not yet exhausted. Other wild animals also exist. But suddenly a general word came, others. The others general word cannot be interpreted in a wider fashion to include anything and everything. हम और तुम भी आ जाएंगे क्या others में? अब बहस चल रहा है. Lion, tiger and other लिखा हुआ है. Zoo will contain lion, tiger and other. तो other के अंदर हम और तुम भी आ जाते हैं. Other के अंदर cow, buffalo को भी डाल देते हैं. कोई भी जानवर को डाल देते हैं. अदर्स के अंदर डोमेस्टिक एनिमल को भी डाल देते हैं, क्योंकि कानून में तो लिखा हुआ लाइन, टाइगर एंड अदर. तो अदर के अंदर तो काऊ बफेलो भी आएगा? नहीं आएगा भाई, बिकॉज लॉ कंटेन्स स्पेसिफिक वर्ड लाइन, टाइगर विच बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ वाइल्ड एनिमल. एंड इफ सडनली अ जनरल वर्ड लाइक अदर्स कम, इट विल टेक इट्स मीनिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड्स. लाइन, टाइगर क्या है? वाइल्ड एनिमल. तो अदर में भी वाइल्ड एनिमल आएगा. मक्खन सर देखो, रूल ऑफ एडजस्टम जनरस, इट मीन सेम काइंड और स्पीसीज. ये लॉ कैसे अप्लाई होता है? द रूल इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर. व्हेन लॉ कंटेन सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, द क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड, इट इज फॉलोड बाय अ जनरल वर्ड. द जनरल वर्ड कैनॉट बी इंटरप्रेटेड इन अ वाइडर फैशन. इट विल टेक इट्स मीनिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड्स एंड बिलोंग टू द सेम क्लास ओनली. ठाकुरा सिंह वर्सेस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, केस का नाम याद रखना. एग्जाम्पल, जू कंटेन लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड अदर. तो अदर विल इंक्लूड, ये जो अदर है, इट विल इंक्लूड वाइल्ड एनिमल ओनली. प्राइमरी रूल ही अभी भी चल रहा है. नेक्स्ट प्राइमरी रूल अपना है बेटा, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन. अपना नेक्स्ट प्राइमरी रूल है बेटा, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन. रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? जब एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि हम लोग लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर का रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं. ये कब लगाते हैं? देखो, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन का पहला केस है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? अटरस मैगिस वेलियट क्वाम परियट. अटरस मैगिस वेलियट क्वाम परियट. क्या बोले रे बाबा, क्या बोले? अटरस मैगिस वेलियट क्वाम परियट. अटरस मैगिस वेलियट क्वाम परियट. ये रहा, अटरस मैगिस वेलियट क्वाम परियट. अटरस मैगिस वेलियट क्वाम परियट मतलब यही है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का लैटिन. अटरस मैगिस वेलियट क्वाम परियट. अटरस मैगिस वेलियट क्वाम परियट. रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन बोलता है अटरस मैगिस वेलियट क्वाम परियट कि rather than giving grammatical meaning to the words, we should give them sensible meaning. It will be applied as per which instead of literal, sensible meaning will be given to the words of the law. Common sense rule भी बोलते हैं, reasonable construction को common sense rule भी बोलते हैं कि plain literal meaning से void हो जा रहा था तो sensible meaning दे दे रहे बाबा. नेक्स्ट रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, एक तो हो गया रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन के अंदर तीन ठो रूल है. रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हो गया, एक होता है कंजंक्टिव डिसजंक्टिव रूल. कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव रूल में समझ में आता है ना, एंड और. बहुत सारा कानून है जिसमें एंड जो है ना वो रिपग्नेंट हो जा रहा है तो उसको और की तरफ पढ़ना पड़ता है, और को एंड की तरह. समटाइम्स एंड इज रेड एज और इज रेड एज एंड. इसका एग्जांपल भी हम लोग सीखे थे सेक्शन 7 ऑफ ऑफिस सेक्रेटरीज एक्ट 1920, ठीक है ना. तो इसमें एंड को
या और को हम लोग वाइसा वर्सा करके पढ़ते हैं, और को एंड की तरह पढ़ते हैं, एंड को और की तरह। मक्खन सर। और एक रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंसेप्शन, एक तो एंड और वाला हो गया। कॉमन सेंस रूल को ही रूल ऑफ रीजनेबल कंसेप्शन बोलते हैं, वो हो गया अट्रस मैगिस वैलिएट कॉम्परिएट। दूसरा था कंजंक्टिव डिसजंक्टिव रूल, समटाइम एंड इज रेड एज और इज रेड एज एंड। फिर तीसरा आ गया मे मस्ट शैल वाला। बेटा मे मतलब क्या होता है? ऑप्शनल, यू मे डू दिस। बट शैल मतलब क्या होता है? कंपल्सरी। बट कभी कभार लॉ में जो मे लिखा हुआ रहता है ना, उसको शैल की तरह पढ़ना पड़ता है, बिकॉज मे वाला ऑप्शनल वाला ना रिपग्नेंट एब्सर्ड मीनिंग दे रहा था, तो उसको शैल की तरह पढ़ेंगे। और कभी कभार शैल जो कि कंपल्सरी होता है, उसको मे की तरह, ऑप्शनल की तरह पढ़ना पड़ता है। समटाइम्स मे इज रेड एज शैल, शैल इज रेड एज मे। क्लियर सर? जैसे अगर आपको पता हो कंपनी लॉ में लिखा हुआ ना, कंपनी में भी फॉर्म फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 3 में कंपनी में भी फॉर्म फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। अच्छा, कंपनी में भी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस, मतलब हीरोइन गांजा का भी धंधा कर सकते हो, ऑप्शनल है लॉफुल पर्पस। ड्रग्स का भी तुम लोग खेती कर सकते हो, नहीं। तो ये जो वर्ड में है, किसकी तरह इंटरप्रेट किया जाएगा? शैल की तरह। ये लॉफुल ऑब्जेक्ट कंपल्सरी है। जोरदार तालियां। प्राइमरी रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग सेकेंडरी, और ये और मजेदार है, सेकेंडरी और अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन तो और मजेदार है दोस्तों। सेकेंडरी एंड अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन तो और मजेदार है, आ जाओ। सेकेंडरी एंड अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्राइमरी रूल में क्या क्या पढ़ा बताओ ना? 5 पढ़ा ना। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, हेडेंस रूल, उसका और एक नाम क्या है? रूल ऑफ मिसचीफ, और एक नाम बताओ? रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। फिर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल। उसके पहले हम लोग पढ़े एडजस्टम जेनेरिस, ठीक है, एडजस्टम जेनेरिस। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एडजस्टम जेनेरिस हो गया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी हो गया। फिर एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन के अंदर 3 तो सब रूल पढ़े। एक तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन यानी कॉमन सेंस रूल, अट्रस मैगिस वैलिएट कॉम्परिएट, कंजंक्टिव डिसजंक्टिव रूल, है ना, और फिर शैल और मे वाला। मक्खन सर, मक्खन मक्खन। अब आ जाओ सेकेंडरी। सेकेंडरी एंड अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सेकेंडरी एंड अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, बॉयज एंड गर्ल्स फटाफट, सेकेंडरी एंड अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो मैं आपको मुंह जवानी पढ़ा रहा हूं। मुंह जवानी समझ में आता है? मुंह जवानी एंड मुंह जवानी दोनों, मुंह से जवान होना, मुंह है ना, चलो मुंह जवानी पढ़ो। सेकेंडरी एंड अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन गाइस। एक्सप्रेसियो पहला वाला है, एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसियो ऑल्टरियस। एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसियो ऑल्टरियस। एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसियो ऑल्टरियस। एक्सप्रेसियो यूनिस, एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव ऑल्टरियस। सर इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव ऑल्टरियस मतलब एक्सप्रेस मेंशनिंग ऑफ वन थिंग, एक्सप्रेस मेंशनिंग ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। एक बात जो कह दिया उससे बहुत सारा बात जो है अपने आप नेगेटिव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। एक्सप्रेस मेंशनिंग ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। जैसे अगर मान लो से फॉर एग्जांपल राहुल, राहुल अपने हर जगह स्टेटस लगा दिया कि आई लव रीता, तो फिर सीता गीता उसको परेशान करी है, मेरा क्या होगा, मेरे से प्यार नहीं करते क्या? अरे भाई उस समय राहुल को खाली एक ही चीज बोलना चाहिए, एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव ऑल्टरियस। एक्सप्रेस मेंशनिंग ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। मैंने बोल दिया आई लव रीता, तो सीता गीता का कोई चांस कहां से है? फिर भी सीता गीता क्लैरिफिकेशन मांग रही है, हमसे प्यार नहीं करते क्या? हमसे नहीं भाई, बोल तो दिए। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। ये नाम याद करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव ऑल्टरियस। एक्सप्रेस मेंशनिंग ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। जैसे तुम मान लो एमसीक्यू कर रहे हो, ऑप्शन ए को करेक्ट बताते हो, ऑप्शन ए को टिक मार के आते हो, तो क्या बीसीडी को कट कट करके आते हो? तुम लोग तो बोले नहीं बीसीडी गलत है सर, ए बोल दिए सही है तो बीसीडी ऑटोमेटिकली सर गलत है। सो एक्सप्रेस मेंशनिंग ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। गॉट इट सर, गॉट इट। दूसरा वाला तो बम फोड़ने वाले हैं, सेकेंडरी रूल दूसरा वाला तो बम फोड़ने वाले हैं। कॉन्टेम्पोरोनिया एक्सपोजिटियो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। कॉन्टेम्पोरोनिया एक्सपोजिटियो एस्ट ऑप्टिमा
एट फोर्टिसिमा इन लेगे। हाँ सर, बहुत जोर से लगे। सर इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्पोरानिया एक्सपोजिटियो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। इसका मतलब ये होता है कॉन्टेम्पोरानिया जब भी आएगा तो समझ जाना क्या है। कॉन्टेम्पोरानिया जब भी आएगा तो ये बोलना चाह रहा है भाई कि लॉ मान लो बहुत साल पहले बना था, बहुत सालों पहले, ऐसा होता ही है, डेकेड्स पहले लॉ बनते हैं, सेंचुरीज पहले लॉ बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पूरा सेंचुरी पुराना लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेंचुरीज हैव पास्ड। तो लॉ अगर बहुत पहले बना तो ऑब्वियस बात है जो उसमें वर्ड्स यूज हुए होंगे ओवर सो मेनी इयर्स, द वर्ड्स माइट हैव अंडरगॉन द चेंज इन देयर मीनिंग। जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसके मीनिंग हो सकता है इतने सालों में चेंज हो गए हो, लेकिन आप नया वाला मीनिंग नहीं लीजिएगा, चेंज वाला मीनिंग मत लीजिएगा। लॉ को आपको इंटरप्रेट करना है वही मीनिंग देकर के जो प्रिवेल करता था जिस दिन लॉ बना था। भले 100 साल पहले लॉ बना तो 100 साल पुराना वाला ही मीनिंग से आप लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। समझ में आ गया सर? ऑसम, जबरदस्त। तीसरा क्या है? नोसिटर असोसिएट्स। नोसिटर असोसिएट्स मतलब नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। नोसिटर असोसिएट्स, नोसिटर असोसिएट्स मतलब, नोसिटर असोसिएट्स मतलब नोन बाय इट्स एसोसिएट्स, नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। नोन बाय इट्स एसोसिएट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल, आज मान लो से फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं सचिन तेंदुलकर एंड लारा। सचिन तेंदुलकर एंड लारा वर्ल्ड के दो ग्रेटेस्ट बैट्समैन थे। सचिन तेंदुलकर एंड लारा वर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बैट्समैन, टू वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बैट्समैन। अब लारा दत्ता बोल रही है थैंक यू मोहित सर। अरे लारा दत्ता जी आपके लिए नहीं बोले। बोला नहीं आपने पूरा नाम नहीं बोला ना, आपने पूरा नाम नहीं बोला, आपने सचिन तेंदुलकर एंड लारा बोला तो मैंने सोचा लारा दत्ता। अरे यार सचिन के साथ कौन सा वाला हम लोग लारा का बात कर रहे होंगे? ब्रायन लारा का। तो इट्स इंप्लाइड नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। ये कोर्ट लोग कब इंटरप्रेट करता है? जब मान लो राहुल और राज दोनों बेस्ट फ्रेंड है, दोनों साथ में ही घूमते हैं राहुल और राज, और राहुल कोर्ट में जाकर के गवाही दे दिया मेरे साथ राज भी था। राहुल बोल दिया, राहुल पर केस चल रहा था मर्डर का, तो राहुल ने कोर्ट में गवाही दे दिया हाँ मर्डर करते समय मैंने अकेले नहीं किया, राज भी मेरे साथ मिला हुआ था, और इतने में राहुल हार्ट अटैक से मर गया। अब कौन सा राज को पुलिस उठाएगी? हाँ, कौन सा राज को पुलिस उठाएगी? जो राहुल के साथ घूमता फिरता था वो वाला राज को, नोन बाय एसोसिएट्स। दुनिया में तो बहुत सारे राज है, सारे राज को जेल में डाल दे? नहीं, जो राहुल के साथ राज घूमता फिरता था वो वाला राज को उठाएगी। ये होता है नोसिटर सोशलिस्ट का मीनिंग। समझ में आ गया? क्लास में और भी बहुत सारे एग्जांपल देते थे, बट अभी के लिए इतना काफी है। नोसिटर सोशलिस्ट, जैसे अगर हम बोले से फॉर एग्जांपल अ बैग कंटेन्स टोमेटो पोटैटो एंड ऑयल। टोमेटो पोटैटो के साथ ऑयल है। अब ये ऑयल जो होगा ये हेयर ऑयल होगा कि कुकिंग ऑयल? भाई टोमेटो पोटैटो तो खाने पीने का चीज है, तो ये जो ऑयल है ये हेयर ऑयल है कि कुकिंग ऑयल? कुकिंग ऑयल माना जाएगा। वही अगर हम बोलते हैं माई बैग कंटेन्स टूथपेस्ट टूथब्रश सोप एंड ऑयल, तब ये वाला ऑयल कौन सा होगा? टूथपेस्ट टूथब्रश सोप एंड ऑयल के साथ कौन सा होगा? ये वाला ऑयल तो सर हेयर ऑयल होगा, कुकिंग ऑयल नहीं होगा। समझ में आ गया सर? नोन बाय एसोसिएट। सुपर्ब सर। समझ में आ गया? अब ये बात मत बोलना सर हम लोग तो ना सरसों तेल खाते हैं तो ना दोनों ही काम आ जाता है, कुकिंग ऑयल और हेयर ऑयल दोनों में। हाँ भाई तुम्हारा बात अलग है। तो ये थे सारे के सारे सेकेंडरी और अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो मैंने अभी आपको बताए। तो वी हैव कंप्लीटेड प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एज वेल एज सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन खत्म हुआ। अच्छा, इसके अलावा इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी आता है, उसका भी अपने लगे हाथों बात कर लेते हैं। इंटरनल एड एंड एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है बेटा उसका भी अपने लगे हाथों बात कर लेते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, है ना? सबसे पहले इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन।
ये बड़ा सिंपल टॉपिक रहता है, इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। हाँ जी, इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तुम लोग को पता है ना, एक्ट बनने के पहले तो वो बिल रहता है भाई, एक्ट तो बाद में बनता है, एक्ट बनने के पहले तो वो बिल रहता है। हाँ सर बिल्कुल, एक्ट बनने के पहले तो बिल रहता है। तो अगर एक्ट को इंटरप्रेट करना है ना, तो यार उसके अंदर झांक लो, बिल के अंदर झांक लो, तुम अपने आप लॉ को इंटरप्रेट कर सकोगे। ऐसा क्या रहता है सर? बेटा टाइटल रहता है, ठीक है ना, टाइटल। इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन के सबसे पहले क्या रहता है? टाइटल। शॉर्ट टाइटल डज नॉट हेल्प इन इंटरप्रिटेशन, लॉन्ग टाइटल हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन। लाइक सीआरपीसी अगर हम बोले, कुछ समझ में नहीं आएगा, इट डज नॉट हेल्प इन इंटरप्रिटेशन, लेकिन सीआरपीसी का फुल फॉर्म बोले, लॉन्ग टाइटल, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो समझ में आता है। ये क्राइम अगर होता है, ऑफेंस अगर होता है, तो क्या प्रोसीजर रहेगा जो अडॉप्ट किया जाएगा ऑफेंस को टैकल करने के लिए, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है कि अरेस्ट कैसे होगा, सर्च वारंट कैसे होगा। तो ये हो गया टाइटल, ठीक है। तो इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में एक हो गया टाइटल, दूसरा हो गया प्रीएम्बल। मैं बता दूं प्रीएम्बल मतलब क्या? ऑब्जेक्ट, इंटेंशन, यह क्यों पास किया गया, यह का ऑब्जेक्टिव क्या है, यह प्रीएम्बल में लिखा हुआ रहता है। तो एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव वो कहां लिखा हुआ रहता है? प्रीएम्बल में। क्या प्रीएम्बल एक एक्सेप्टेड इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन है? जनरली नो, बट जब लॉ एम्बिगुअस है, जब लॉ में एम्बिग्विटी है, तब हम लोग प्रीएम्बल रेफर करते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन। नॉर्मली प्रीएम्बल इज नॉट रेफर्ड, नॉट ट्रीटेड एज एन इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, बट इफ द लॉ इज एम्बिगुअस देन वी रेफर प्रीएम्बल एज एन इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इंटरनल एड के अंदर टाइटल आता है, प्रीएम्बल आता है, और बताओ भाई, और बताओ। बिल्कुल, हेडिंग्स एंड चैप्टर्स, मार्जिनल नोट्स, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशंस, शेड्यूल्स। हेडिंग एंड चैप्टर। अब जैसे कंपनीज एक्ट 2013 को उठा लो, द कंपनीज एक्ट 2013 डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इncidental thereto, चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो सोचो यार, अगर ये चैप्टर नहीं होता, 470 सेक्शन, मेरे को कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, मैं 470 सेक्शन में उलझ कर रह जाता, बुक क्रिकेट खेलता, कहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्रोविजन दिया हुआ है, मर ही नहीं, मिलता, मिलता तो मर जाता। तो इतना बड़ा एक्ट है द कंपनीज एक्ट 2013, 470 sections are there, it has been written in 29 chapters. Don't you think the chapter also helps you in interpreting the statute? Yes, it does. Now I know the chapter name incorporation of the company and matters incidental thereto, chapter number 2 lawmaker ने बना दिया incorporation of company matters incidental thereto. Now I know कि अगर मेरे को कंपनी incorporate करना है, मेरे को chapter number 2 पढ़ना है। मार्जिनल नोट्स, बेटा तुम सेक्शन का देखे हो, सेक्शन के भीतर बहुत सारा अपने जो है कैप्शंस रहते हैं, तो सेक्शन के भीतर जो बहुत सारे कैप्शंस रहते हैं, वही तो मार्जिनल नोट्स है। बचपन में हिस्ट्री पढ़े थे, हिस्ट्री में जब तुम कोई आंसर लिखते थे, पॉइंट वाइज लिखते थे ना, पॉइंट देकर के फिर उसको एक्सप्लेन करते थे, वही तो मार्जिनल नोट्स है। लॉ मेकर भी करते हैं, लॉ मेकर भी वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं। टेन्योर डैश दे करके फिर टेन्योर लिख दिया, क्वालिफिकेशन डैश दे करके क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन डैश दे करके डिस्क्वालिफिकेशन, वो टेन्योर, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, वही सब तो मार्जिनल नोट्स है भाई। एंड दीज आर रिगार्डेड एज इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्रोविजो मतलब क्या? एक्सेप्शन रे बाबा। When a portion of the section does not apply, when a portion of the section does not apply or applies with some modification, when a portion of the section does not apply or applies with some modification, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजो। लॉ में जितना भी प्रोविडेड एट तुम पढ़ते हो, वो सब क्या? एक्सेप्शन, प्रोविजो है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, मान लो कोई वर्ड लॉ में यूज हो गया, तो लॉ मेकर ना उस वर्ड को, उस सेक्शन में क्या समझाना चाह रहे हैं उस वर्ड के जरिए, उस सेक्शन में क्या
समझाना चाह रहे हैं उस वर्ड के जरिए, वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं अलग से, एक्सप्लेनेशन बोल करके। जैसे सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 46 में होल्डिंग कंपनी, क्लॉज नंबर 87 के अंदर, सेक्शन 2 का क्लॉज 87 सब्सिडियरी कंपनी के अंदर कंपनी, वहां पर बॉडी कॉर्पोरेट भी रहता है। सर क्या बोल रहे हैं? हाँ, नॉर्मली कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं रहता, बट उन्होंने क्लॉज 46 एंड क्लॉज 87 को एक्सप्लेनेशन में, उन लोग के एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि भाई हियर द वर्ड कंपनी शैल ऑल्सो इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट। एंड शेड्यूल तो पता ही है, शेड्यूल मींस लिस्ट, शेड्यूल मींस लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी हो सकता है कि कहां कहां एप्लीकेबल है, किस इंडस्ट्रीज के ऊपर लॉ एप्लीकेबल है, तो वो सब शेड्यूल में लिखा रहता है। जैसे बेलेबल ऑफेंस हो गया, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस पे बेल मिलेगा, कौन सा ऑफेंस पे बेल नहीं मिलेगा, ये सब शेड्यूल में लिखते हैं लॉ मेकर्स। क्लियर है, लिस्ट हो गया। ये सब थे इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मेरे को 7 इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का नाम बता दो। टाइटल, प्रियम्बल, हेडिंग एंड चैप्टर, मार्जिनल नोट्स, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन एंड शेड्यूल्स। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, कैन यू गिव मी सम एक्सटर्नल एड्स का एग्जांपल? बोलो। बड़ा सिंपल है। एक्सटर्नल एड मतलब एक्ट के अंदर मत झांक, नहीं मिलेगा मीनिंग, एक्ट के बाहर झांक। मैं तुम्हें बताता हूं, गूगल मत बोलो यार, डिक्शनरी बोल दो। गूगल कंपनी से जाकर के थोड़ी ना पूछोगे यार, डिक्शनरी बोल दो बेटा। मैं अगर तुम्हें बताऊं एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, कम ऑन गिव मी एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। डिक्शनरी, एक्ट के अंदर मत झांक, एक्ट के बाहर झांक। तुम बताओ ना, जब तुम कुछ चीज में अटकते हो तो तुम डिक्शनरी तो रेफर करते हो। हाँ, तुम्हारा डिक्शनरी गूगल है, बट डिक्शनरी तो रेफर करते हो रे बाबा। तो एक तो डिक्शनरी हो गया। सो एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में एक हो गया डिक्शनरी। डिक्शनरी के अलावा रेफरेंस टू द रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज, रेफरेंस टू द रिपोर्ट ऑफ द कमिटीज, रेफरेंस टू द रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज। तुमको क्या लगता है, पार्लियामेंट जो एक्ट पास कर रहा है क्या वही बनाता है? नहीं, एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, एक्सपर्ट कमेटी बनाती है लॉ। ये जो पार्लियामेंट में लोग हैं, इन लोग नहीं बनाते हैं, इन लोग पास करते हैं खाली। अब जैसे कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013 किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया? जे ईरानी। तो कंपनीज एक्ट 2013 में वही सारा बात लिखा हुआ है जो जे ईरानी कमेटी बनाया गया था, ईरानी कमेटी ने जो रेकमेंड किया। अब अगर कंपनीज एक्ट 2013 में तुमको कोई प्रोविजन नहीं समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल एड देख लो, वो कमेटी का रिपोर्ट उठा करके देख लो कि कमेटी क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है? तो कमेटी का रिपोर्ट उठा करके देख लेंगे। रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट्स, कभी हमारा एक्ट में अगर वो वाला पॉइंट क्लियर नहीं है और सेम पॉइंट दूसरे एक्ट में है, वहां से उठा लो यार, अदर स्टैट्यूट से तुम इंटरप्रेट कर लो, रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट्स। फॉरेन डिसीजंस को, फॉरेन केस लॉस को तुम रेफर कर लो। फॉरेन डिसीजंस हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बट हम लोग रेफर तो कर ही सकते हैं। सेम सिचुएशन हो सकता है इंडिया में पहली बार हुआ हो, बट ऐसा सेम सिचुएशन ऑलरेडी फॉरेन में हो रखा है, तो फॉरेन कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, हम लोग उसको रेफर कर सकते हैं। तुम लोग तो ज्यादातर फॉरेन केस लॉस ही अपने सिलेबस में पढ़ते हो। लाइफ का पहला केस लॉ बेलफॉर वर्सेस बेलफॉर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था ना, बेलफॉर वर्सेस बेलफॉर। हाँ, ये सारा भाई वर्सेस सारा भाई है, इंग्लैंड का केस था ना बेलफॉर वर्सेस बेलफॉर। यूज ऑफ फॉरेन केस लॉस, ठीक है। फिर अपना हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री कि पास्ट में पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करते आया है, ठीक है। तो अपना इतिहास ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वही सेम इतिहास ऑफ इंटरप्रिटेशन अपने फॉलो कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। फिर अपना जो इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन है, प्रीवेलिंग इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशन, प्रीवेलिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, प्रीवेलिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस जो हमारे इंडिया में इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन प्रिवेल कर रहे हैं, उससे भी हम लोग उसको मद्देनजर करके लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, उसको कंसीडर करके लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। सो कैन यू गिव मी 6 एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल एड्स? डिक्शनरी हो गया, रेफरेंस टू द रिपोर्ट ऑफ कमिटीज हो गया, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री हो गया, यूज ऑफ फॉरेन केस लॉज हो गया, रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट्स हो गया, एंड प्रीवेलिंग कंडीशंस इन आवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। क्लियर ना? यस सर, मजा आ गया सर, जबरदस्त जबरदस्त भाई। 45 मिनट्स ही लगा, 45 मिनट्स अप्रोक्स में तुम्हारा आईओएस पूरा का पूरा मैंने रिवीजन करवा दिया और तुम्हारे जेब के अंदर, ठीक है। जबरदस्त, अद्भुत।
सो दिस कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव रिवीजन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अब बारी है बेटा जनरल क्लॉज एक्ट का। अब बारी है बेटा जनरल क्लॉज एक्ट का। जनरल क्लॉजेस एक्ट। बच्चे लंच ब्रेक मांग रहे हैं भाई, लंच ब्रेक। ठीक है, लंच कर लो, लंच करके 15 मिनट सुस्ता भी लो, और खुद से आईओएस रिवीजन कर लो बेशरम बेहयाओं। मैंने अभी इतना ताबड़तोड़ रिवीजन करा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का, 15 मिनट खुद से रिवाइज कर ले। ठीक है, 15 मिनट खुद से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट रिवाइज कर रहे हो और 25 मिनट्स का लंच ब्रेक ले रहे हो। 15 मिनट्स फॉर सेल्फ रिवीजन ऑफ आईओएस एंड 25 मिनट्स लंच ब्रेक, सो which means we are meeting at 2:30. We are meeting at 2:30 p.m. Okay, for the General Clauses Act. चलो ठीक है, 2:30 आओ। टू थर्टी बेटा।
आ जाओ बेशर्मो। जनरल क्लॉज एक्ट 1897। आ जाइए। द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। और तुम लोग जो है ना खूब मस्ती कर रहे हो, चैट बॉक्स में हम देख रहे हैं। इतना मस्ती करना ठीक नहीं है। कंसंट्रेशन जो है ना वो हैम्पर होता है। कंसंट्रेशन पूरा का पूरा हैम्पर होता है। ठीक है। हाँ, रिवीजन ब्रेक में जाने के पहले हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए थे? हम लोग कंप्लीट कर लिए थे एनआई एक्ट एंड आईओएस, और अभी बारी है जनरल क्लॉज एक्ट का। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा जो है ना मस्ती के मूड में हैं चैट में, तो ये गलत बात है। तुम मस्ती कर रहे हो चैट में, लेकिन जो है ना तुम्हारा कंसंट्रेशन भी जो है ना हैम्पर हो रहा है। बाद बाकी लोग तो चैट ऑफ कर देते हैं, लेकिन तुम्हारा कंसंट्रेशन जो है वो हैम्पर हो रहा है। वो तुम्हें नहीं पता चल रहा। समझे? तो वक्त आ गया कि चैट ऑफ करके जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ाई हो। KSCS, कंट्रोल योर सेल्स। वीडियो देखो खाली अच्छे से लाइव। आ जाइए दोस्तों, फटाफट आ जाइए, फटाफट फटाफट, बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वेरी फास्ट। द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का रिवीजन अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फास्ट गाइस।
लेट्स स्टार्ट। सर नोट्स कहां मिलेंगे, नोट्स कहां मिलेंगे, नोट्स कहां मिलेंगे? 1000 से भी ज्यादा बार बता दिया गया है कि नोट्स कहां मिलेंगे। जब पूरा मैराथन आज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म रहेगा। अगर आपने भर रखा है पहले तो फिर से नहीं भरना है, नहीं भर रखा है तो भर देना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स कहां मिलेंगे, नोट्स कहां मिलेंगे, नोट्स कहां मिलेंगे? और भाई इतना कुछ तुम्हारे लिए मतलब जान दे दे रहा हूं, समझ लो इतना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, कंपनी लॉ का ऑलरेडी 2 मैराथन लिया गया, फिर ऑडिट का मैराथन लिया गया, आज अदर लॉस का मैराथन चल रहा है, रिमेनिंग और भी सब्जेक्ट्स के मैराथन जो है वो आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, है ना। तो भाई मेरे को ये चाहिए कि आप कंसंट्रेट करो, साथ साथ जो है लाइव लेक्चर मेरे साथ साथ देखते चलो। ठीक है, और एक बार चालू कर दियो तो फिर रुको मत। और हाँ, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करके स्प्रेड करो, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन कर ही सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना चालू करो, है ना। बहुत अच्छा नंबर लेकर के आना है और आएगा। जिस लेवल पर जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे को पूरा 100% यकीन है उनका अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि वो मेरा बात सुनते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं। मैं जो बोलता हूं मेरे बच्चे वही करते हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे को कुछ मानते हैं अपने लाइफ में। मैं देखता हूं कि बच्चे मेरा बात सुनते हैं, वुड टच, और रिजल्ट्स भी आता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट्स भी जबरदस्त दमदार आता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट। कितना अच्छा लग रहा है, चैट भी नहीं देखना पड़ रहा है ना, नहीं तो चैट में देखते देखते भी स्पीड कम हो जाता है। तो अब सिर्फ मैं हूं और तुम हो और कोई नहीं। चलो फोकस। द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, एटीट्यूड में मत मरो, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। स्टार्ट कर रहे हैं। यस, हियर वी गो। द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। बेटा, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया था, 3 मेन बातें मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन में द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के। स्टार्ट करें बॉयज एंड गर्ल्स? हाँ सर, स्टार्ट करिए। लेट अस स्टार्ट द revision of the General Clauses Act 1897. Let us hit it, boys and girls. The General Clauses Act 1897. इंट्रोडक्शन में 3 इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 है, ये क्या है? नाम में ही तो लिखा हुआ है द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। मैं बता दूं, अगर आप ये 1 घंटा का वीडियो देख लेंगे ना, पूरा आपके दिमाग में सब कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज 1 घंटा फुल कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि ट्रिकी चैप्टर है, इसका रिवीजन बाद बाकी हर चैप्टर के रिवीजन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो प्लीज फोकस करके देखते चलिए। द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, नाम से पता चल रहा है ना, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। बेटा इसके तो नाम से ही पता चल रहा है ना बेटा कि ये एक्ट जो है ना, ये डिफाइन करता है वर्ड्स को, एंड वही डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स हम लोग अलग अलग सेंट्रल एक्ट एंड लेजिस्लेशन में यूज करते हैं। सो दिस एक्ट इंटेंड्स टू प्रोवाइड जनरल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स। जनरल क्लॉजेस एक्ट मतलब जनरल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स देगा विच आर यूज्ड इन द सेंट्रल एक्ट एंड लेजिस्लेशन। सेंट्रल एक्ट एंड लेजिस्लेशन में बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, उन वर्ड्स का डेफिनेशन द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 से रेफर किया जाता है। हाँ, ऑब्वियसली अगर कोई सेंट्रल एक्ट खुद अपना वर्ड को डिफाइन करता है तब तो उसी का डेफिनेशन लेना है, बट अगर सेंट्रल एक्ट फेल्स टू डिफाइन अ पर्टिकुलर वर्ड, इफ अ पर्टिकुलर central act legislation has failed to define a particular word, the definition of that word will be taken from the general clause act 1897। ये लाया गया था, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, 11 मार्च 1897 को लाया गया था, 11 मार्च 1897, और एक कंसोलिडेट किया पुराने 2 जनरल क्लॉज एक्ट को, 1868 एंड 1887। ये है द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, लाया गया था 11 मार्च 1897 को, एंड इट कंसोलिडेट्स द 2 जनरल क्लॉजेस एक्ट, वन ऑफ 1868, अनदर वन ऑफ 1887। इस एक्ट को ना हम लोग लॉ ऑफ ऑल द लॉज भी बोलते हैं। बाद बाकी लॉ को कैसे पढ़ते हैं उसका भी तो कानून होना चाहिए। देखो कितना बढ़िया बात मैंने बोला है, कानूनों को पढ़ने का भी तो एक कानून होना चाहिए। अरे कानूनों को पढ़ने का भी तो एक कानून होना चाहिए, उसी कानून को हम लोग बोलते हैं द जनरल क्लॉज एक्ट 1897। इट इज अ लॉ ऑफ ऑल द लॉज। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्रिटेशन एक्ट इन मेनी कंट्रीज, इंटरप्रिटेशन एक्ट इन मेनी कंट्रीज। ऑब्जेक्ट, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्ट।
ये एक्ट का आखिर इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो एक्ट लाया गया बेटा, आखिर इस एक्ट का लाने का मकसद क्या है? द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का आखिर ऑब्जेक्ट क्या रहता है बेटा? दो इसका मेन ऑब्जेक्ट है। सेंट्रल एक्ट जो है ना, उसका लैंग्वेज को छोटा करना, टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट। क्योंकि क्या है ना, सेंट्रल एक्ट अगर बार बार सेम डेफिनेशन को रिपीट करते जाएगा, सेम वर्ड्स का सेम डेफिनेशन को रिपीट करते जाएगा, मीनिंगलेस है। तो यार तुम सेंट्रल एक्ट तुम डेफिनेशन वगैरह जो है ना मत दो, वो हम लोग जनरल क्लॉज एक्ट में दे दे रहे हैं। अगर वो डेफिनेशन तुमको फॉलो नहीं करना है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे वर्ड का कोई दूसरा डेफिनेशन रहे, तभी उस वर्ड को डिफाइन करो। But if you want to adopt the same definition, you don't have to define it, man. It is already defined in the General Clause Act 1897. So it shortens the language of the Central Act and provides uniformity to various Central Acts, है ना? नहीं तो अलग-अलग Central Act में हर शब्दों का अलग-अलग डेफिनेशन होगा तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ डेफिनेशन है, कंपनीज एक्ट में कुछ डेफिनेशन है, हर सेंट्रल एक्ट का कुछ अपना ही अपना डेफिनेशन होगा तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी। जनरल क्लॉज एक्ट कॉमन डेफिनेशन देता है जो कि सेंट्रल एक्ट में आप यूज करेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाता है सेंट्रल एक्ट में। इट शॉर्टन्स द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट बाय अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ द डेफिनेशंस। इट शॉर्टन्स द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट and it also provides uniformity of words and expression in the central act. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट का अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर मैंने आपको गाना भी गा करके सुनाया था एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के ऊपर। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। इसका मतलब जनरल क्लॉज एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है या वहां एप्लीकेबल है, यहां एप्लीकेबल है। रैदर ये बोलता है भाई इसका कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं है। जहां जहां सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल होगा वहां वहां जनरल क्लॉज एक्ट भी पीछे पीछे आ जाएगा उस सेंट्रल एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। तो तू जहां जहां चलेगा मेरा साया वहां वहां साथ रहेगा। सेंट्रल एक्ट जहां जहां चलेगा जनरल क्लॉज एक्ट साथ साथ चलेगा। The act does not mention territorial extent of the applicability of the act. Rather, it is applicable on all such territory जहां पर सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन वर्सेस केसी थापर में। बेटा रिवीजन चल रहा है, रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वर्सेस केसी थापर में कि ऐसा है, whatever the general clause act says regarding the definition of words or application of legal principles shall apply on all the central act and regulation, है ना? अच्छा स्टेट, देखो भाई जनरल क्लॉज एक्ट सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन को इंटरप्रेट करने के लिए काम आता है। इसका मतलब स्टेट एक्ट और रेगुलेशन को इंटरप्रेट करने के लिए, स्टेट एक्ट स्टेट लेजिस्लेशन को इंटरप्रेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर अपना स्टेट का जनरल क्लॉज एक्ट पास कर सकता है। बट इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द सेंट्रल, यानी जो आप पढ़ रहे हैं मेन जनरल क्लॉज एक्ट 1897। हमारा जो मेन जनरल क्लॉज एक्ट 1897 है ये बेसिकली सेंट्रल एक्ट लेजिस्लेशन को इंटरप्रेट करने के लिए काम आता है। इसका मतलब जो स्टेट एक्ट लेजिस्लेशन है उनको इंटरप्रेट करने के लिए स्टेट जनरल क्लॉज एक्ट पास किया जा सकता है, बट इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द सेंट्रल जनरल क्लॉज एक्ट 1897। रयारप्पन वर्सेस माधवी अम्मा, ये केस लॉ में क्या बोला गया था? रयारप्पन वर्सेस माधवी अम्मा में ये बोला गया था कि जो रख सकता है ना वो निकाल भी सकता है। इफ एनी फंक्शनरी हैज बीन गिवन द पावर टू अपॉइंट, it is assumed, it is deemed that he shall also have the power to remove. मेरे पास अगर पावर टू अपॉइंट है, अलग से भले ही नहीं लिखा हुआ है कि मेरे पास पावर टू रिमूव है, बट मेरे पास पावर टू रिमूव ऑटोमेटिकली रहेगा। इफ आई कैन अपॉइंट आई कैन रिमूव ऑल्सो। सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेशन। प्रियम्बल क्या होता है? ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में भी पढ़ा चुके थे। प्रियम्बल क्या होता है? हाँ, प्रियम्बल क्या होता है सर? प्रियम्बल में तो इंटेंशन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है कि एक्ट क्यों पास किया गया। क्या ये प्राइमरी एड ऑफ इंटरप्रिटेशन है? नहीं, ये जब आपका लॉ एम्बिगुअस रहता है तभी आप प्रियम्बल को रेफर कर सकते हो। बट कभी भी याद रखना, सेक्शन और प्रियम्बल यानी प्रोविजन और प्रियम्बल में कभी भी अगर टकरार हो गया तो सेक्शन जीतता है, प्रोविजन जीतता है। क्लियर है? डेफिनेशन का अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन मीन से भी चालू हो सकता है, इंक्लूड से भी चालू हो सकता है। जनरली जो डेफिनेशंस रहता है ना वो इनिशियल सेक्शंस में मेंशन रहता है, सेक्शन 2 सेक्शन 3 में मेंशन रहता है। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारा डेफिनेशन सेक्शन 2 में मेंशन रहेगा। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का ही ले लो, इसका सारा डेफिनेशन सेक्शन 3 में मेंशन है। शैल में ये सब ऑलरेडी पता है, शैल मतलब कंपलसरी, मे मतलब ऑप्शनल, बट समटाइम्स टू इंटरप्रेट द लॉ वी रीड शैल एज मे एज शैल। जो भी डेफिनेशन मीन से रहता है वो एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव रहता है। ठीक है, एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव, पत्थर का लकीर, कह दिया ना बस कह दिया। बट जो भी डेफिनेशन इंक्लूड से चालू होता है, इंक्लूड्स वाला डेफिनेशन इंक्लूसिव इन नेचर है, इंक्लूसिव इन नेचर, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो।
प्रियम्बल का बात ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। प्रियम्बल क्या देख लो, प्रियम्बल इट एक्सप्रेसेस स्कोप ऑब्जेक्ट एंड इंटेंशन ऑफ द एक्ट, इट एक्सप्रेसेस स्कोप ऑब्जेक्ट एंड इंटेंशन ऑफ द एक्ट। जब भी कुछ भी एम्बिग्यूटी रहता है ना, whenever there is ambiguity in understanding the provision of the act, then preamble can be referred as an internal aid to construction, but it can never override, मैंने बताया ना, preamble can never override the provisions। एग्जाम्पल अगर बोले preamble of the Companies Act 2013 क्या है, it is an act to consolidate and amend the law relating to companies, consolidate and amend the law relating to companies। डेफिनेशन का बात ऑलरेडी कर चुके हैं, जनरली सेक्शन 2 या इनिशियल सेक्शन में रहता है। मीन्स इंक्लूड्स का भी बात कर चुके हैं। मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव इन नेचर, एक्सटेंसिबल, आप उसको बढ़ा सकते हैं। शैल में का बात कर चुके हैं, शैल मतलब क्या होता है, मैंडेटरी, में मतलब ऑप्शनल। सेक्शन 1 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 मेंशंस, इसका शॉर्ट टाइटल, इसका एक्सटेंड कमेंसमेंट तो कुछ है ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि इसका कोई टेरिटोरियल एक्सटेंड नहीं होता, जहां जहां सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल होता है जनरल क्लॉज एक्ट भी वहां वहां एप्लीकेबल हो जाता है। सेक्शन 1 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट में इसका टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल क्या है, द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, इट डज नॉट स्पेसिफाई एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी लाइक अदर एक्ट्स। मक्खन सर, अब आ जाओ डेफिनेशन में, रिवीजन करवा रहा हूं डेफिनेशन का, इज्जत से कंसंट्रेशन के साथ, चुपचाप, हाँ सर चुपचाप तो आप करवा ही दिए हैं, रिवीजन कर लो, समझ में आया, अच्छे से रिवीजन कर लो बेटा डेफिनेशंस का, फोकस करिए। फोकस करिए गाइस। लेट्स हिट इट। मजा आ रहा है ना, चलो मजे लो। डेफिनेशंस बेटा, सारा डेफिनेशंस मैं आपको करवा रहा हूं, फोकस करो। एक्ट, यहां पर ये एक्ट कानून वाला एक्ट नहीं है, कुछ क्रिया है, करने वाला एक्ट है। तो एक्ट विथ रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग, एक्ट का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, इन रिलेशन टू एन ऑफेंस, ऑफेंस क्रिमिनल रॉन्ग होता है और सिविल रॉन्ग क्या होता है, टॉर्ट्स। ऑफेंस एक क्रिमिनल रॉन्ग हो गया, क्रिमिनल रॉन्ग को क्या बोलते हो, ऑफेंस, सिविल रॉन्ग को क्या बोलते हो, टॉर्ट्स। तो ये जो अपना एक्ट है ना, इन रिलेशन टू ऑफेंस और सिविल रॉन्ग, includes act with reference to offense or civil wrong, act in the context of offense or civil wrong, includes series of act done or an illegal omission, series of act done or an illegal omission। आसान बना दिया मैंने, एग्जाम में तुमको यही लिखना है। सर ये सब क्लॉज नंबर याद करने पड़ेंगे क्या, सेक्शन 3 क्लॉज नंबर 2, बेटा वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितना समय है। डेफिनेशन याद करना जरूरी है, क्लॉज नंबर याद हो तो बढ़िया, नहीं याद हो तो बढ़िया। हालांकि मैंने अपने रेगुलर बैच में बता दिया था कि कौन कौन सा क्लॉज नंबर डेफिनेशन का करना चाहिए। एफिडेविट, बेटा एफिडेविट इंक्लूड्स व्हाट, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, एफिडेविट इंक्लूड्स अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। इन अदर वर्ड एफिडेविट क्या है, इट्स अ रिटन स्टेटमेंट मेड ऑन ओथ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। वाओ, इट्स अ रिटन स्टेटमेंट मेड ऑन ओथ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, रिटन स्टेटमेंट मेड ऑन ओथ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। याद हो गया सर, थोड़ा फास्ट। सेंट्रल एक्ट क्या होता है, अरे सेंट्रल एक्ट मींस एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इंक्लूड्स, सेंट्रल एक्ट क्या होता है, सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके पहले हम लोग थे डोमिनियन बोलते थे, क्या बोलते थे बताओ, डोमिनियन। तो सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इंक्लूड्स an act passed by dominion legislature before the commencement of the constitution। संविधान के पहले भी तो बहुत सारे एक्ट पास हुए, वो भी सेंट्रल एक्ट माने जाएंगे, बिल्कुल माने जाएंगे। एंड उसके बाद जो गवर्नर जनरल पास किया, अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट, ठीक है, एक्ट पास बाय गवर्नर जनरल बिफोर सच कमेंसमेंट। क्लियर है सर। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन आता है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर जनरल, before the commencement of the central government, before the commencement of the constitution will mean governor general in the council, okay, and after the commencement of the constitution, after the commencement of the constitution, it shall mean the president of India, ठीक है ना, yes sir, after
commencement of constitution, it shall mean the president of India and its functionaries. कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? अरे डेट, कमेंसमेंट मींस डेट, जब से वो एक्ट आपके ऊपर लागू होगा. इट शैल मीन द डेट ऑन विच द एक्ट और रेगुलेशन कम्स इनटू फोर्स. कमेंसमेंट मींस द डेट फ्रॉम विच द एक्ट और लेजिस्लेशन कम्स इनटू फोर्स. डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, बेटा डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स ये चार चीज याद रखना. एनी मैटर, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे आप एक्सप्रेस करें, चाहे डिस्क्राइब करें, सब्सटेंस के ऊपर. एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड. एनी मैटर विच इज रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन अ सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर और फिगर और बोथ, विच में बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर. बड़ा सिंपल है. सो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन मैंने तुम्हारे लिए बहुत आसान बना दिया. डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स any matter which is written, expressed or recorded in a substance. Written, expressed or described in a substance. How? By means of letter or figure. Letter का इस्तेमाल, figure का इस्तेमाल या both. Which may be used for recording that matter. ठीक है ना? Yes sir. Enactment क्या होता है? हे भगवान, जो सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन होता है उसी को enactment बोलते हैं बेटा. Enactment shall include any regulation. It shall also include central act. State act भी enactment के अंदर आता है. Financial year और year में difference क्या होता है? Financial year means year starting on 1st day of April. Financial year means year starting on 1st day of April. Financial year means year. हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया. Financial year means year starting on 1st day of April. लेकिन calendar year क्या होगा? खाली year मतलब calendar year होता है, याद रखना. Year means British calendar year. That is year starting on 1st day of January. Year means British calendar year, that is starting on 1st day of January. Financial year means a year starting on 1st day of April. Year मतलब calendar year. Year means British calendar year starting on 1st day of January. Good faith क्या होता है? A thing shall be deemed to be done in good faith even if it is done honestly, whether negligently or not. गुड फेथ का माना जाएगा जब मैं ऑनेस्ट हूं तो गुड फेथ माना जाएगा, वेदर डन नेग्लिजेंटली और नॉट. इसके ऊपर बहुत ही फेमस केस लॉ है, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सिमोंग. याद आएगा सर, मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सिमोंग. अच्छा, तुमने अगर मान लो से फॉर एग्जांपल सीधा परचेज कर लिया कुछ भी सामान, तुमने ऑर्डिनरी प्रूडेंस आर्म इंटेलिजेंस भी नहीं लगाया, इंक्वायरीज भी नहीं किया, सीधा गुड्स उधार करके परचेज कर लिया विदाउट मेकिंग नॉर्मल इंक्वायरीज लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन. यू हैव नॉट मेड एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग द परचेज, यू हैव सिंपली परचेज अ गुड विदाउट मेकिंग एनी इंक्वायरी लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन. ये गुड फेथ नहीं माना जाएगा. देखो, नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ, नहीं माना जाएगा गुड फेथ. अगर आप कुछ काम कर रहे हैं विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. हेंस इफ अ पर्सन मेक्स एनी परचेज, अगर एक इंसान ने कुछ परचेज किया है विदाउट एनी प्रॉपर इंक्वायरी, इफ यू परचेज एनीथिंग विदाउट मेकिंग एनी प्रॉपर इंक्वायरी, इट कैन नॉट बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ. गवर्नमेंट का अगर हम लोग बात करें बेटा, गवर्नमेंट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोथ. गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी शैल इंक्लूड सिक्योरिटीज issued by central government or state government. गवर्नमेंट के अंदर सीजीएसजी आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर सिक्योरिटी इशूड बाय सीजीएसजी और बोथ. बहुत ही 5 स्टार इंपॉर्टेंस रखने वाला डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब 5 स्टार डेफिनेशन. पढ़ो एक बार खुद से इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पढ़ो, फिर मैं पढ़ाऊंगा. एक बार पढ़ो इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन. फर्स्ट का इज फर्स्ट, एब्सोल्युटली फर्स्ट. पढ़ लिए सर. जिन लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं अटेंडेंस लगा दीजिए. अटेंडेंस लगाना मत भूलिए, अभी तक नहीं लगाया तो अटेंडेंस लगा दीजिए.
सेक्शन 3 का क्लॉज नंबर 26, सबसेक्शन नहीं है, क्लॉज नंबर है। सेक्शन 3 क्लॉज नंबर 26। कब क्लॉज बोलते हैं? जब सेक्शन के जो अलग अलग पॉइंट्स है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अब जैसे तुमने ऊपर में पढ़ा, हाँ, गवर्नमेंट का सेक्शन 3 क्लॉज 23, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेक्शन 3 क्लॉज 24, इमोल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो सेक्शन 3 क्लॉज 26। कोई भी रिलेशन है क्या? नहीं सर, कोई भी प्रकार का रिलेशन नहीं, इसलिए क्लॉज नंबर बोलते हैं। सब सेक्शन का बोलते हैं जब ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट दोनों रिलेटेड रहता है। सेक्शन का ऊपर वाला पॉइंट, सेक्शन का नीचे वाला पॉइंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहता है तो सब सेक्शन बोलते हैं। जब रिलेटेड नहीं रहता तो क्या बोलते हैं? क्लॉज। तो one definition is not related to another definition, that is why we are calling it clause. Got it, sir? Got it. Immobile property का definition पढ़ ली सर। Immobile property shall include. Please remember where you will use the word mean and where you will use the word include. This you will have to remember. Some definition starts with mean, some definition starts with include. Then only you are going to get good marks if you write properly. यहां पर include से तुमको include ही लिखना है। कुछ बच्चे जो है ना मीन्स लिख करके आ जाएंगे, काट करके फेंक दिया जाएगा आंसर। कुछ बच्चे कुछ टीचर लोग डैश दे करके चालू कर देते हैं डेफिनेशन। अच्छा, डैश डैश हट। तुमको एग्जाम में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस डेफिनेशन में मीन्स लिखा हुआ है, किस डेफिनेशन में इंक्लूड्स लिखा हुआ है। सो यहां पर क्या है? इंक्लूड्स। इमोबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड और बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अरे भाई, इमोबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड और बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड और थिंग्स अटैच्ड टू दैट लैंड और बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड क्या हो गया? अरे मेरे देश की धरती, उगले सोना, एटसेट्रा एटसेट्रा, हीरा मोती एटसेट्रा। तो भाई बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड नहीं समझ में आ रहा? क्रॉप्स, दीज आर द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो इमोबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स व्हिच आर अटैच्ड टू द अर्थ लाइक बिल्डिंग, थिंग्स व्हिच आर अटैच्ड टू द अर्थ, एंड दोस थिंग्स व्हिच आर परमानेंटली फास्टेंड टू द थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, और इसमें जो परमानेंटली फास्टेंड है, मतलब फास्टेंड मतलब बांधा हुआ, थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। तो मेरे बच्चों बता दो, इमोबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड चार चीज: लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, थिंग्स व्हिच आर परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। ये देखिए, पहचान कौन? इमोबल प्रॉपर्टी है कि नहीं? पहचान रहे। ट्री क्या इमोबल प्रॉपर्टी है? यस यस, इट इज अटैच्ड टू द अर्थ एंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। यस, because it is benefit arising out of land and attached to earth. Timber, no, because it is not permanently attached to the earth. Building, yes, because it is attached to the earth. Right of way to access, yes. अरे रोड नहीं समझते, राइट ऑफ वे टू एक्सेस मतलब रोड, तो रोड वगैरह तो है ही इमोबल प्रॉपर्टी। ये रास्ता कहां जा रहा है? ये रास्ता कहीं नहीं जाता है, रास्ता इमोबल है, आप जा रहे हैं। राइट ऑफ ड्रेनेज ऑफ वाटर, नहीं, ये इमोबल प्रॉपर्टी नहीं है। ड्रेनेज इज नेवर एन इमोबल प्रॉपर्टी। स्टैंडिंग क्रॉप, यस। मशीनरी फिक्स टू सॉइल, यस। फिर से एक बार खेल लो, यस या नो। ट्री इमोबल प्रॉपर्टी है क्या? यस। टिम्बर, नो। बिल्डिंग, यस। राइट ऑफ वे टू एक्सेस, रोड वगैरह, यस। ड्रेनेज ऑफ वाटर, नो। स्टैंडिंग क्रॉप, यस। मशीनरी फिक्स टू सॉइल, यस, इमोबल प्रॉपर्टी है। क्लॉज 26 हो गया। 3 क्लॉज 26, सेक्शन 3 क्लॉज 26। इम्प्रिजनमेंट क्या इससे रिलेटेड है? क्लॉज 26 से नहीं, इसलिए तो क्लॉज नंबर बोल रहे हैं। जब रिलेटेड नहीं रहता तो क्लॉज नंबर बोलते हैं। सेक्शन 3 क्लॉज नंबर 27। imprisonment shall mean an imprisonment of either description, ठीक है, either description mentioned in the Indian Penal Code। either description mentioned in the Indian Penal Code कौन सा हो सकता है? अरे यार, एक होता है सिंपल इंप्रिजनमेंट और एक होता है रिग्रेस। सिंपल इंप्रिजनमेंट क्या होता है? तुमको कोने में पटक कर रखेंगे, काम नहीं करवाएंगे। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट चक्की पीसिंग, पत्थर तोड़िंग। इंडियन लॉ सेक्शन 3 क्लॉज 29, मेरा लॉ का इंट्रो में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इंडियन लॉ मीन्स 6 चीज: एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर, बाय लॉ। एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, बाय लॉ, ऑर्डर। मंथ क्या होता है? जो ब्रिटिश कैलेंडर ईयर में महीना होता है उसको हम लोग बोलते हैं मंथ, जो ब्रिटिश कैलेंडर ईयर है। शैल मीन एज रेकन्ड इन द ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। नहीं तो फिर तो तुम बोलोगे सावन का महीना है ना, सावन का महीना नहीं माना जाता, मंथ माना जाता है, मंथ मेंशन इन द ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? एनीथिंग विच इज नॉट ए मूवेबल शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल। तो जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। ओथ क्या होता है भाई? ओथ शैल इंक्लूड अफर्मेशन, डिक्लेरेशन। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस मींस तुमने कुछ किया, ये एक्ट कानून वाला एक्ट नहीं, करने वाला एक्ट। और ओमिशन कुछ जो करना था नहीं किया।
सो ऑफेंस मींस तुमने कुछ किया या जो करना था नहीं किया. एक्ट और ओमिशन पनिशेबल अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. पनिशेबल अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स मतलब होता है करंट लॉ. पनिशेबल बाय करंट लॉ. ऑफिशियल गैजेट क्या होता है बेटा? ऑफिशियल गैजेट में गैजेट ऑफ इंडिया आता है, गैजेट ऑफ स्टेट भी आता है. ऑफिशियल गैजेट शैल मीन गैजेट ऑफ इंडिया एंड गैजेट ऑफ स्टेट बोथ. पर्सन इंक्लूड्स बेटा कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये सब पर्सन के अंदर आता है. रजिस्टर्ड मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए. अगर वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड यूज विथ रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट शैल मीन रजिस्टर्ड इन इंडिया. रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर लॉ विच इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. यानी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड बोलोगे. रूल तो मतलब पता ही है ना, जो रूल बनाया जाता है एक्ट रेगुलेशन में. शेड्यूल मीन्स शेड्यूल टू एक्ट और रेगुलेशन. बल्ले बल्ले है तुम्हारा. सेक्शन मीन्स सेक्शन टू एक्ट और रेगुलेशन. सबसेक्शन मीन्स सबसेक्शन टू सेक्शन. स्वेयर शैल मीन अफर्मेशन डिक्लेरेशन. मैं बता दूं एफिडेविट, ओथ और स्वेयर का डेफिनेशन सेम है. एफिडेविट, ओथ, स्वेयर का डेफिनेशन सेम होता है. क्लियर सर? राइटिंग तो पता ही है. राइटिंग इंक्लूड्स प्रिंटिंग बोलो, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी एंड अदर मार्क्स. फिर इसमें आ जाओ जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आ जाओ. हाँ जी आइए, जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जबरदस्त चल रहा है. ये 3 पॉइंट आप खुद से पढ़िए, जबरदस्त. अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन चालू हो रहा है. हाफ एन आवर मोर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आधा घंटा में. जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़िए. पढ़िए पढ़िए पढ़िए. पढ़ लिए सर, मजा आ गया. बहुत सिंपल था, समझा देते हैं 1 मिनट के अंदर. बात चल रहा है कि जो सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन है वो कब से अप्लाई होगा. देखो ऐसा है, अगर ऑफिशियल गैजेटे में जब आपने सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन को पब्लिश किया, एक डेट के साथ पब्लिश किया, तो उस डेट से लागू होगा. सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन shall come into force from the specific date of enforcement, from the specific date of enforcement mentioned in official gazette. But if no specific date of enforcement was mentioned, then it shall be applicable from the date when it was published in official gazette. If it is not required, ये देखो, if no such specific date is mentioned, अगर कोई specific date mention नहीं था, it shall come into force from the date when it is published in official gazette. और अगर ऑफिशियल गैजेट में भी पब्लिश नहीं करने का दरकार था, प्रेसिडेंट मना कर दिया वेरी रेयर केस में, तब फिर जिस दिन प्रेसिडेंट साइन किया उसी दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा. सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन किस दिन से लागू किया जाएगा? स्पेसिफिक डेट ऑफ इंफोर्समेंट अगर मेंशन है ऑफिशियल गैजेट में तो उस दिन से लागू किया जाएगा. नहीं मेंशन है तो जिस दिन ओजी में छापा गया, ओजी यानी ऑफिशियल गैजेट में छापा गया, उस दिन से लागू किया जाएगा. और अगर ओजी में भी छापने का दरकार नहीं था तो प्रेसिडेंट जिस दिन साइन किया उस दिन से लागू किया जाएगा. चुप हो जाइए सर, समझ में आ गया. 5 स्टार 10 स्टार सेक्शन है ये, सेक्शन 6 इफेक्ट ऑफ रिपील. सेक्शन 6 इफेक्ट ऑफ रिपील, 5 स्टार सेक्शन. सेक्शन नंबर 6 इफेक्ट ऑफ रिपील.
1000 बार समझा चुके हैं, रिपील और अमेंडमेंट में फर्क होता है. रिपील मीन्स एक्ट इज गेटिंग obliterated, destroyed as if it never existed in the books, statutory books of law. अगर कोई एक्ट रिपील हो जा रहा है मतलब उसको उखाड़ करके फेंक दिया जा रहा है as if it never existed in the statutory books of law. लेकिन अमेंडमेंट में क्या रहता है, प्रिंसिपल एक्ट तो वही रहता है, उसके अंदर कुछ बातों को चेंज किया जाता है. अमेंडमेंट के बाद वो प्रिंसिपल एक्ट तो सेम रहता है, बट रिपील के बाद प्रिंसिपल एक्ट चेंज हो जाता है. भले रिपील हो गया, बट रिपील में बता दो, इट शैल नॉट, इफेक्ट ऑफ रिपील पढ़ रहे हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897. रिपील शैल नेवर रिवाइव एनीथिंग. रिपील हो गया, उखाड़ करके फेंक दिए, बट कुछ जो चीज एप्लीकेबल नहीं था वो जिंदा नहीं हो जाएगा. समझो चीज को. रिपील मतलब तुम एग्जिस्टिंग कानून को उखाड़ करके फेंक दिए. इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ नया चीज जिंदा हो जाएगा. रिपील शैल नॉट रिवाइव, रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग विच इज नॉट इन्फोर्स्ड. रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग विच इज नॉट इन्फोर्स्ड. शैल नॉट ऊपर में कॉमन है. इट शैल नॉट अफेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द प्रायर लेजिस्लेशन और एनीथिंग डन और अंडरगॉन. जो ऑलरेडी पुराने एक्ट के हिसाब से हो रखा है, क्या वो इनवैलिड हो जाएगा? क्या नहीं. जो पुराना काम हो रखा है पुराने एक्ट के हिसाब से वो वैलिड रहेगा. सो इट शैल नॉट, रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग which was not present. It shall not revive anything which is not enforced. It shall not affect the management of the prior legislation or the acts done under prior legislation. It shall also not affect any claim, privilege, debt, liability, obligation. पुराने एक्ट के हिसाब से अगर तेरे को कोई क्लेम प्रिविलेज मिला है वो कंटिन्यू रहेगा. तेरा लाइबिलिटी पैदा हो रखा है वो कंटिन्यू रहेगा. तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी इंस्पेक्शन चल रहा है, चलेगा. और नया इंक्वायरी इंस्पेक्शन भी, इन्वेस्टिगेशन भी इनिशिएट किया जा सकता है अगर तुमने पुराने एक्ट में कुछ ब्रीच किया है. It shall not affect any claim, privilege or debt. It shall not affect any punishment, penalty of forfeiture. हाँ, पुराने एक्ट के हिसाब से मान लो तुमको जेल हुआ था, वो पुराना एक्ट रिपील हो गया, तो तुमको क्या जेल से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा? नहीं, तुम जेल में ही सड़ोगे. जिसको जेल में भेजा गया था. समझ में आ गया? मेरे बच्चे नहीं, तुम लोग नहीं, जिसको जेल में भेजा गया. And it shall not affect any inquiry or investigation which may be initiated or continued or insisted. मक्खन सर, आज तक नहीं समझ में आया था रिपील, अभी रिवीजन के बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि लिख सकेंगे. तुम एक्ट को उखाड़ करके फेंक दिए, बढ़िया बात है, बट इट शैल नॉट, इफेक्ट ऑफ रिपील अंडर सेक्शन 6, रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग विच वाज नॉट इन्फोर्स्ड. It shall not affect the management of the prior legislation or act already done under the prior legislation. It shall not affect any claim, privilege or debt obtained. It shall not affect any penalty, punishment or forfeiture already done or imprisonment. It shall not affect any inquiry, investigation which can be started. Clear है सर? 3 cases related to repeal. स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना. रिपील से रिलेटेड 3 केस लॉ. एक तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह में यही बोला गया कि रिपील मतलब क्या होता है? ऑब्लिटरेशन, मतलब डिस्ट्रक्शन, उखाड़ करके फेंक देना सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन को कंप्लीटली, वाइपिंग ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ लॉ. बीओएल मतलब बुक्स ऑफ लॉ, एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड एक्सेप्ट फॉर फ्यू पर्पसेस जो इफेक्ट ऑफ रिपील का अंडर सेक्शन 6 पड़े. तो वही बोल रहा है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह में कि रिपील मतलब ऑब्लिटरेट एज इफ द लॉ नेवर एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ लॉ. कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लिमिटेड, कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लिमिटेड में यही बोला गया कि जो रिपील है ना, इट शैल अप्लाई ओनली टू सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन, नॉट टू द रूल. रिपील रूल का नहीं होता. रिपील सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन का हो सकता है, रूल का रिपील नहीं होता. याद रखना. कोल्हापुर केन शुगर में क्या बोला? कोल्हापुर केन शुगर में बोला रिपील रूल का नहीं होता, सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन का होता है, लेकिन रूल का नहीं होता. ये याद आ रहा है ना? नवरंगपुरा गांव धर्मात्मिक ट्रस्ट, नवरंगपुरा गांव याद आया ना? मिक्कत ट्रस्ट वर्सेस आरएम तूजी रामाजी. तुम आरएम तूजी रामाजी कर लेना, वो सिंपल नाम है. इसमें यही बोला कि रिपील और डिलीशन में फर्क होता है. रिपील में पूरा एक्ट ऑब्लिटरेट होता है. डिलीशन इज अ पर्टिकुलर अमेंडमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोविजन डिलीट होता है, एंटायर एक्ट डिलीट नहीं होता. मक्खन सर, ये था सेक्शन 6 पूरा, रेड विद द 3 केस लॉस. रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनैक्टमेंट का अगर हम लोग बात करें, एक इनैक्टमेंट को यानी एक्ट रेगुलेशन को तुमने रिपील कर दिया, क्या फिर से उसको जिंदा कर सकते हो? हाँ, अलाउड है. पार्टली ऑल्सो, फुल्ली ऑल्सो. सेक्शन 7 बोलता है यस इट इज अलाउड. रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनैक्टमेंट इज अलाउड, फुल्ली ऑल्सो, पार्टली ऑल्सो.
कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू रिपील्ड इनैक्टमेंट सेक्शन 8 बोलता है। सेक्शन 8 बोलता है कि भाई जैसे कंपनीज एक्ट 1956 वाज रिपील्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन बहुत सारे सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन में अभी भी द कंपनीज एक्ट 1956 लिखा हुआ है। अब तो कंपनीज एक्ट 1956 है नहीं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेबी एक्ट में सारे सेंट्रल एक्ट तो रिपील नहीं हुए ना, तुम समझ। सैकड़ों सेंट्रल एक्ट है जो अभी भी द कंपनीज एक्ट 1956 वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इट विल बी डीम्ड कि वो नए एक्ट को रेफर कर रहे हैं, द कंपनीज एक्ट 2013 को रेफर कर रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग सैकड़ों सेंट्रल एक्ट को पार्लियामेंट में ले जाकर के अमेंड करें। तो whenever any central act regulation refers to an act or regulation which is repealed by a new act or regulation, then it would be deemed that जो reference हो रहा था वो नया act or regulation का हो रहा था। क्लियर है सर? कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम में आ जाओ। अरे भयानक इंपॉर्टेंट, 5 स्टार, मतलब इससे तो सम्स भी आता है। फोकस करो भाई, फोकस करो, पढ़ो एक बार इसको। कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम सेक्शन नंबर 9 पढ़ो। सर सेक्शन नंबर याद करना है क्या? नॉट रिक्वायर्ड। पढ़ो बेशर्मो, 2 मिनट दे रहे हैं। डन सर। हाँ जी, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। जब आप ड्यू डेट निकालते हैं ना कोई भी चीज का, पहला दिन एक्सक्लूड करते हैं और लास्ट डे इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट डे इज एक्सक्लूडेड एंड द लास्ट डे इज इंक्लूडेड। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कंप्यूट करने बोला गया ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इफ डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड ऑन 30 सितंबर, तो बेटा 30 डेज जोड़ना है तुमको। अरे भाई डिविडेंड हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, तो 30 सितंबर को डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ तो पेमेंट तुमको 30 डेज में करना पड़ेगा। 30 सितंबर में 30 डेज जोड़ो, 30 सितंबर तो 30 को तो हटा दो, अब 30 डेज जोड़ दो तो 30 अक्टूबर इज आंसर। 1 अक्टूबर होता तो फर्स्ट को हटा दो, 30 दिन जोड़ो, 31 अक्टूबर। 31 होता है ना अक्टूबर में? हाँ होता है। टाइम में याद रखना, अगर मान लो सेक्शन 10 बोलता है अगर कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, कोई भी केस तुमको फाइल करना था एक पर्टिकुलर डे पर और उस दिन तुमको बोला डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड फाइल करने का, केस फाइल करने का आज लास्ट डे है, लेकिन वो लास्ट डे कोर्ट और ऑफिस बंद था, तो इट शैल बी सफिशिएंट इफ इट इज फाइल्ड ऑन द नेक्स्ट डे व्हेनेवर द कोर्ट ऑफिस ओपन्स। लास्ट डे को बंद था तो जब ऑफिस खुलेगा तब वो लास्ट डे माना जाएगा। कभी भी अगर हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना होता है, जैसे बहुत सारे कानून में लिखा हुआ रहता है ना, जैसे तुम्हारे इनकम टैक्स में ना 25 किलोमीटर का रेडियस कैपिटल गेन में, तो वो डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? ऐसे घूम 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 कर मेजर करोगे? नहीं, स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्लेन सरफेस। measurement of distance, it shall be measured on a straight line on a horizontal plane. Duty to be taken pro rata in enactments, क्या होता है बहुत बार क्या होता है ना, कस्टम ड्यूटी वगैरह जो है ना एक पर्टिकुलर वेट का बता दिया, मान लो 100 केजी का कस्टम ड्यूटी बता दिया, एकदम सिंपल सा ले रहे हैं, मान लो 100 रुपया, 100 केजी का कस्टम ड्यूटी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 100 रुपया, 150 केजी का बताया नहीं है तो 150 केजी का प्रोडक्ट कर लेना, 150 रुपया कर लेना, 150 रुपीज कर लेना। जेंडर एंड नंबर, बेटा ये तुम लोग को बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन या क्वेरी रहता है, आई वुड से कि सर जितना भी कानून है वहां हर जगह ही शैल बी लायबल, ही शैल बी लायबल। सर ये ही के पीछे क्यों पड़े हैं सर लोग? ऐसे तो फिर शी, हमारी जो शी है वो कुछ भी करके निकल जाएगी, उसको तो कानून में पनिशमेंट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ही शैल बी लायबल था, ही शैल बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। शी फिर बोलेगी
देखो जज कानून पढ़वा, ही लिखा हुआ है, मैं तो शी हूं। तो जज बोलेगा जनरल क्लॉज एक्ट 1897 पढ़िए। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 इज अ लॉ ऑफ ऑल द लॉ, सारे लॉ का बाप है जनरल क्लॉज एक्ट। यहां पहले लिखा हुआ है कि जितना भी सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन में मर्दों वाले जो वर्ड है उसके अंदर फीमेल भी इंक्लूडेड रहेगा, मतलब ही शैल आल्सो इंक्लूड शी। द वर्ड्स व्हिच रिप्रेजेंट masculine gender will also represent feminine gender. Words importing and denoting masculine gender shall also include feminine gender and vice versa. वैसे सिंगुलर वर्ड अगर है तो उसके अंदर प्लूरल भी आएगा, प्लूरल के अंदर सिंगुलर भी आएगा। सिंगुलर वर्ड shall include plural and vice versa. मजा आ गया। हाँ जी, पावर्स एंड फंक्शनरीज में सेक्शन 14 to 19। कम ऑन गाइस, पावर्स एंड फंक्शनरीज सेक्शन नंबर 14 to 19। अरे जिंदा हो तो पावर कॉन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसी भी फंक्शनरी को, ऑफिसर को अगर पावर दिया गया है, वो पावर वो टाइम टू टाइम एक्सरसाइज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो पावर एक ही बार में एक्सरसाइज करेगा, वो पावर वो टाइम टू टाइम एक्सरसाइज कर सकता है, कभी भी जब उसका मन। पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत सिंपल सा बात है। ऐसा है कि अगर कोई लेजिस्लेशन या रेगुलेशन ने पावर दे रखा है टू अपॉइंट अ पर्सन, ठीक है, इट हैज बीन कॉन्फर्ड, देन सच अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बाय द नेम ऑफ सच पर्सन और बाय द वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग सच पोजीशन। अरे भाई, अरे मैं बोल रहा हूं, अगर कानून बोलता है कि आप से फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर को यहां पर अपॉइंट कर सकते हैं, अरे हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ना रे बाबा। जैसे अब अगर हम आपको एग्जांपल दें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, कंपटीशन कमीशन, ठीक है, तो उसका जो सिलेक्शन कमेटी आता है, सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर भी रहता है। तो अगर हम लोग कोई मान लो सिलेक्शन कमेटी बना रहे हैं और उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहना है, तो हम लोग बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करें, या फिर नाम भी ले सकते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो तुम उसका ऑफिस का भी नाम ले सकते हो प्राइम मिनिस्टर, या फिर उसका इंसान का भी नाम ले सकते हो नरेंद्र मोदी, बात एक ही होगा। अगर तुम बोलोगे हम पीएम को अपॉइंट कर रहे हैं, अगर आप बोलोगे नरेंद्र मोदी को अपॉइंट कर रहे हैं, बात एक ही होगा। पावर टू अपॉइंट, माधवी अम्मा वर्सेस रैयरप्पन में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। माधवी अम्मा वर्सेस रैयरप्पन कि जिसके पास अपॉइंट करने का पावर है उसके पास हटा देने का, सस्पेंड कर देने का भी पावर है। क्लियर है सर? फिर सब सिंपल सिंपल चीज है। रेगुलर बैच में बेटा ये सब कुछ तुमको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है बेटा, सिंपल सिंपल चीज है। ये ला पढ़ो एक बार। When functions are to be made, when functions are to be made applicable to a particular office, when functions are applicable on a particular office, मान लो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर ये फंक्शंस एप्लीकेबल है, तो वो सारे फंक्शंस जो है ना, सारे ही पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होंगे हु होल्ड सच ऑफिस। उस ऑफिस में जितने भी लोग हैं सबको फंक्शंस करने पड़ेंगे। अगर पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ये सब फंक्शंस है, तो पीएमओ में जो जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं सबको फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सक्सेसर्स में आ जाओ। ये बड़ा सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, अगर कोई भी लॉ हम लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्टर कंप्लाई करेगा, तो इट हैज टू बी कंप्लाइड बाय द डायरेक्टर, ठीक है। इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी कंप्लाइड बाय द डायरेक्टर, इट हैज टू बी कंप्लाइड बाय डायरेक्टर, इट हैज टू बी कंप्लाइड बाय एनी कंपनी और वाइस वर्सा। सिंपल सा चीज बोला है। अगर बोला जा रहा है कि कंपनी को कुछ फॉलो करना है, कंपनी ये काम करेगा, कंपनी फाइलिंग करेगा, तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो डायरेक्टर भी अगर वो फाइलिंग कर दिया, sufficient compliance deemed to be done by the company. Company is required to file annual return. Now, company is an artificial person. If director files annual return, it is deemed that company has also filed an annual return.
ऑफिस चीफ एंड सबऑर्डिनेट, एनी लॉ एप्लीकेबल टू द चीफ मतलब हेड सुपीरियर ऑफ ऑफिस शैल बी डीम्ड टू बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर हिम। जैसे तुम लोग का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं करेगा, आता है ना ये वाला क्वेश्चन कि सर आप बोलते हैं ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं करेगा, तो सर ऑडिटर के जो आर्टिकल है वो भी नहीं लीक कर सकते। जो लॉ चीफ के ऊपर एप्लीकेबल है, हेड ऑफ द ऑफिस के ऊपर एप्लीकेबल है, सुपीरियर ऑफ द ऑफिस के ऊपर एप्लीकेबल है, अगर लॉ सुपीरियर ऑफ द ऑफिस के ऊपर एप्लीकेबल है तो भाई इफ एनी लॉ इज एप्लीकेबल ऑन सुपीरियर ऑफ द ऑफिस इट इज डीम्ड टू बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट्स आल्सो। ऑडिटर को बोला गया कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं करेगा तो उसके सबऑर्डिनेट्स भी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं कर सकते। देखो बेटा मैंने सारा मेन प्रोविजन आपको जीसीए का पढ़ा दिया है, अब प्लीज ये मत बोलना कि वो पोस्ट वाला भी पढ़ा दीजिए, वो तो सबसे सिंपल टॉपिक है। अरे यार जब भी हम लोग बोलते हैं कि सर्विस हैज टू बी मेड बाय पोस्ट, इफ सर्विस हैज टू बी मेड बाय पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए, प्रीपेड रहना चाहिए, प्रॉपर्ली एड्रेस होना चाहिए, लो पढ़ा दिया। एड्रेसी का नाम और उसका डिटेल्स प्रॉपर रहना चाहिए। तुम पोस्ट भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, एड्रेसी का नाम लिखो और उसका सही एड्रेस लिखो, इट शुड बी प्रॉपर्ली एड्रेस। प्रीपेड रहना चाहिए, प्रीपेड मतलब ऐसा नहीं हो कि पोस्टमैन जाकर के बोले ये रहा लेटर, पैसा तो तब देंगे, नहीं तुम पहले से पैसा दे दो भाई, प्रीपेड रहना चाहिए एंड रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजोगे। क्लियर है सर? मक्खन। तो भाई देखते देखते 45 मिनट्स के अंदर हमने जनरल क्लॉज एक्ट का भी शानदार धमाकेदार रिवीजन कर लिया एक बार। जबरदस्त तालियां भाई, जबरदस्त तालियां। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि तुमको कॉन्फिडेंस आ जा रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जा रहा है, तुमको चैप्टर खोलने से अब डर नहीं लगेगा। पहले चैप्टर खोलने से डर लगता, अब चैप्टर खोलने से डर नहीं लगेगा। सारा मैंने डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजन सब पढ़ा दिया आपको, एक भी डेफिनेशन नहीं छोड़ा, है ना? तो अब तुमको चैप्टर खोलने से कभी भी डर तो नहीं लगने वाला बेटा। यही तो पर्पस रहता है रिवीजन सेशंस का। चलो अब कॉन्ट्रैक्ट कब आ रही है? एक लंबा ब्रेक में दे रहा हूं, उसके बाद 3 घंटा बिना ब्रेक के पूरा कॉन्ट्रैक्ट का खत्म करेंगे। जी हां, 3 घंटा पूरा बिना कोई ब्रेक के, 3 घंटा ताबड़तोड़ रिवीजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, amazing revision of Indian Contract Act 1872 for continuous 3 hours will be starting after this final break of 30 minutes. मिस मत करना। आता माजी सटकली वीडियो अपलोड नहीं कर ली, मैं मेहनत करूं तुम्हारे साथ, तुम नहीं करो, ये कहां का इंसाफ है? जो मैं बोलता हूं डेफिनेटली करता हूं। इट स्टार्ट्स एट 4 PM। इससे आपका पूरा का पूरा अदर लॉ, आपने आज शुरुआत में क्या पढ़ा? एनआई एक्ट, फिर आईओएस और जीसीए तो दो छोटा छोटा चैप्टर था, अब एक बड़ा चैप्टर पूरा 3 आवर्स नॉन स्टॉप हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एट 4 PM, जिसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? बेलमेंट प्लेज, इंडेमनिटी गारंटी, एजेंसी, करेक्ट सर। नोट्स कहां मिलेंगे? जब पूरा मैराथन वीडियो आज खत्म हो जाएगा, फिर कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, उसमें गूगल फॉर्म का लिंक होगा। तुमने अगर नहीं भर रखा है तो भर देना, भर रखा है तो फिर से मत भरना। आज रात को 10 बजे के पहले तुमको नोट्स मिल जाएगा। और हां, आज चिल्ड्रन डे स्पेशल है, पता है ना? आज 8 बजे क्या है? आज 8 बजे सीए इंटर के लिए चिल्ड्रन डे का गिफ्ट है। 8 बजे, 8:30 सीएमए इंटर का गिफ्ट है। और 9 बजे, अरे 8 बजे सीए इंटर, 8:30 सीएमए इंटर,
और 9 बजे CS एग्जीक्यूटिव वालों के लिए गिफ्ट है, लाइव बाय ऑल MEPL फैकल्टीज, तो उसको मिस मत करना। चलो मिलते हैं 4 बजे।
स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों। आखिर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट होता क्या है यार? व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट? बेलमेंट मींस डिलीवरी ऑफ गुड्स। जो इंसान डिलीवर कर रहा है वो बेलर है, जिसको डिलीवर किया जा रहा है वो बेली है। माल डिलीवर कौन कर रहा है? बेलर। किसको? बेली को। फॉर सम पर्पस, बेलमेंट मींस डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बेलर टू बेली फॉर सम पर्पस, upon a condition that once the purpose is accomplished, upon a condition that once the purpose is accomplished, Bailey will return the goods back to the bailor. Bailey will return the goods back to the bailor. Bailey will return the goods back to the bailor or dispose them according to the directions given by the bailor. Bailment means a contract between two parties, bailor and bailey, in which bailor delivers the goods to bailey for some purpose upon a condition that once the purpose is accomplished, bailey will either return the goods back to the bailor or dispose them as per the directions given by the bailor. जब पर्पस खत्म हो जाएगा, जिस पर्पस के लिए बेलर ने बेली को गुड्स दिया है वो पर्पस खत्म हो जाएगा, तो बेली क्या करेगा? पर्पस खत्म होने के बाद या तो माल वापस कर देगा बेलर को, या फिर डिस्पोज कर देगा, या फिर डिस्पोज कर देगा। Either Bailey will return goods back to the bailor or dispose them as per the directions, dispose them as per the directions given by the bailor. So what is bailment, boys and girls? What is bailment? Bailment means delivery of goods. What is bailment, boys and girls? Bailment means delivery of goods. Bailment means delivery of goods by bailor to bailey for some purpose, upon a condition that once a purpose is accomplished, bailey will return the goods back to the bailor or dispose them as per the directions of the bailor. We understood. There are two parties, one is bailor and one is bailey. See, you don't have to remember the section number of other law portion. Bailment means delivery of goods by one person known as bailor to another person known as bailey for some purpose upon a contract that once the purpose is accomplished, bailey will return the goods back to the bailor or dispose them of as per the directions of the bailor. So, entire definition is in our mind. Great. Now there are some features of bailment. Let me give you a few examples of bailment. Have you delivered your book to anyone? Have you delivered your book to your friend? Have you ever delivered a book to your friend for copying the notes? That's bailment, man. Have you given your motorcycle to anyone? Have you given your car to someone? Have you taken car from someone? That's bailment, man. We all in our students' lives must have delivered book to someone for copying the notes. That's bailment. We are the bailor if we are delivering the book. The other party is called bailey. What are the features of bailment, sir? See, these are the features. You can call it features, you can call it essential conditions of bailment. Bailment is based upon a contract. Bailment is a contract. We are studying Indian Contract Act 1872, so bailment has to be a contract. So bailment is based upon a contract. Contract may be express or implied. Bailment is a contract. The contract can be express contract or implied contract. Okay, so bailment is based upon a contract. Contract may be express or implied. Now, what do you mean by express contract? Express means through words. Words can be oral also, written also. Bailment is based upon a contract. Okay, it's an express contract. Contract can be express or implied. Express means express through words. It can be oral also, written also. Oral bailment is also valid. Written bailment is also valid. And it can be implied also. Implied bailment, best example is finder of the lost goods. Finder of the lost goods is an implied bailment. Finder of the lost goods. If say for example, you find the lost goods. If someone finds the lost goods, that finder of the lost good will act as a bailey, and the owner whose goods have been lost will act as a bailor. This is an implied bailment. There was no express contract between bailor and bailey, but this is an implied bailment. Best example is finder of the lost goods. We'll study in details the finder of the lost goods today only. So the first feature or essential condition of bailment is that bailment is based upon a contract. There has to be a contract. Contract can be express also, implied also. Acha, it involves delivery of goods. Delivery of goods is important. It involves delivery of goods for some purpose. Delivery of goods means change of possession, not the change of ownership. You tell me, even after delivering goods for a particular purpose, who shall be the owner? Who shall remain the owner? Bailor or bailey? Come on, tell me very fast. Who will be the owner, boys and girls? Bailor or bailey? Who shall be the owner?
Bailer or Bailey? Answer is Bailer. Correct. So bailment means delivery of goods. Delivery of goods means change of possession. Delivery of goods means change of possession, but not the change of ownership. The ownership will remain with the bailer. So it involves delivery of goods. Change of possession will take place, but not the change of ownership. Bailer remains the owner. And over here, bailment is taking place of goods. Remember, goods will only mean movable goods. Goods only mean movable goods here. It means immovable goods का bailment नहीं होता. Immovable goods का bailment नहीं होता. So goods mean movable. Bailment is possible only of movable goods, not of immovable good. You cannot do the bailment of land, building, plant, machinery. Those are immovable. You can do the bailment of goods. Goods mean movable goods. No bailment is possible for immovable goods or money because these are not treated as goods. Goods mean movable, which means no bailment is possible for immovable goods or money. Money is also not a good. Acha, delivery can be physical. Delivery can be physical or physical, that is actual delivery. Delivery can be physical delivery, that is actual delivery, or symbolic or constructed delivery is also there. You must have read delivery, meaning of delivery in Sale of Goods Act in your childhood. So delivery, it can be actual also. Actual means physical delivery, or it can be symbolic or constructed delivery also. For example, if I am giving you my bike to use, I am giving you my bike to use. Take my bike and use it. I am not going to, pick up my bike like a Tarzan and give it to you. It cannot be an actual delivery. I'll give you the keys of the bike. The keys of the bike is a symbolic delivery. Remember one thing. Once the purpose is over, Bailey will return the goods back to the biller. Those goods will be same good, exactly same goods that I gave to you. You cannot exchange the goods. You cannot return me some different goods. Not even the goods of higher value. I don't want goods of higher value. Give back my same goods. Bailey is under an obligation to return exactly same goods back to the biller. Bailey is under an obligation to return back exactly same goods back to the biller. Not the similar goods. Not even the goods of higher value. Clear? So these are, features of bailment. How many features of bailment are there? To be precise, there are 5 features of bailment. Tell me 5 features of bailment. 5 features of bailment are: bailment is a contract. It can be express also, implied also. Bailment is a contract, and this contract can be express also and implied also. Bailment is a contract, and this contract can be express also, implied also. Bailment is a contract, it can be express also, implied also. We got it, sir. Express oral, express written, or implied by the conduct of the parties. It can be implied by the conduct of the parties. Example, the finder of the law's good is an implied bailment. Bailment means delivery of goods. Bailment means delivery of goods. Delivery means change of possession. Delivery means change of possession, but not the change of ownership. Delivery means change of possession, but not the change of ownership. Bailer remains the owner. And goods mean movable goods. Immovable goods and money are not treated as goods, and so bailment is not possible for them. Delivery can be actual, that is physical or constructive or symbolic. And Bailey is under an obligation to return different goods. Exactly same goods must be returned by Bailey. So now there are some examples that I am going to ask. You tell me whether it is a bailment or not. The first example: giving a book to friend. Is it a bailment? Giving book to friend. Tell me very fast. Is it a bailment? Arey, reply. Don't be a dead body, man. Google Drive, PENDRIVE. Come on, pop up yourself. Is it a bailment? Tell me very, very fast, boys and girls. Tell me very, very fast. Delivering a book to friend. Yes, it is a bailment. Let me tell you, bailment can be for reward or it can be gratuitous. Gratuitous means free bailment. It is an exception of no consideration, no contract. Normally, no consideration, no contract. If there is no consideration, there is no contract. If there is no consideration, there is no contract. But there are some exceptions of no consideration, no contract. Gratuitous bailment is one of those exceptions. Gratuitous bailment means free. Bailment for reward means taking the charges. So if I am giving my book to my friend and taking the charges, that's also valid. It's a bailment for reward. But if I am giving the book to my friend for free use, by return it after 1 week, take it for free. It's a gratuitous bailment. Gratuitous bailment is without charge, and bailment for reward is with charge. Both the types of bailments are valid.
So giving book to friend, is it a bailment? Yes, sir, it is a bailment. So where to get these notes from? These notes are already uploaded on your Google Drive. Guys, you are enrolled students. These notes are already uploaded on your Google Drive. Okay, sir. Depositing money in bank, is it a bailment? No, I said no, money is not good, so it is not a bailment. Very good, very good. And one more reason of it is that if you deposit same 2000 rupees note in the bank, Bailey will, we just now read it now, Bailey will be under an obligation to return exactly the same goods back to the biller. Bailey will be under an obligation to return exactly same goods back to the biller. But is it possible for the bank to return exactly same 2000 currency note? No. It's not possible to return exactly same 2000 currency note. So depositing money in bank, not a bailment. Giving book to friend, yes, it is a bailment. Depositing money in bank, it is not a bailment. Because money is not good. Depositing ornament in bank locker. Tell me, is it a bailment? Depositing ornament in bank locker. Our gold ornaments we have deposited in bank locker. Is it a bailment? Is it a bailment? Come on, guys. Tell me very, very fast. Depositing ornaments in a bank locker. Depositing ornaments in a bank locker is not a bailment. It cannot be treated as bailment. Depositing the ornaments in bank locker cannot be treated as bailment. You know why? Because the key, bank locker key, is still with the bailor. Try and understand. If I am depositing ornaments in bank locker, I am having one of the keys of the locker. So it is not a bailment. Because the custody remains, the key remains with me. That is the owner. So it is not a bailment. Actually, the concept of bank locker is that you are just hiring a locker. You are just hiring a locker space and depositing the ornament. So it is not a bailment. Just like the businessman hires go down. A businessman hires go down. Okay. I'm not the owner of the go down. I've taken go down on rent from a landlord. Try and understand. If I take a go down space, warehouse space from landlord. Okay. And I'm keeping my goods in the warehouse. Am I the owner of the warehouse? No, I'm not the owner of the warehouse. But still, I'm having the key of the warehouse. Now, yes, sir. So, will you treat it as bailment? No, sir, it cannot be treated as bailment because the key is with you. It's just like keeping your goods in go down. If a businessman is keeping the goods in a rented go down, if a businessman keeps his goods in rented go down, will you call it a bailment? No. Similarly, if I'm depositing my ornaments in a bank locker, it is also not a bailment because the key is still with me. So one of the keys with the bank also. So what? One of the keys with me also, na? So it is not a bailment. We got it, sir. We got it. Just like a businessman is hiring a go down. Try and understand. If Amazon hires a go down, Amazon does not buy the go down. Amazon hires a go down on rental basis. Amazon keeps the goods in the go down. Will you call it a bailment? Amazon is a bailer and the landlord is a bailee? No. Understood? Yes, sir. Next. Depositing ornaments in neighbor's locker. Is it a bailment? Tell me very, very fast. If you are depositing ornaments in neighbor's locker, depositing the ornaments in neighbor's locker, is it a bailment? Depositing ornament in neighbor locker, yes, it is a bailment because the neighbor's locker key is also with you. Eh? No. So deposit. So in deep relationship with your neighbor that you are having your neighbor's locker key also. My God, no. So depositing ornaments in neighbor locker, yes, it is a bailment. It is a bailment. Next, parking a car in parking lot. Tell me, parking a car in parking lot. Parking a car in parking lot. I went to a mall. I parked my car in the parking lot and the key was with me. So the key remains with the owners because the key of the car remains with the owner. So it is not a bailment. Not a bailment. Valet parking. Valet parking, you understand? Park the car. You are giving the key to a hotelier or someone else, receptionist. Park the car. So because you are delivering the key, in case of valet parking, you are asking someone else to park your car. You are delivering the key. So it is a bailment. Valet parking is a bailment. Understood? Goods temporarily taken by custom authority. Oh my God. Goods temporarily taken by custom authorities. Oh, custom authorities have temporarily taken the goods for payment of less custom duty. I imported the goods without the payment of the proper custom duty. So they have
forfeited my goods temporarily until and unless I pay the custom duty. It is also a bailment. Yes, it is a bailment. Owner is a bailer and custom authority is a bailer. And on payment of proper custom duty, they are going to release the goods for me. So it is a bailment. Yes, it is a bailment. Understood, sir. So these are various examples of bailment. I am giving you, 2 minutes just to again go through these examples of bailment, what is bailment and what is not a bailment. Just 2 minutes, huh? Keep in mind, you have 2 minutes to go through the examples. Go through fast. Done, done. So we have completed what is bailment, features or 6 conditions of bailment, other 5 conditions of bailment, and examples of bailment. Now there can be different types of bailment, okay? Different forms or types of bailment. For example, you can delivering goods. For example, different types of bailment. For example, delivering goods by bailer to bailee, delivering goods for bailers use. Okay, delivering good for bailers use, delivering good for bailey's use. Bailment is obviously delivering goods by bailer to bailee.
But when bailer is delivering the goods to bailee, it is not necessary that it is for bailee's use. It can be for bailer's use also. How I tell you. For example, if I am traveling abroad and I am leaving my dog with my neighbor to be looked after. Neighbor, this is my dog. Please take good care of my dog. So it is for bailer's benefit. Delivering goods for bailer's use. Example, delivering dog to neighbor to be looked after. Delivering goods for bailee's use. Giving notes to friend for copying before exams. Okay. So delivering goods for bailer's use. Delivering goods for bailee's use. Goods given for repairs. You can give goods for repairs also. Goods given for repairs. Are goods given for repairing? Repairing is also a bailment. If I'm delivering goods, if my car gets broken, if my car needs some repairs, I'm delivering my car to the showroom for repairs. That's a bailment. Hiring means taking a bike, taking a motorcycle, taking a car, hire a cab. That's a bailment. Carriage of goods. You understand carriage of goods? Like movers and packers do. When you ship your house from one city to another, you need to hire movers and packers to carry your goods from one city to another. So carriage of goods. Delivering goods to movers and packers for shifting. It is a bailment. Pledge will be studying in details also. For example, if I have taken loan from bank, if I take loan from bank and in return I am pledging my movable security, I have taken loan from bank and as a collateral I am giving some security. That's a pledge. Again, it's a type of bailment. It is also a type of bailment because I am delivering some kind of goods to bank. So I am the bailer and bank is bailee. So give me 6 types of bailment. Delivering goods for bailer's use. Example, delivering a dog to be looked after. Delivering goods for bailee's use. One is delivering goods for bailer's use. Another one is delivering goods for bailee's use. For example, giving the notes to copy. Repairs is also a bailment. Hiring something is also a bailment. Carriage, pledge. Last 4 bailments are repairs, hiring, carriage and pledge. These are all types of bailment. Okay, so we understood. Now you must be knowing that there are 2 parties. One is a bailer and another one is a bailee. How many parties are there, boys and girls? How many parties are there? Sir, there are 2 parties. One is a bailer and other one is bailee. One is a bailer and the other one is bailee. So boys and girls, if there are 2 parties, one party is known as bailer, another party is known as bailee. There are some duties of bailer and rights of bailer. Similarly, there are rights and duties of bailee also. There are some rights and duties of bailer and there are some rights and duties of bailee. Now the interesting thing is that whatever duty means obligation, liability is on the bailer. The duty of the bailer is the right of bailee. What bailer's duty is, that is the right of the bailee. So bailer's duty means bailee's right. Similarly, bailer's right is bailee's duty. We got it. So let us read. Bailer's obligation duties means bailee का right. जो बेलर का ऑब्लिगेशन है, बेलर का ऑब्लिगेशन यानी बेलर का लायबिलिटी, बेलर्स लायबिलिटी मींस bailee's. So what is the bailer's obligation? Bailer is having many obligations and those many obligations of the bailer are the rights of the bailee. The first obligation of the bailer, first liability of the bailer is bailer's duty to disclose the fault in goods. It is the bailer who is the owner. Bailer is delivering the goods. So if there are any fault in the goods which are known to the bailer, if the fault is known, fault in the goods, defect in the goods is known to the bailer, bailer is having a duty to disclose all the fault in the goods to the bailee. If bailer does not disclose, if bailer fails to disclose the fault in his goods to bailee, because of which bailee suffers any kind of loss, because of non-disclosure, bailee suffers any kind of loss or damage, bailer will be liable to compensate. That's the right of bailee, to receive compensation, and duty of bailer to compensate bailee. We understood, sir? So it's very simple. Bailer's duty to disclose the fault in his goods. If bailer is aware about, if bailer is aware about the fault in his goods, if bailer is aware about the fault in his good, then it is the duty of the bailer
to disclose those faults to Bailey. Failing which, if Bailey suffers any kind of loss or damage, then bailer shall compensate. See, if the fault or defect was known to the bailer, if the fault or defect in the goods was known to the bailer is liable in both bailment for reward as well as gratuitous bailment. It does not matter whether it was bailment for reward or whether it is free wala, gratuitous bailment. If the fault was known to the bailer is liable. Bailer is liable in both bailment for reward and gratuitous bailment. If because of such undisclosed defect, Bailey suffered any kind of damages. So bailer will be liable if Bailey suffered any kind of damages because of the undisclosed defect. However, if the fault was not known to the bailer, I was myself not aware about the fault in the goods. I was myself not aware about the defect in the goods. For example, I was not aware that the bike which I am delivering to Bailey for use is not having the brake. It is having brake fail. Its brakes are failed. I was not aware that my bike brakes are not working. So if bailer was himself not aware, still he will be liable if it was bailment for reward. Paisa liya na, you took the money na, you are liable. But if it was gratuitous bailment, free wala bailment, and bailer was himself not aware, then bailer is not liable. So if the fault was not known to the bailer himself, but if it was bailment for reward, bailer is liable. But if it was gratuitous bailment, not liable. Which means bailer is liable in all the cases except in case of gratuitous bailment, and that too when bailer was himself not aware about the default. So when bailer was himself not aware about the fault in the good or defect in the good, and it was a gratuitous free wala bailment, then bailer is not liable. Understood? Otherwise, in all cases, bailer is liable. Second duty of bailer, to reimburse necessary expenses to Bailey. Bailer's duty, it is bailer's duty to reimburse means compensate. Bailer's duty to reimburse, compensate necessary expenses to Bailey in case of gratuitous bailment. If it was free wala bailment, gratuitous bailment, but Bailey has incurred some expenses, on behalf of the bailer, then bailer is liable. Bailer's duty is there to compensate the Bailey, to reimburse the expenses incurred by Bailey, to reimburse necessary expenses to Bailey in case of gratuitous bailment, which means work was done by Bailey without any remuneration. Bailey was not entitled to any remuneration, but whatever expenses he has incurred, at least compensate those expenses of Bailey. Read this example. MA delivered his car to mechanic friend Ashish. I gave my car to my mechanic friend. I have one mechanic friend Ashish to be repaired for free. He is not entitled to remuneration. It was gratuitous bailment. But at least if the spare parts are replaced by Ashish, we will have to reimburse the cost of the spare parts. MA delivered his car to mechanic friend Ashish to be repaired without any remuneration. Now if Ashish, the Bailey, incurs 1000 rupees to replace the parts of the car, then bailer is liable to reimburse 1000. However, if remuneration of 10,000 was fixed, then it was not a gratuitous bailment. It was not free wala bailment. If remuneration of 10,000 was fixed, then MA would not have been liable to reimburse 1000. If it was free, then reimburse 1000, that is the spare part charges. But if it was reward 10,000, then no need to reimburse the spare part charges of 1000. Understood, sir? Third duty of bailer, to compensate. Bailer is liable to compensate for loss caused to Bailey due to bailer's defective title. Bailer delivered a car which was stolen. Bailer delivered a stolen car to Bailey. Now, whatever legal expenses to get out of the court case is incurred by the Bailey, bailer will have to reimburse. Bailer will have to compensate the Bailey because it was, loss caused to Bailey. It was a loss caused to Bailey because of bailer's defective title of goods. So bailer's duty to compensate for loss caused to Bailey due to bailer's defective title. Example A delivered a stolen car to B. I gave a stolen car to B. B was not aware that the car that I am delivering him was a stolen car. So B took the car. B got caught, but he proved that he was unaware about the defective title of A. But still, B would have to hire a lawyer and all those legal expenses. A will be liable to pay legal expenses and other damages to B. Fourth duty of the bailer. Bailer's duty. Whatever bailer's duty, it means Bailey's right. Bailer's duty to compensate Bailey for keeping. If bailer's duty is to compensate Bailey, I am liable to compensate Bailey.
if for keeping such goods, Bailey incurred expenses and it was a gratuitous bailment. It was a gratuitous bailment and Bailey has incurred some expenses. For example, I delivered my dog to be looked after gratuitously. Now, whatever expenses Bailey incurs on dog, his fooding and all those things, A is liable to pay that to be. Understood, sir? So, bailor's duty is to compensate Bailey for keeping such goods. Bailor's duty is to, I have a duty to compensate Bailey if for keeping such goods, Bailey has incurred expenses. And it was a gratuitous bailment and Bailey has incurred some expenses. Bailor is also liable to compensate Bailey. Listen, bailor is also liable to compensate Bailey for loss suffered by Bailey because bailor recalled the goods in case of gratuitous bailment before the expiry of the bailment. Listen, in case of gratuitous bailment, free wala bailment, bailor has a right, bailor has a right, he can recall the goods. Bailor has a right that bailor can recall the goods even before the bailment period expires. For example, if I delivered my car to my friend, if I gave my car for free to my friend to be used for 1 week, if I gave my car to my friend for free to be used for 1 week, it's a gratuitous bailment, I am not charging anything. The bailment period is 1 week, but because it's a gratuitous bailment, so bailor has a right to recall his goods even before the bailment period expires. Even before 1 week expires, I can recall my goods. But in that process, if Bailey suffers any kind of loss, bailor is liable to compensate the loss caused to Bailey because of recalling of the goods in case of gratuitous bailment before the bailment period expires. So if bailor's liability, it is bailor's liability to compensate Bailey for loss suffered by him if bailor recalled his goods before the expiry period in case of gratuitous bailment. In bailment for reward, we cannot recall the goods before the bailment period expires. But in gratuitous bailment, we can recall the goods even before the bailment period expires. And we will have to compensate Bailey for that. Example, A delivered his car. A delivered his car gratuitously to B for a week. Now, if before the expiry of a week, try and understand, if before the expiry of the week, I gave my car gratuitously to B for 1 week. If before the expiry of a week, A recalls his car. Can I recall my car? Yes, it was a gratuitous bailment, so I can recall my car. But I am liable to compensate B for the loss he suffered. Now, whatever extra charges he might have to incur to book a new car at such a short notice, the extra charges that he might have to pay to the agency, that I'll have to reimburse. Okay, sir. Bailor is also having liability to accept the goods. Bailor is having liability to accept the goods when the bailment period is over. When Bailey is returning back the goods on expiry of bailment period is over, Bailey is returning back the goods. So bailor is having a duty to accept the goods. Bailor cannot say, no, keep it for 1 more week. I am having, it was my car, you keep it for 1 or 2 more weeks because my parking is not available right now. No, that's not the case, man. You cannot do that. Bailor is having liability to take his goods back on the expiry of the period of bailment. When the bailment period expires, bailor is under liability to take his goods back. Otherwise, whatever loss is caused to goods, whatever loss takes place in the goods, Bailey is not liable. And whatever extra charges Bailey incurs to keep the goods, bailor will have to pay. Otherwise, Bailey will be responsible. Bailey will not, oh my God, note is missing. See, otherwise Bailey will not be responsible for any loss or damage that take place in the goods. And also, Bailey and also pay Bailey if he incurred any expenses in keeping the goods. I'll have to pay extra expenses to Bailey, which he incurs in keeping the goods. See, example, A gave his car, I gave my car to Honda showroom for repair. So I am the bailor and Honda showroom is the Bailey. But refused to accept back the goods after repairs and went to take back after 3 months of repairs. A is liable to pay garage rent of 3 months to Honda showroom. We got it, sir. So these were the 6 duties of the bailor. Okay, these were the 6 duties of the bailor. The moment I end the video, it's not ending now, wait, further 1 hour lecture is left. But the moment I end the video, please make sure that you are studying it today. Please make sure about that. And in case if you study in future also, you should study today. In case you study in future also, again watch the video. Again watch this video and then revise. Okay, sir. So, just now we completed bailor's duties. Bailor's duties means Bailey's right.
We did 6 bailers duties. Can you tell me what those 6 duties of bailers were? Let us revise it again. The first duty of the bailer. Bailer's duty means, bailer's duty means bailee is right. Bailer's duty means bailee is right. The 6 duties of the bailer were: bailer's duty to disclose a fault in goods. Bailer's duty to disclose. Bailer's duty to disclose a fault in goods. Bailer's duty to disclose a fault in goods. If the fault was known to the bailer, if the fault was known to the bailer, then it does not matter whether it was gratuitous or bailment for reward, he will have to disclose. If he fails to do so, then whatever damages bailee suffers, bailer will be liable to compensate. But if the fault was not himself known to the bailer, the fault was not known to the bailer himself, the fault was not known to the bailer himself, still if it was bailment for reward, paisa liya hai na, liable. But if it was gratuitous bailment and the fault was not known to me also, then not liable. Bailer is not liable. Second duty of bailer was bailer's duty to reimburse necessary expenses in case of gratuitous bailment. Bailer's duty to reimburse necessary expenses in case of gratuitous bailment. For example, I gave my car to my friend, mechanic friend, for repairs. He was not entitled to any remuneration. Now, whatever spare parts charges he incurs, okay, whatever spare part charges he incurs, I'll have to reimburse him. Then, bailer's duty to compensate bailee for loss caused to him because of defective title of the bailer. If the title of the bailer was defective, for example, I gave my stolen car to him and police caught the bailee and he had to incur legal expenses, I'll have to reimburse those legal expenses because it was because of my defective title. Fourth duty of the bailer is that, look, in case of gratuitous bailment, bailer has a right, yes, bailer has a right to recall his goods before the bailment period expires. But by doing so, if bailee suffers any kind of loss, then bailer is liable to compensate such loss. The fifth one I have already told. And the fourth one was in case of gratuitous bailment. For example, dog to be looked after and bailee has incurred some fooding expenses. I'll have to reimburse those fooding expenses in case of gratuitous bailment. And the last one was bailer's liability to accept the goods when the bailee is delivering them on the expiry of the bailment. Otherwise, bailee is not liable for any loss. And bailee is having a right to take the rentals for keeping the goods in safe custody. We understood, sir. So these were all the duties of bailer. These were all the duties of bailer. Understood, sir? Perfect. Now we are coming to bailer's rights. Let us come to bailer's rights. Bailer's rights. Bailer's rights means now bailer is going to recover from bailee. Chal bailee, ab tum rupiya de. So bailer's rights. Now bailer is going to recover from bailee. Bailer's rights means bailee's duty. Bailer's rights means bailee's duty. Now these bailer's rights are very, very simple. Very, very simple. Extraordinarily simple. Let us hit it, boys and girls. See. Bailer's right to recover from bailee. Bailer has a right to recover from bailee compensation for damage in goods. Compensation. Bailer has a right to recover from bailee compensation for damage in the goods. If bailee used it for unauthorized purpose, or he used it for authorized purpose but not like a man of ordinary prudence. Either bailee used the goods for unauthorized purpose or for authorized purpose, permitted purpose, but not like a man of ordinary prudence. And because of it, some damages have been caused to the goods, then bailer is having a right to receive compensation from bailee. Understood, sir? Which means if bailee was using the goods for authorized purpose, like an ordinary man of ordinary prudence, still if any damage to goods take place, then bailee is not liable. For example, I gave my car to bailee. Bailer gave his car to bailee for driving in Calcutta. Bailee was driving in Calcutta only, very cautiously. But the auto rickshaw wala hit him and there was a dent in the car. Bailee is not liable. Bailee is not liable for compensation. Because
I gave Bailey the car. I gave Bailey the car for driving in Calcutta. He was driving in Calcutta very cautiously, like a man of ordinary prudence. Still, a reckless auto rickshaw driver hit the car, and there was a dent in the car. Bailey is not liable for those damages. Understood, sir? But if I gave him the car to be driven in Calcutta, and he took the car to Mumbai, although he was driving very cautiously, still if any accident takes place in the car, he is liable because it was an unauthorized use. He was supposed to drive in Calcutta, not in Mumbai. Why did he take my car from Kolkata to Mumbai? Even if he was driving cautiously, still if any damage takes place in the car, he is liable to compensate. I have a right. Bailor has a right to receive damage because it was unauthorized. I gave him car to be driven in Calcutta. He was driving in Calcutta, but you know what? He was driving in Calcutta with his legs, not his hands. He was driving in Calcutta with his legs, experimenting with his legs, not like a man of ordinary prudence. क्या एक आम आदमी पांव से गाड़ी चलाता है? An ordinary man drives a car by leg? No, but he was driving the car by leg. It was authorized use, but he was not using the car like a man of ordinary prudence. So if any damages take place in the car, bailor has a right to receive compensation from Bailey. So bailor's right. Bailor's right means Bailey's duties and obligation. Number one, to receive compensation from Bailey. I have a right to receive compensation from Bailey if goods are damaged. I have a right to receive compensation from Bailey if goods are damaged. I have a right to receive compensation from Bailey if goods are damaged due to his unauthorized use. I have a right to receive compensation from Bailey. Bailor has a right to receive compensation from Bailey if goods are damaged. Goods are damaged due to his unauthorized use, either unauthorized use, or second one was not like a man of ordinary. Either he was making an unauthorized use or he was using the goods not like a man of ordinary prudence. In those two cases, I have a right to receive damages from Bailey. Now, come on, tell me the examples, boys and girls. Read the example. The first example is in front of you. It's gone. Tan, 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 tan. It's back. The first example is now in front of you. So this is example and whether bailor is entitled to compensation or not. The first one. A gave his car to B for driving in Kolkata. Okay, A gave his car to B for driving in Kolkata. B was driving carefully. A gave his car to B for driving in Kolkata. B was driving carefully in Kolkata. But truck bumped into the car. Oh, and the car was damaged. You tell me. Whether bailor is entitled to compensation? No. No, because Bailey made an authorized use. He was supposed to drive in Kolkata. He was driving in Kolkata like a man of ordinary prudence. So even if in that process the car is getting damaged, bailor cannot receive compensation. Okay. Why? Because bailor can receive compensation either when the Bailey makes an unauthorized use or an authorized use, not like a man of ordinary prudence. Second example. What if in example 1, Bailey B gave the car to C, his brother. It was not supposed to be driven by his brother, but B gave the car to his brother C, who also drove carefully but met with an accident and car damage. Is the bailor liable? Is the bailor entitled to compensation? Yes, because it is an unauthorized use. What if in example 1, Bailey B himself drove the car from Kolkata to Patna and got accidentally damaged? Yes, because it is an unauthorized use, so I am entitled to compensation. What if in example 1, B was driving the car in Kolkata but without using his hand, and got accidentally damaged? Then bailor is entitled to compensation. Yes, because Bailey did not use the good like a man of ordinary. Next example, boys and girls. A gave his ornaments to B. A gave his ornaments to B.
to be kept in safe custody. A gave his ornaments to B to be kept in safe custody. Okay. B kept them on sofa. I gave ornaments to B, my neighbor, to be kept in safe custody. He kept it on sofa. It was not like a man of ordinary prudence, so I am entitled to compensation. It was stolen. Yes, because Bailey did not use the goods like a man of ordinary prudence. Who keeps the ornaments, valuable ornaments on sofa? Nobody does. Not like a man of ordinary intelligence. What if in example 5? Example 5 means that ornaments. B kept them in his locker. Oh my God, B kept them in his locker, but still got stolen. Then am I liable to compensation? No, then Miller is not liable to compensation because B acted like a man of ordinary prudence. Last example. What if in example 5, A asked B to, I asked B categorically, specifically, to keep ornaments in bank locker. मैंने B को बोला, bank locker में रख. I asked B to keep the ornaments in bank locker, but B kept in his house locker. It is an unauthorized use. He did not follow my instruction. It was supposed to be kept in bank locker, but B has kept it in his house locker and got stolen. Bailor is entitled to compensation? Yes, because it was an unauthorized use. These were the 8 examples. These type of questions only comes in exam. So the first right of Bailor is very much clear to us. Bailor right means Bailey's duty. Bailor is having a right to receive compensation. Bailor has a right to receive compensation from Bailey. If the goods are damaged because of his unauthorized use, if the goods are damaged either because of unauthorized use or authorized use, but not like a man of ordinary prudence. Second, third, and fourth right. Now coming to second, third, fourth right of the Bailor. These rights are very simple. Second, third, and fourth right of the Bailor. These rights are extremely simple, boys and girls. Please understand. Listen. Bailor delivered his goods to Bailey. What Bailey did? He produced a mixture. Bailey produced a mixture by mixing Bailor's good with his own goods. Bailor delivered the goods to Bailey. Bailey mixed his own goods with those of the Bailor's goods and produced a mixture. Bailey has produced a mixture. Now listen to me. If such mixture was produced with Bailor's consent, Bailor's approval, then Bailor has a right to receive agreed share in the mixture. If it was 50-50, then give me 50% share of the mixture. So Bailor is having a right to receive agreed share in the mixture if it was after my consent. But if it was produced, if such mixture was produced by Bailey without the consent of the Bailor, I did not give any consent, still Bailey has produced a mixture. Without my consent, Bailey produced a mixture. Then, if the mixture can be separated, Bailey will have to bear the separation cost. Bailey will bear the separation cost. Bailey will bear the separation cost to separate the mixture and return the original goods back to the Bailor. But if the mixture cannot be separated, no separation is possible, then Bailey will give the compensation, reasonable compensation decided by the court to Bailor. See, I again repeat all the 3 points. Bailey produced a mixture by mixing his own goods with the Bailor's good. If the mixture was produced after Bailor's consent, then Bailor has a right to receive agreed share in the mixture. But if it was produced without my consent, without the Bailor's consent, then Bailey will bear the separation cost and separate the mixture and return the goods back to the Bailor. Separation cost borne by Bailey. But if separation is not possible, then give reasonable compensation decided by court to Bailor. Effect of mixture produced by Bailey by mixing his own goods with the goods of the Bailor. See, if the mixture was produced with the Bailor's consent, point number 2, if the mixture was produced with the Bailor's consent, then Bailor's right, Bailor is having a right to his agreed share in the mixture. Bailor's right to his agreed share in the mixture. But without Bailor's consent, and separation of mixture possible, without my consent, but separation of mixture is possible, then some misprint over here. Let me rectify it. What will happen? Tell me. If the mixture was produced without Bailor's consent, separation of mixture is possible. Bailey will bear separation cost.
Bailey will bear separation cost and return original goods to bailor. Bailey will bear separation cost and return original goods to bailor. Bailey will bear separation cost and return original goods to bailor. But if it was done without bailor's consent and separation is not possible, then Bailey will pay reasonable compensation. Bailey will pay reasonable compensation to bailor. Copy it. Copy it out very fast. Done, 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 done. Read this example. A gave 100 bales of cotton with a particular mark. I have marked my goods. 100 bales of cotton means guchha, bundles of cotton with a particular mark to B to keep them in safe custody. B has mixed with his own bales of cotton. A is entitled. Answer will be A is entitled to receive back his original 100 bales of cotton and separation cost to be borne by B. A gave 50 kgs of Cape floor, a particular type of floor, maida, to be kept, but B mixed with country floor. Is it possible? How can you, separate the floor once mixed? No. So A is entitled to receive reasonable compensation. Fifth right. 4 rights of bailor we have completed. Now coming to the fifth right of the bailor. Bailor has a right. To terminate the contract of bailment. Bailor has a right to terminate the contract of bailment. I can terminate the bailment contract and take back my goods. Bailor has a right to terminate bailment contract. I can terminate. I can cancel the bailment contract. Bailor can cancel the bailment contract in the following cases. When there was unauthorized use by the Bailey was making an unauthorized use. Will I wait for the goods to be damaged? No. If I find that I gave the car to B, but if I find his brother is driving, will I wait for the car to be damaged? Obviously, the car gets damaged, I am entitled to compensation. But will I wait for the car to be damaged? No. I'll straight away go and take back my goods. So bailor has a right to terminate the contract if Bailey is making unauthorized use or Bailey dies or gratuitous bailment. I told you na, in gratuitous bailment, bailor is having a right. He can recall the goods at any time. And obviously, bailor can take back the goods on the expiry of the period of bailment. So bailor can take back his goods. Bailor has a right to take back his goods in 4 cases. When he finds unauthorized use,
done by the belly, unauthorized use by the belly, or belly's death, unauthorized use by belly or belly's death, or gratuitous bailment. There was a gratuitous bailment, or bailment period is expired. Wow, listen to me now. Bailor's right to receive the profit. I have a right to receive the profit. If any profit arises from the goods bailed. For example, bailor, this is a very famous example. If bailor gave cow, if bailor gave cow to be looked after, bailor delivered a cow to bailey to be looked after. In the meantime, cow gave birth to calf. Cow has given birth to calf. When bailor comes now, he is not only going to take cow, but also the profit, that is calf. Unless there is an opposite contract, something different was agreed. In absence of any contrary contract, you understand? If something different was agreed, unless and until something different was agreed, Contract Act says any profit or increased share if arise out of the goods bailed will belong to the bailor. Example 1, A bails his cow to B, cow gives calf, both cow and calf belongs to A. Example 2, A pledged shares of RIL. I have pledged shares of Reliance Industries Limited to bank for loan. I gave shares of RIL to bank for loan. RIL gave bonus shares in the meantime. Yeah, UP, RIL has given bonus share. I pledged Reliance shares, okay, to bank for taking a loan. In the meantime, Reliance has also given bonus share. So will bank keep the bonus share? No. On repayment of loan, A will be entitled to both share as well as bonus shares. Example 3, A gave cow to B and it was agreed between them. See, there is a contrary contract. There is a contrary contract. It was agreed between them. If cow gives calf, it will be of B, Bailey. There was a contrary contract between A and B. There was a different contract between A and B, which mentioned clearly that if cow gave birth to calf, it will belong to Bailey. Then on expiry of bailment, A will get his cow back and calf will belong to B because there was a contrary contract. Now coming to the last right of the bailor. Bailor's right in case of gratuitous bailment. This is the repetition we have already done. Bailor's right in case of gratuitous bailment. What is bailor's right in gratuitous bailment? To recall his goods even before the bailment period expires. To recall his good back in case of gratuitous bailment. To recall his goods back in case of gratuitous bailment even before the expiry of the bailment. I can recall the goods even before the expiry of bailment. But along with this right, also there is a liability now. We have read now bailor's liability to compensate bailey if any loss is suffered due to it. If because I'm using my right to recall my goods, if bailey suffers any damages, then I'll have to compensate. Remember one thing, in case of more than one bailor, if there are more than one bailor, bailey will return back the goods to that joint owner which was agreed. Okay, otherwise to any joint. If it was specifically mentioned in the contract that bailey must return the goods to joint owner 1, then it will be returned to joint owner 1. Otherwise, he can return if particular joint owner was not agreed, he can return to any of the joint owner. Remember one thing, third party suddenly comes to bailey and claims that these goods are mine. If third party, not the bailor, the third party is coming to bailey and saying that listen, these goods that you have got from the bailor, na, give it to me. Third party is claiming the goods from bailey. Then third party should apply to court. Bailey will not obey third party's order. Third party should apply to court and prove that the goods belong to the third party. Third party will have to apply to the court and prove that goods belong to him. And if court orders, then bailey will give the goods to third party instead of bailor. Only on the court's order, bailey will return the goods to third party instead of bailor. Now coming to a new provision, finder of the lost goods. But before moving into the finder of the lost goods, I would like you to take 5 minutes break. Take 5 minutes break. And break अच्छा नहीं लगता तो यहाँ से revise करो. Take 5 minutes break, boys and girls. Awesome explanation. Sir, I have a question, sir. Sir, if there is no damages, there is only unauthorized use, then bailor can ask for compensation? No, bailor cannot ask for compensation if there are no damages, but bailor can terminate the bill. Bailor can cancel the bill in case of unauthorized use if there are no damages. Take 5 minutes break.
Break over. Yeah. Let us proceed. Hey guys, let us proceed now. Now listen. Finder of the lost goods. We read it in an example that it is a type of implied bailment. Yes, it is a type of implied bailment. So finder of the lost good is a type of implied bailment. The finder is a bailee and the owner is a bailer. Now see, if no reward was announced by the owner, there was no reward announced by the owner that whoever finds my lost good, I am going to pay him such and such bucks. No reward was announced by the owner. Then what will happen? And if reward was announced by the owner, then what will happen? So there are two different cases. First case, there was no reward which was announced by the owner. But even if there was no reward announced by the owner, the finder of the lost good can seek reimbursement of expenses incurred by him. He can seek reimbursement of the expenses. For example, if the finder found a lost dog, then whatever expenses he has incurred on the lost dog, he can seek reimbursement of those expenses from the owner. And if owner does not pay those reimbursement expenses, bailee can keep the goods. Finder can seek reimbursement of expenses incurred by him in preserving the goods and in finding the owner. Okay, finder can seek reimbursement of expenses incurred by him in preserving the goods and finding the owner to pay. Finder cannot sue the owner but can retain the goods if owner does not pay. If owner does not pay. Okay, sir. Finder can't sue the owner, but finder can retain the goods, keep the goods with himself if owner does not pay. So if there was no reward announced, but at least owner should reimburse the expenses incurred by the finder. If owner does not reimburse the expenses incurred by the finder, finder obviously cannot sue because there was no reward, but at least he can retain the goods. Okay, sir. Finder cannot sue the owner but can retain the goods if owner does not pay. If reward was announced by the owner, oh my god, reward was announced by the owner. There was a reward which was announced by the owner. Then what will happen? If reward was announced by the owner, finder of the lost goods, finder of the lost goods, because reward was announced, finder of the lost goods can sue the owner for such reward, and until it's received, he can retain the goods. He can sue the owner for the reward because reward was announced. So he can sue. He has a right to sue the owner for reward and can retain the goods until unless such reward is paid. Understood, sir? Acha, finder of lost goods also gets the power to sell the goods in these two cases when both the conditions are satisfied. Finder of lost goods can sell the goods. Finder of the lost goods can sell the goods when two conditions are satisfied. Finder of lost goods can sell the goods when both the conditions are satisfied. Condition number 1. Owner could not be found after due search. Owner couldn't be found after due search. Or even if he found, he refuses to pay. Either owner couldn't be found, it was not possible to find the owner even after search, or if found, he refuses to pay. When can finder sell the goods? Finder can sell the goods if he is unable to find the owner, or if he found but he refuses to pay. And perishable goods. The goods are perishable. If it is not sold, it will become scrap. So goods are perishable. Or if the goods are non-perishable, finder has incurred expenses which amounts to 2/3 of the value of the goods. Either goods are perishable or finder has incurred so much of the expenses that it amounts to 2/3 of the value of the goods. If the value of the goods were 30,000, finder has already incurred 20,000 expenditure to keep the goods in safe custody. Finder has incurred 2/3 of the value of the goods. Understood, sir? Done till here. Is it okay till here? Yes, sir. It is perfectly okay till here. Now we are studying a topic known as pledge. This is the last topic for the day. In 10 minutes, we are going to complete pledge. 10 to 15 minutes max. 10 to 15 minutes max, we are going to complete the pledge and the class is going to get over. Just 10 to 15 minutes left. What is pledge?
Is pledge a type of bailment? Yes. Pledge is also a type of bailment in which goods are delivered. Pledge means a bailment of goods. Pledge means bailment of goods as a security. Security for payment of debt or performance of promise. Okay. So pledge means bailment of goods given as a security for payment of debt or performance of promise. Pledge means bailment of good as a security for payment of debt or performance of promise. For example, listen to this example. It will clear you the concept of pledge. A took loan from ICICI Bank. If A has taken loan from ICICI Bank by delivering his jewelry as a security. I took loan from ICICI Bank. Against that loan, I gave my jewelry as a security. It's a contract of pledge. Who is delivering the jewelry? A. So A is the bailer, that is owner, and ICICI Bank is the bailee. He is also known as pawnee, and A is also known as pawner. In case of pledge, bailer is called pawner and the bailee is called pawnee. Read these 4 conditions of pledge. Pledge is a bailment. Again, same definition. What are the 4 conditions of pledge? It is a bailment as a security for debt or performance of promise. Subject matter must be goods, obviously. Obviously, pledge is only of movable goods, not of immobile goods. Goods must be existing goods, not the future goods. Goods must exist and goods must be delivered. Goods must exist, goods must be delivered. So, boys and girls, it's a bailment as a security for something or debt or performance of promise. Subject matter must be goods. Goods means movable. And goods must be existing goods, must be delivered. We understood, sir. Example. Read this example on your own. Understood, sir. If A took loan from ICICI Bank by giving his house as a security, house is immobile. So if house is given as a security, it is not considered as pledge because house is immobile. It's not a pledge. Pledge is only of movable goods. So, boys and girls, there are 2 parties in pledge. The person who is giving the security, the person who is taking the loan. For example, if A took the loan from ICICI Bank, A will give the security. So A is a pawner and the bank is a pawnee. So important rights are rights of the pawnee. Important rights are rights of the pawnee. Now try and understand the rights of the pawnee. Please try and understand the rights of the pawnee. Who is a pawnee? The bank. Bank is acting as a pawnee to whom we have delivered the security. So rights of pawnee. Right of retainer. Right of retainer means pawnee can retain the goods. Pawnee can retain the goods. Okay. Right of retainer means pawnee can retain the goods. Not only for the principal amount but also for interest. Other charges like interest. You can write it over here. Right of retainer. Pawnee can retain the goods. Pawnee can retain the goods. Not only for principal amount pawnee can retain the goods not only for principal amount but also for other charges like interest. Write it down. Pawnee can retain the goods not only for principal amount but also for other charges like interest. This is known as right of retainer. Very simple. Then pawnee has second right to retain against subsequent debts. Right to retain against subsequent debts. What do you mean by right to retain against subsequent debt? Very simple, yeah. Right to retain against subsequent debt means I took loan 1. I have taken loan 1 by pledging my goods. Second loan was also taken, but it was an unsecured loan from bank. The first loan that I took from bank, I had pledged some security, I had pledged some goods. But when I took second loan, it was an unsecured loan. Now, even if I repay back
the first loan, bank has a right to retain the security which was given in case of first loan against the subsequent debt, that is second loan. We understood, sir. I took loan 1 from bank by pledging my goods. Loan 1 was taken by pledging the goods. Loan 2 was taken from the same bank, but it was an unsecured loan. Now, even if I repay back the loan 1, bank, being a pawnee, has a right to retain the security against the second loan which is still outstanding. Bank can keep the security by saying that, dude, your second loan is outstanding, so I'll keep the security. This right is also known as, bank's general lien. This right is known as general lien. General lien, you understand? Yes, sir. Now we understand. General lien means that bank can keep the security with it against other loans also. It's not a particular lien, it's a general lien. बैंक के पास जो भी आएगा ना वो रख लेगा, बैंक के पास मेरा कुछ भी आएगा वो रख लेगा if the loan is outstanding. That's called general lien. Understood, sir. Great. So loan 1 was taken from bank by pledging the security, but loan 2 was unsecured. Even if I repay back the loan 1, bank can exercise general lien. General lien means bank can keep the security against loan 2. Then pawnee also has a right to seek extraordinary expenses. Pawnee has a right to seek extraordinary expenses. Pawnee has a right to seek extraordinary expenses mean, for example, if I had given jewelry to bank, okay, if I gave jewelry to bank as a security, but jewelry was losing, its polish. So bank had to incur extraordinary expenses for polishing the jewelry. Bank, yani pawnee, if incurs the polishing expenses, these are extraordinary expenses, it can be recovered from the pawner. Right to seek extraordinary expenses. Then, right on default of the pawner. Now try and understand. This is the most important right of pawnee. When pawner defaults, then what can pawnee do? Use your brain and tell me. What can pawnee do? Tell me, what can pawnee do if the pawner has defaulted? Sir, pawnee has a right. If pawner defaults, pawnee can sell the goods. Pawnee can sell the goods. Achha, by selling the goods, if any surplus comes in, by selling the goods, if surplus comes in, surplus will be handed over. If by selling the goods surplus comes, surplus money will be handed over to the pawner. But if a deficit comes, by selling the good, if deficit comes, the deficit will be taken from other assets of the pawner. For deficit, pawner will be sued in the court. So pawnee has a right to sell the goods if pawner defaults. Surplus money will be handed over to the pawner. Deficit will be taken from the pawner. Understood, sir? Right in case of voidable contract. Listen, pawnee also has a right in case of voidable contract, which means, let me give you an example. Pawnee is right in case of voidable contract. If A obtained jewelry from B, try and understand. I obtained jewelry from B by doing fraud, misrepresentation, coercion, undue influence. Either fraud or misrepresentation, coercion, undue influence. All these cases, the contract becomes voidable. In all these cases, the contract will become voidable. So A has obtained the jewelry by doing fraud, misrepresentation, etc. So contract is voidable at the option of B. B is the agreed party with whom fraud was done. But before B rescinded this voidable contract, before B could have rescinded this voidable contract, A pledged the jewelry with bank. A pledged the jewelry with bank for obtaining the loan. Then bank will get the right of retention. Bank, being a pawnee, gets the right of retention because bank acted in good faith. So pawnee has a right in case of voidable contract also. Read this example one more time yourself. Please go through this example. Go through this example very fast.
Do it fast. Sir, it's done. You understood very well. This is the same example that we have already covered. Now coming to the rights of the pawner. Not much rights does a pawner have, but still there are two rights of a pawner. Pawner is a person who has pledged the goods. So he has a right to redeem the goods when he repays the loan. So right to redeem the goods on full repayment. So pawner has the right to redeem the goods, take back his goods on full repayment of loan. On full repayment of loan and interest. On full repayment of loan and interest. So I have a right to redeem the goods on full repayment of loan and interest. Remember one thing, if pawner has a limited interest means pawner owed the goods jointly with some other person. Okay, he was not the sole owner. Pawner was not the sole owner, he was a joint owner. There was 50% ownership of the pawner, 50% ownership of the some other person. So if goods were jointly owned 50% by pawner and third party, pawnee will also get only that much interest only, which means pawnee, the pawner was a 50% owner, he pledged the goods with pawnee. If pawner defaults, pawnee will not get 100% ownership. Pawnee will get the ownership 50%, only to the extent of ownership that pawner had. Pawner had 50% ownership, pawnee is also going to get 50% ownership of the goods. So if pawner has limited interest, say for example 50% ownership of the goods, then pawnee will also get only that much interest only. Understood, sir? Done, 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 done. It's done. Boys and girls, just write down here only some differences between particular lien and general lien. There are two types of lien. One is particular lien and one is general. Particular lien means Bailey can retain the goods. Bailey can retain the goods. Bailey can retain those goods on which he exercised skill and labor to improve the goods, but bailor did not pay. Remuneration. Bailor did not pay remuneration. What is particular lien? Particular lien means Bailey can retain those goods on which he exercised skill and labor to improve the goods, but bailor did not pay remuneration. Very simple. For example, I went to a jeweler, I gave my gold chain for polishing it. I went to a jeweler, I gave my gold chain for polishing it. He has polished the gold chain, but if I refuse to pay him his remuneration, he can exercise particular lien. He can retain that gold chain on which he has exercised. He can retain that gold chain on which he has exercised his skill and labor to improve the goods. Understood, sir. Particular lien means Bailey can retain those goods on which he exercised skill and labor to improve the goods, but bailor did not pay remuneration. And general lien, I have already made you understand. In case of banks, it happened. General lien means
banks and other financial intermediaries, banks and other financial service providers can retain any type of good, can retain any goods of person who defaulted, of person who defaulted the loan, who defaulted the loan. Copy. Done, 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 done. So I have not left out even a single topic. This is an exhaustive lecture on contract of bailment and pledge. Let me tell you, contract of indemnity and guarantee. What do you mean by contract of indemnity? Contract of indemnity means a contract in which one party known as indemnifier agrees to compensate the other party. One party known as indemnifier agrees to compensate the other party, known as indemnified or indemnity holder. So indemnifier agrees to indemnifier agrees to compensate. Indemnifier agrees to compensate. Indemnifier agrees to compensate the other party known as indemnified or indemnity holder for loss caused to him. Because of the conduct of indemnifier or any other person. If any loss caused to indemnified because of the conduct of indemnifier or conduct of any other person, indemnifier agrees to compensate the indemnified for loss caused to him because of the conduct of indemnifier or any other person. From loss caused to him either by the conduct of the promisor means indemnifier, or any other person, We got it, sir. So this is a contract of indemnity in which indemnifier agrees to compensate the indemnified, that is indemnity holder, agrees to compensate. Indemnifier agrees to, who will compensate? Indemnifier. Whom will he compensate? Indemnified or indemnity holder against the loss caused to him by the conduct of indemnifier or any other person. For example, best example of contract of indemnity, see. Rahul, a member of MEPL, shareholder of MEPL, lost his share certificate and applied for duplicate share certificate to MEPL. Rahul has lost his share certificate, original share certificate. Okay, Rahul has lost his original share certificate. And because he lost his original share certificate, so he has applied for duplicate share certificate to MEPL. MEPL, now what MEPL will do, what the company will do, MEPL will make him sign an indemnity bond. That if any real transferee come, it may so happen, Rahul, that you are lying. Rahul, you are telling false statements, you are making false statement. It may so happen that you are lying. It may so happen that share certificate has not lost. You have sold the share certificate to some transferee and you are saying to the company that share certificate is lost, and you want duplicate share certificate. Okay, sign an indemnity bond. That if company gives you the duplicate share certificate and if some transferee claims that Rahul sold the share certificate to that transferee, then whatever loss company will have to suffer, Rahul, you will compensate us. So we will be issuing duplicate share certificate only when Rahul signs an indemnity bond
that if any real transferee comes to MEPL for these shares, then any loss suffered by MEPL will be compensated by Rahul. This is a contract of indemnity. Rahul agrees to compensate, so Rahul is indemnifier and MEPL is the indemnified or indemnity holder. Sir, contract of insurance is also a contract of indemnity. Yes, insurance company agrees to compensate us, so insurance contract is also contract of indemnity. But life insurance is not a contract of indemnity because you cannot compensate for someone's loss of life. Loss of life can never be compensated. So general insurance is a contract of indemnity. Life insurance is not a contract of indemnity. See, here comes example 2. Read this example. Fire insurance company, a fire insurance company provided fire insurance to Rahul's property. Fire insurance company provided fire insurance to Rahul's property. So, okay, to Rahul's property. So, fire insurance company is indemnifier and Rahul is indemnified. Rioters, danga log, danga jo karta hai, rioters burned his property. Oh my God, rioters has burned Rahul's property. Fire insurance company will compensate Rahul because it is a loss. Okay, because it is a loss caused to indemnity holder, that is Rahul, due to any other person. What kind of loss is compensated? If the loss is caused by indemnifier or any other person. If the loss is caused to indemnity fine, if the loss is caused to indemnity holder, if the loss is caused to indemnity holder by indemnifier or any other person, such kind of loss is compensated. So writers were any other person because of which the loss took place. So insurance company is liable to compensate. Understood, sir? Example 3. If Rahul himself burned his property in the above example, Rahul himself burned the property, then it's a loss caused to indemnified because of his conduct only, not because of the conduct of indemnifier or any other person. This kind of loss will not be compensated. So if Rahul himself burned his property in the above example, then no compensation because it is a loss. It is a loss caused by the conduct of the promisee himself and not by the conduct of promise or any other person. Promisor or any other person. We understood, sir. Example 4. An insurance company provided property insurance to Rahul. Insurance company provided property insurance to Rahul. Earthquake destroyed the property. Insurance company provided property insurance to Rahul. Okay. Earthquake destroyed the property. No compensation. Why no compensation? Because it is an act of God. It's a loss caused to promisee. Because loss to promisee is not because of the conduct of the promisor or any other person. Rather, it's an act of God. What kind of loss we compensate? We compensate the loss because of the conduct of the indemnifier or any other person, not because of act of God. We understood, sir? Oh my God, got it. Example 5. A promises B that if B beats C, maro C ko. A promises B, go and maro C ko, beat C. And A will indemnify B. Are maro na C ko, I will indemnify you. B, come on, go and beat C. If any loss takes place to you, B, I will indemnify. I will indemnify if any loss takes place. A will indemnify B from all legal consequences or losses. A will indemnify B from all legal consequences or losses. Correct, sir. Correct. Since it's an illegal object, listen, contract of indemnity, at the end of the day, it is a contract, na? Contract of indemnity is also a contract. So contract means there has to be a legal object. Since it's an illegal object, so there is no contract of indemnity. The object is illegal to beat C. Since there is an illegal object, so there is no contract of indemnity, which means suppose B beats C, and court orders B to pay rupees 1 lakh fine to C, then B will have to pay such fine to C. B cannot recover from A because this was an illegal contract. B can't recover it from A. You got it, sir? B can't recover it from A. Got it, sir? See, contract of indemnity, some important notes to remember. Contract of indemnity being a contract, must satisfy, contract of indemnity being a contract must satisfy all the conditions of a contract. It is a contract, so it must satisfy all the conditions of a contract, like acceptance, legal consideration, legal object, legal consideration, legal object, legal capacity of the parties, free consent.
indemnity holder, try and understand, indemnity holder will be compensated only if loss is caused to him. Indemnity holder will be compensated only if loss is caused to him by the conduct of promisor or any other person. Indemnity holder will be compensated if the loss is caused to him by the conduct of promisor. Promisor yani indemnifier or any other person, and not by the conduct of promisee, and not if any loss is caused to him because of his own fault, because of his own conduct, or because of the act of God. We understood, sir. Insurance, I have already explained you. General insurance like marine insurance, fire insurance. General insurance includes fire insurance, marine insurance. These are contract of indemnity. But life insurance is not a contract of indemnity because it is not possible to compensate for loss of life. I told you, general insurance is a contract of indemnity, but life insurance cannot be treated as contract of indemnity. General insurance is a contract of indemnity like fire insurance, marine insurance. But life insurance is not a contract of indemnity because it is not possible to compensate for loss of life. Rights of indemnity holder when sued. Now try and understand. If the insurance company is not agreeing to pay the compensation, if insurance company refuses to pay genuine compensation to the indemnity holder, if insurance company refuses to pay the deserving compensation, genuine compensation to the indemnity holder, then what are the rights of indemnity holder in the court case? Indemnity holder can sue for compensation. Indemnity holder can sue for compensation, can sue for interest on such compensation because of delay in the compensation, and also can recover the legal cost, court kachari ka kharcha. Indemnity holder can sue for compensation, raise interest on compensation, and also for the legal cost. So indemnity holder right to receive damages from the insurance company, that is indemnifier, for loss caused to him, because of the conduct of indemnifier or any other person, obviously. So he has a right to receive compensation. Indemnity holder has a right to receive compensation from the indemnifier because of the loss caused to him by the conduct of indemnifier, because of the loss caused to him because of the conduct of indemnifier or any other person. Right to seek refund of amount wrongly paid to the indemnifier. If excess insurance premium has been paid, if more amount of insurance premium has been paid, indemnity holder has the right to seek refund of the wrong amount. Wrong amount means excess insurance premium paid. And reimbursement of legal cost. Okay, reimbursement of legal cost. Whatever the legal cost is, he can recover it along with the interest. So this was everything about contract of indemnity. Now let us talk about the contract of guarantee. Then we'll be studying the differences between indemnity and guarantee. Okay, first let us talk about contract of guarantee. See, contract of guarantee, basically there are three parties. Contract of guarantee, basically there are three parties. Principal debtor, surety and creditor. I repeat, principal debtor, surety and creditor. See, if I give guarantee to bank, that bank, please give loan to Arun. Bank, please give loan to Arun. I am the guarantor. That if Arun defaults, I will pay you. Bank, please give guarantee to Arun. I am the guarantor. So try and understand over here. This is a contract of guarantee. The person for whom such guarantee was given, is a principal debtor. That is Arun. For Arun, I have given the guarantee. Bank, please give loan to Arun. I guarantee you that if Arun defaults, if Arun refuses to pay, I'll pay you on the due date. If Arun defaults on the due date. So the person for whom the guarantee was given, in my case Arun, he is regarded as a principal debtor. And I am the guarantor, surety, the person who gives the guarantee. The person who gives the guarantee is the guarantor, surety. The person to whom the guarantee is given is called creditor. The person to whom the guarantee is given is called creditor. It's a contract. Contract of guarantee is a contract to perform the promise. It's a contract to perform the promise or discharge the liability of third party in case of default. Or it's a contract that I will perform the promise or discharge the liability of third party, which in my case was Arun. It's a contract to perform the promise or discharge the liability. I will discharge the liability of third party in case of default. So three parties are there. Surety and guarantor. Surety guarantor means the person who gives the guarantee. Surety guarantor. Principal debtor, the person for whom the guarantee is given. Principal debtor is the person for whom the guarantee is given, and creditor, the person to whom the guarantee is given. So surety gives the guarantee. The person who gives the guarantee is called surety. The person for whom such guarantee is given is principal debtor, and the person to whom such guarantee is given is called creditor. We understood, sir. Read this example very fast. See,
Contract of guarantees example. A gave guarantee, same example that I've already told. A gave guarantee to ICICI Bank for loan to B. I am giving guarantee to ICICI Bank that please give loan to B. And if B does not repay on due date, I will repay. If B does not repay on due date, I will repay. A will repay. So in this example, who is giving guarantee? A is giving guarantee, so A is surety. For whom the guarantee is given? For B, the guarantee is being given, so B is principal debtor. And to whom we are giving the guarantee? We are giving guarantee to ICICI Bank. So ICICI Bank is a creditor. The person who gives the guarantee, surety. For whom the guarantee is given, PD. To whom the guarantee is given, creditor. And there are three contracts involved. In a contract of guarantee, remember, in every contract of guarantee, there are three contracts involved. Principal contract, which is a main contract between the creditor and PD. Okay, principal contract, which is a main contract between creditor and PD, bank and Arun, to whom the loan has been given. Okay, so if bank gives loan to A, there is a principal contract. This is the main contract. This is the loan contract. This is a loan contract, main contract between creditor, bank, and A, debtor. So there is a principal contract between creditor and PD. Secondary contract between surety and creditor, in which surety guarantees the creditor. Secondary contract between surety and creditor. And always remember, there is an implied contract. You don't have to enter it. There is an implied contract of indemnity. There is an implied contract of indemnity between surety and principal debtor. There is an implied contract of indemnity between PD and surety. What kind of implied contract? That if on due date PD defaults, then surety will have to pay. It's a loss of surety. If on default of PD, surety will have to pay because surety has guaranteed on behalf of PD. So if PD default, surety pays, which means surety suffers loss. So there is an implied contract of indemnity that PD will indemnify surety. PD will indemnify surety. If because of default of PD, surety suffers loss, surety has to pay, then surety will recover it from PD. I have given guarantee, I will pay to the bank, but I will recover it from you by selling your personal assets and whatever it takes. Okay, sir. Now come to differences between contract of indemnity and contract of guarantee. First, read the three differences on your own. Come on, guys, read the three differences on your own, because I've already explained you what is contract of indemnity and guarantee. So just go for it. Read three differences between indemnity and guarantee.
So thank you for giving time to read the three differences on our own. Very helpful. So definition contract of indemnity we have already studied now. It's a contract in which indemnifier agrees to compensate indemnity holder from loss caused to him by the conduct of promisor or any other person. And what is guarantee? It's a contract to perform promise or discharge liability of third party in case of default. Number of parties, indemnity, two parties, indemnifier and indemnity fied or indemnity holder, whatever you can call. Three parties, creditor, PD and surety. Number of contract, one contract only. Contract of indemnity has one contract, but contract of guarantee, just for now we study three contracts. Principal contract between creditor and PD, secondary contract between surety and creditor, and implied contract of indemnity between PD and surety. What's the purpose? In the contract of indemnity, the purpose is to save from loss, isn't it? The purpose is to save from loss. And contract of guarantee is the purpose is to give some kind of security to the creditor. Indemnity's purpose is to save from loss, and guarantee's purpose is to give some kind of security. Liability. If we talk about, see, liability, there are 2 points. Nature of liability and time of liability. Nature of liability. In case of contract of indemnity, indemnifier's liability is primary. The liability of indemnifier is primary. There is nothing called secondary liability. But in case of contract of guarantee, who took the loan? Contract of guarantee, who took the loan? PD took the loan. So liability of principal debtor. नाम में तो principal है. So liability of principal debtor is primary. Surety's liability is secondary. He will only pay if PD defaults. Liability of surety is secondary. Liability of surety is secondary. Liability of PD is primary. Time of liability. Liability arises only after happening of risk. For example, if it was a fire insurance, liability will arise only after fire took place. Okay. But in contract of guarantee, the liability is existing from the beginning because the loan was given at the beginning itself. PD's liability exists from beginning. In contract of guarantee, PD ka jo liability, it exists from beginning. Can minor be admitted as a party? No. In contract of indemnity, minor cannot be a party to the contract. But in contract of guarantee, minor can be PD because PD is a beneficiary, he is receiving the loan. Minor can become principal debtor. No minor in indemnity, but in guarantee, minor can be a party. Right to recover. Indemnifier, if pays the compensation to indemnified, can he recover from someone? No, he cannot recover from anyone. So indemnifier, after paying compensation, cannot recover from anyone. But in case of contract of guarantee, if surety pays creditor, if surety has to pay the amount to the creditor, then surety can recover it from PD. Surety, after paying the creditor, can recover it from PD. Acha, indemnity contract is narrower, but contract of guarantee is broader. Indemnity is narrower, but contract of guarantee is broader because contract of guarantee includes implied contract of indemnity. Broader as it includes contract of indemnity. We got it, sir. Done, 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 done. Done, 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 done. There is no separate requirement for consideration of guarantee. See, contract requires consideration. So, what is the consideration that surety is getting? If at the request of surety, creditor is giving some loan or credit, creditor is giving some loan or credit to PD, that's a sufficient consideration for surety. मेरे बोलने पर लोन दिया, on my saying the loan was given, that's a sufficient consideration. So consideration for guarantee, you can write just one line in it. Consideration for guarantee. If on surety's request, creditor has given, if on surety's request, creditor has given if on surety's request, creditor has given any loan, oblique credit, or extends the credit period for PD
then it's a sufficient consideration for guarantee. If on surety's request, creditor has given any loan or credit or extends the credit period for PD, then it's a sufficient consideration for guarantee. We got it, sir. Essentials of contract of guarantee. What are the features of contract of guarantee? We have already understood this. There must be a principal debt between creditor and PD. There must be a principal debt. Anything done or any promise made for the benefit of PD. Just now we read now, if creditor is doing anything for the benefit of principal debtor, anything done or any promise made for the benefit of principal debtor is a sufficient consideration for the contract of guarantee. COG means contract of guarantee. Past consideration, not a consideration over here. Remember, over here, past consideration is not a consideration, which means if already creditor has given loan, if already creditor has given loan to PD, if already creditor has given loan to PD, at that time I was not the guarantor. If already creditor has given loan to PD, later on, if I say that I will give the guarantee, it is not possible. Later on, I cannot give any kind of guarantee. Understood, sir? So if already loan was given without the guarantee, then later on we cannot guarantee. We understood. Guarantee, contract of guarantee, obviously it can be oral or written also. Contract of guarantee can be oral or written also. Achha, if surety is consent, if my guarantee was obtained by fraud or misrepresentation, then obviously it will be, contract of guarantee will be invalid. If there was fraud or misrepresentation, if I was misrepresented, if there was a fraud done with the surety, okay, then contract of guarantee is invalid. If co-sureties means other sureties were also supposed to join. They do not join, then contract of guarantee is invalid. Say for example, it was agreed that I am giving this guarantee. I am giving guarantee for Arun along with Arun's father. Arun's father should also act as a co-surety. Why only me will guarantee for Arun? Arun's father will also be acting as a co-surety along with me. Arun's father refused. So the guarantee given by me is also invalid because I gave the guarantee on a condition that other co-surety will also join, who will be Arun's father. But if Arun's father fails to join, fails to give guarantee, then my guarantee is also invalid. Understood, sir? Remember one thing, surety can be sued by the creditor. Creditor can sue surety without suing PD if PD defaults. The due date of loan arrives, PD refuses to pay. PD refuses to pay to the creditor. Then creditor can straight away ask surety to pay because PD has defaulted. So creditor can ask surety to pay, and if surety also refuses to pay, creditor can directly sue surety without suing principal debtor. So surety can be sued by the creditor without suing PD. Understood, sir? We understood. Nature of surety's liability. Nature of surety's liability means, there is a Hindi song. Tu jahan jahan chalega, mera saya saath chalega. Means surety is liable for only such amount for which PD is liable. Liability of PD is equal to liability of surety. They run coextensively. If PD is discharged, if creditor waives off PD, that PD you don't have to pay. Wow. Then surety is also discharged. PD discharged, surety discharged. If PD is liable for loan plus interest, surety is also liable for loan plus interest. So liability of principal debtor and surety runs coextensively together, parallelly. Surety's liability runs coextensively with that of principal debtor. It is liable for that amount for which PD is liable. Surety is liable for that amount for which principal debtor is liable. Example, PD is liable for loan 10,000 and interest 1,000, which means 11,000. If PD is liable for loan 10,000, interest 1,000, 11,000, then surety's liability will also be 11,000.
If PD's liability is waived off, then surety is also discharged. PD liability waived off, then surety is also discharged. However, remember one thing, if I've already told you, if PD defaults on due date, principal debtor defaults on due date, creditor has a right. Creditor has a right that he can sue surety without suing PD. Yes, sir, we understood. Please read these 4 paragraphs, 4 statements. Nature of surety's liability. Please go through it. Nature of surety's liability. Very, very fast. Absolutely fast, boys and girls. Come on, guys. Padho.
Yes, sir, done. Done, 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 done. Now, boys and girls, coming to very, very interesting topic. Discharge of surety. Discharge of surety. See, ultimately, surety is ultimately liable if PD defaults, isn't it? If PD defaults on the due date, then ultimately surety will have to pay to the creditor. But sometimes surety will get discharged. Sometimes surety gets discharged. What are the cases when surety gets discharged? There are three broader cases. Broader heading when the surety gets discharged. Very simple. Very, very simple. In case of continuing guarantee. Sir, how many marks will contract of indemnity and guarantee come? Maximum 4 marks. Okay, sir. Discharge of surety. Surety gets discharged. Hooray! I will get discharged. In case of continuing guarantee. In case of continuing guarantee. What do you mean by continuing guarantee? Continuing guarantee means I have not given a guarantee for a particular transaction. Rather, guarantee was given for a series of transactions. Instead of giving guarantee for a particular transaction, I gave guarantee for a series of transactions. For example, I went to the shopkeeper and said that shopkeeper, please sell the goods on credit to Mr. A. Shopkeeper, please sell the goods on credit to A. Keep selling the goods on credit to A up to rupees 50,000. So when I am guaranteeing shopkeeper that please sell the goods on credit to A up to rupees 50,000, it is not for a particular transaction. It is for a series of transactions with a maximum limit 50,000. It is for a series of transactions with the maximum limit 50,000. This is called continuing guarantee. Continuing guarantee means guarantee given by surety, not for a particular transaction, but for a series of transactions. And surety may put a cap, upper cap, maximum limit on it. Like I did over here, that I guarantee it, shopkeeper, please sell the goods on credit to A. If he defaults, I will pay you, but sell the goods on credit, but up to maximum 50,000. This is called continuing guarantee. Now, in case of continuing guarantee, the surety gets discharged in two cases. By revocation. Revocation of continuing guarantee. Revocation of continuing guarantee means I went to the shopkeeper and said him, hey dude, shopkeeper, I revoke my guarantee. I revoke my guarantee. I revoke my guarantee. Time out. I revoke my guarantee. So I can revoke my guarantee, that is cancel my guarantee. But till the time of revocation, if 30,000 goods worth rupees 30,000 were sold on credit, for those 30,000 rupees I am liable. Yes, sir, we understand. Or if surety dies, in case of surety dies, then also the continuing guarantee is revoked. So discharge of surety in case of continuing guarantee. The first case is surety gets discharged in case of continuing guarantee. Continuing guarantee, you understand? Yes, sir, continuing guarantee, we understand. You have just now explained continuing guarantee means guarantee for a series of transactions. Continuing guarantee means guarantee for a series of transactions. Continuing guarantee means guarantee for a series of transactions. So it can be revoked. It can be revoked by notice of revocation. That shopkeeper, I want to revoke. And by surety's death. By notice of revocation and by surety's death. Understood, sir. However, till the date of revocation, whatever liability has been incurred, surety will continue to be liable for that. For example, 30,000 goods were sold, then for 30,000 I am liable. If 60,000 goods were sold, maximum liability was 50,000. Okay, sir. Surety will continue to be liable for that. Copy. Copy very fast.
Done, sir. Let us move on. So this was the first case that surety gets discharged in case of containing guarantee by notice of revocation or by surety's death. Sir, in case of surety's death, sir, if the liability is whatever liability has been incurred till the death of surety, for that obviously surety's estate will be liable, surety's legal heirs will be liable. For whatever liability that incurred before the death of surety, surety's legal heirs will be liable. Understood, sir? Second case of discharge of surety is by the conduct of the creditor. I am the surety. I gave guarantee to the creditor. So I am liable to the creditor if PD defaults. But because of the conduct of the creditor, sometimes surety gets discharged. For example, first case, because of the conduct of the creditor, first case. If creditor changes the terms and conditions of the contract with PD without the consent of surety. Wow. Guarantee dete samay surety. And while changing the terms and conditions with PD, creditor and PD, they themselves have changed the terms and conditions of the contract without the consent of surety. Surety is discharged. Surety is discharged by variance in contract between creditor and PD. See, we are now studying by the conduct of the creditor. By the conduct of the creditor, surety is discharged. When? First example, variance in contract. If there is a variance, change in the terms and conditions of the contract between creditor and PD without surety's consent. Variance in contract, you have varied the contract without surety's consent, discharges the surety. Surety is discharged. Or if creditor has defaulted, then also the surety is discharged. If creditor has defaulted, then also surety is discharged. Default by creditor also discharges the surety. How? Let me give you an example. Default of creditor discharges surety. Default of creditor discharges surety. Let me give you an example, boys and girls. Hello. Just give me 1 second. 1 minute rather. Hello. 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 Perfect now. Yeah. So I was giving an example, boys and girls. Hello. Perfect. Default of the creditor discharges surety. Yes, if the fault was of the creditor, then it discharges surety. So variance in contract, if there is a variance in contract without surety's consent, I am discharged. Yeah, for default of the creditor. Let me give you an example of default of the creditor. It is favorite example of institute. Many times it has come in the exam. For example, I gave guarantee. MA gave guarantee to A. MA gave guarantee to A. That A, you can keep B. You can keep B for building a bungalow. You want to build a bungalow now? Please keep B. I know he is going to build your bungalow within the specified time. If he fails to build your bungalow, you just appoint B to build your bungalow. If he fails to build your bungalow within the specified time, I will pay you compensation. I am the guarantor of B that he is going to make your bungalow within the specified time. A, please appoint B. But there was a condition that A will have to supply the timber, raw materials for building the bungalow.
So B, I am 100% sure. I am the guarantor of B. He is going to build your bungalow within the specified time if you supply him the raw materials on time. Now, if A himself defaults, does not supply the raw materials of time, if A himself defaults and does not supply the raw materials on time, then obviously the building and the bungalow will not be built. Surety is discharged. Why surety is discharged? I'm not liable to pay you any kind of compensation. The bungalow was not built because of your fault. You did not supply the raw materials on time because it was default by the creditor. Discharge of PD discharges surety, obviously. Creditor has waived off PD's loan. Creditor, bada dilwala, waived off PD's loan. If creditor waives off PD's loan, discharges principal debtor, then surety is also discharged because our liability runs co-extensively. Correct, sir. So what are the cases? By the conduct of the creditor, the surety gets discharged. Either variance in the contract without surety's consent, or default by the creditor, or discharge of PD discharges surety. There are some cases when surety is not discharged. For example, creditors forbearance. Forbearance means postponement to sue PD does not discharge surety. If creditor, see, creditor has not waived off PD's liability. Creditor has not waived off PD's liability. It is just that creditor has made a forbearance, postponement to sue principal debtor. Creditor not suing principal debtor does not mean that the surety is discharged. It does not discharge surety. And we have already learned that creditor without suing principal debtor can also sue surety. Achha, if creditor enters agreement with the third party, not with the PD, creditor makes some other agreement with the third party, then obviously it does not discharge surety. Creditor does not enter the agreement with PD, he is entering agreement with some third party, then obviously it does not discharge surety. And remember one thing, creditor's action against the interest of surety discharges surety. Creditor action against the interest of surety. If creditor's action hampers the interest of surety, then surety is discharged. It discharges surety. For example, there was a collateral security that PD gave to the creditor. PD has defaulted, but in spite of the default of loan by principal debtor, what creditor did? Creditor returned back the collateral security to PD. Wah! You have returned back the collateral security to PD. I am also discharged. Surety is discharged. I am not going to repay you the loan because you have acted against my interest. You should have given the collateral to me. So if creditor who was having some collateral security returns it back to the principal debtor, then surety is discharged because it is an action against the interest of surety. Understood, sir? Understood. This is very simple. Invalidation of the contract of guarantee. If the contract of guarantee is invalid, surety is automatically discharged because the contract of guarantee was invalid. When the contract of guarantee will be invalid? If guarantee was obtained from me by fraud or misrepresentation, if there was a fraud or misrepresentation and the guarantee was taken from me, then the contract of guarantee is invalid. Next example, if the other co-sureties were supposed to join, but they did not join, then I am also discharged. If the guarantee was obtained by misstatement, concealment of fact, almost same. Other co-sureties did not join. Guarantee was obtained by misstatement or concealment of facts, or other co-sureties who were supposed to join, they also did not join, then I am also discharged. I gave you an example now that if PD's father was also supposed to join, but he refused, then I am also discharged, man. Done, sir. Rights of surety. Rights of surety. So this was discharge of surety all about. Now we are coming to rights of surety. This is the last topic, boys and girls. We are going to read it, but I am giving you 3 minutes. First, you read this diagram, rights of surety. Surety is having a right against a principal debtor, creditor, and co-sureties also. Just go through it, boys and girls. What kind of rights does a surety has?
See, surety has a right, first of all, on the principal debtor. It is because of your default that I am having to repay the amount to the creditor. So principal debtor, I have a right on you, right of subrogation. Right of subrogation means understood. Whatever security you gave, those security will be with me. Right of subrogation. Right of indemnity. Remember, na, there was an implied contract of indemnity. There was an implied contract of indemnity between surety and PD. So now indemnify me. PD, you will have to indemnify the surety. And surety also has a right on the creditor. What right on the creditor? To obtain the collateral security. Please give me the security that PD gave you. And right against the co-sureties. If there were more than one surety, then why alone I will suffer if there were more than one surety? I have a right to receive contribution from the co-sureties also. Right to receive contribution. So I have a right on the principal debtor, right of subrogation. That is, I will acquire all the rights of principal debtor, and principal debtor will have to indemnify me. PD will have to indemnify me. I have a right on the creditor to receive the collateral security, and right on co-sureties to receive the contribution. See, I have explained everything. Right of subrogation. First of all, right of surety on PD. What right of surety on PD? Right of subrogation. Whatever rights creditor had on PD, try and understand. Previously, creditor was having the right on PD. Now, because I have paid on behalf of PD, I will acquire the right of creditor on PD. I will become the new creditor for the PD. I will step into the shoes of the creditor. Whatever rights the creditor had on PD will automatically be transferred to surety if he pays or performs because of PD's default. This means surety steps into the shoes of creditor. And also I have a right to indemnity. All the amounts which I have lawfully paid, all the amounts which I have rightfully lawfully paid by surety because of PD's default. Surety has a right to claim such lawful amount from PD. Very interesting examples coming up. Example 1. A, the surety had to pay B, the creditor. The surety had to pay the creditor B on being sued because of default of PDC. So C has defaulted, that is why A has paid to B an amount of rupees 10 lakh. A also incurred legal expenses of 10 lakh. Rather 1 lakh, it should be 1 lakh. A also incurred legal expenses of rupees 1 lakh to defend the suit on reasonable grounds. So I paid creditor how much? 10 lakh and legal expenses 1 lakh, total 11 lakh. I can recover from principal debtor 11 lakh. Surety A can ask from principal debtor for indemnification of 11 lakh from PDC. Okay, surety A can ask for indemnification of 11 lakh from principal debtor C. Understood. Example 2. What if in the above example surety incurred 1 lakh legal expenses unnecessarily without reasonable ground? Then I can claim only 10 lakh. Only rightful expenses I can recover. If it was unlawful expense, unnecessary expense, I cannot recover. I can recover only loan amount 10 lakhs. If it was unnecessary legal expense, that court will decide. A guaranteed B. Read this example on your own. Okay, let us read. A is a guarantor. A guaranteed B for supplying rice to C. B, please supply rice to C up to rupees 2 lakh. I gave guarantee of maximum rupees 2 lakh that B, please supply rice to C. Later on C defaulted, and so A paid 2 lakh to B. I paid 2 lakh to B. C defaulted, I paid 2 lakh to B. But however, it was proved later on by the principal debtor that rice of only 1,50,000 was supplied by B. But I in hurry have already paid 2 lakh. I cannot recover 2 lakh from principal debtor because principal debtor has proved that the liability was only 1,50,000. A can claim only rightful amount, that is 1,50,000 from C, and not rupees 50,000 which was wrongly paid by A to B. Understood, sir? I also have a right. This was right of surety. So far we were doing right of surety on principal debtor. Now right of surety against the creditor. I also have a right on the creditor to receive the collateral. Right of security. Creditor will transfer the charge on security. To surety. Example. A guarantees bank for loan to C against the mortgage of house property. Bank cancels the mortgage. Oh my God. Bank has cancelled the mortgage. Then it will amount to variance. In contract. I am discharged. And it will also amount that creditor has acted against the interest of surety. If creditor acts against the interest of surety, surety is discharged. So bank who was given the house property as mortgage, bank cancels the mortgage. On due date, C becomes insolvent. And defaulted bank loan
surety is not liable to pay any amount to bank because my right to security was hampered. Clear, sir? A guaranteed bank, example 2, A guaranteed bank for loan advance to C against security 1. After some time, bank also asks from C further security 2 and just before due date of loan return back security 2 to C. That's okay. At the time of guarantee, the guarantee was given for security 1 in lieu of security 1. If additional security 2 was accepted later on by bank and returned also, it does not hamper the liability of surety. Surety is still liable because at the time when I gave the guarantee, the security was security 1. This time A is not discharged because the guarantee was given for loan backed by security 1, which still exists. Security 1 is still existing. Now I have a right against the co-sureties also. Who has right against co-surety? Surety. Surety is having right against co-sureties also. Remember one thing. All the co-sureties. Very important. This topic is very important, boys and girls. Let me tell you, only 10 minutes are left for the class to end. So please focus very hard for the 10 minutes. All the co-sureties are jointly and severally liable to pay equal amount. Means 1:1:1:1:1. Matlab equal. All co-sureties are equally liable if PD has defaulted. Unless there is a contrary contract. Unless there is a contrary contract means if co-sureties have decided that they are going to bear the liability in the ratio of 3:2:1, 2:2:1, then they will be liable in a different ratio. If they have agreed to a different ratio, if co-sureties have agreed to a different ratio, then they will be liable in a different ratio. But if there was no contrary contract, there was no opposite contract, then they will be liable equally. Subject to their maximum liability. Subject to their maximum liability. Normally they are equally liable, subject to their maximum liability. Amazing case coming up. Read this example. A, B, C. If you understand this, it means you are a winner. You are a champion. A, B, C are co-sureties. There are 3 co-sureties for principal debtor. And he has defaulted. It was agreed at starting only. Maximum liability of A, B, and C, who are the co-sureties, will be 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh. Maximum liability is 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh. It is not the ratio 2:3:5. This is not the ratio in which they are going to bear the liability. They are going to bear the liability equally because there was no other ratio decided. So they will be equally liable. So what is 2:3:5? There is nothing called 2:3:5. This is the maximum liability. Is it the ratio of bearing the liability? No, it is not the ratio of bearing the liability. This is the maximum liability. 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh. It does not mean that they will be liable in 2:3:5. Since there is no other ratio agreed, so they will be liable equally. Now compute the liability in the following cases. Say for example, so these are the 6 cases, okay? Default amount of PD, case 1, 2, 3, 4, 5, 6. Default amount of PD is 3 lakh. If default amount of PD is 3 lakh, does it mean that 3 lakh will be divided between A, B and C, among A, B and C in 2:3:5? No. This is the maximum legal liability, 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh. Not the ratio. So they will be liable equally. So 3 lakh liability, A, B and C will be liable 1 lakh each. For 6 lakh, divided by 3, 1:1:1, 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh. For 7 lakh, if we divide equally, it will come to 2.33. But you know now, A's maximum liability is 2 lakh. So what we'll do is, A's maximum liability is 2 lakh. So A can be a maximum 2 lakh. Now remaining 5 lakh. Out of 7 lakh, A will be a 2 lakh. Now remaining 5 lakh will be divided equally between B and C. 2.5 lakh each. Understood, sir? 9 lakh. Again, A will be liable for maximum 2 lakh. So remaining comes to 7 lakh. Remaining comes 9 minus 2, 7 lakh. So 3.5 lakh each. But B is liable only for maximum 3 lakh. So we'll give the B liability of maximum 3 lakh. And C will bear the remaining 4 lakh. 10 lakh. Again, 2 and 3 maximum and C will bear the remaining 5 lakh. 11 lakh. 11 lakh. Oh my God. 11 lakh. Then A will be a 2 lakh, B will be a 3 lakh, C will be a 5 lakh. That's it. 2, 3 and 5. Sir, 6 होना चाहिए. Maximum liability of C is 5 lakh na. So 1 lakh who will bear? No one. No one. Because maximum guarantee that we gave was 2, 3 and 5. We are bearing that. So that will be the loss of the creditor. Remaining will be the loss of the creditor. Understood, sir? Example 2. A, B and C are co-sureties for PD who defaulted 60 lakh. A, B and C are the co-sureties. A, B and C are the co-sureties for PD who defaulted 60 lakh. Nothing was agreed. So A, B, C will be liable for 20 lakh each.
they shall be liable for 20 lakh each. Example 3. What if in the above example, one of the co-sureties, one of the co-sureties C died or become insolvent? See, if co-surety C dies, his legal representative will be liable. C's legal representative will be liable to pay out of C's estate assets. But if C becomes insolvent, then obviously creditor will be here. Okay, then creditor will be here if C becomes insolvent. Which means it is very interesting that whether C dies or becomes insolvent, that's not the headache of A and B. Other co-surety A and B won't be liable to pay C's liability. Understood? C share won't be paid by A and B. Clear? Read example 4. Please read example 4 on your own. Fast. Read example 4. A, B and C are the co-sureties. A, B and C are the co-surety to the extent of 1 quarter and 1/2. Which means A will be at 1/4, B will be at 1/4, C will be at 1/2. PD defaulted 4 lakh. So they have agreed a ratio now. So A will be liable for 1/4 of 4 lakh, B will be liable for 1/4 of 4. So simple, man. 1/4, 1/4 and 1/2. They are not equally liable. Why are they not equally liable? They are not equally liable because there was a contrary contract. They are not equally liable. Why are they not equally liable? Because there was a contrary contract of 1/4, 1/4 and 1/2. We understood, sir. Boys and girls, this completes our exhaustive lecture of the contract of indemnity and guarantee. I hope you have enjoyed the lecture. You can afford to smile. See, we have already completed contract of bailment, pledge, indemnity, guarantee, and it's the time for completing the contract of agency. Agency is relatively smaller as compared to bailment, pledge, and indemnity and guarantee. So we'll be completing contract of agency within 1 hour or 1.5 hour max. Okay, let us hit it, boys and girls. These notes are exhaustive. You have to study from these notes itself. Contract of agency. Contract of agency. Now, try and understand. Law has not defined what a contract of agency is, but it has defined the term agent. I repeat, contract of agency defined or not defined? Not defined. But the term agent has been defined? Yes, the term agent has been defined by the law. Law has not defined contract of agency, however, the term agent has been defined by the law. Agent means a person employed. Agent means a person. Agent means a person employed. Okay, so agent means a person employed. Right, sir? Agent means a person employed, beta. Employed to do an act for another person. Either is a person employed to do some act for another person or to represent another person in front of dealing with the third party. Read the definition on your own, please. Very fast. Sir, read. Agent means a person employed. Okay, agent means a person employed to do an act. He is a person employed to do an act for another person. He is going to do an act for another person or to represent that another person in front of dealing with the third party. See, either he is a staff, he will do some work for me, then he is my agent. Either he is going to do some activity for me, then he is my agent. Or he is going to represent another in front of dealing with the third party. He is going to represent another person in front of dealing with the third party. He is going to represent another person in front of, he is going to represent another person means me in front of dealing with the third parties. Okay, sir. Either he will do some work for me or he will represent me in dealing with the third party. Who am I? Principal. Who is he? Who is doing an act for me or he is dealing with the third parties on behalf of me? He is an agent. That another person for whom such act is done or who is so represented is called principal. Okay, sir. There is a Latin maxim. Maxim, you understand? Kahavat, saying. So there is a Latin maxim. Quid fecit per alium fecit per se. Quid fecit per alium fecit per se. There is a Latin maxim which says, quid fecit per alium fecit per se. Quid fecit per alium fecit per se. Quid fecit per alium fecit per se. What is the meaning of quid fecit per alium fecit per se? Quid fecit per alium fecit per se means
He who acts through an agent is acting himself. This means he who acts through an agent is acting himself. Quid facit per illum facit per se means the person who is acting through an agent is acting himself. If I am acting through an agent, if I am asking my agent to enter a contract with third party, it means I myself, I am entering the contract with the third party. If I am acting through an agent, it means I am acting myself. Any contract entered by agent with the third party is deemed to be entered by me myself. If my agent is entering contract with third parties, it is deemed that I have entered the contract. So he who acts through an agent is acting himself. There are two tests of agency. If these two conditions are satisfied, then there is a relationship of principal and agent. If the two conditions are satisfied, then there is a relationship of principal and agent. Condition number one, agent should have a capacity to bind the principal and make him answerable to third party. Agent must have a capacity to bind the principal and make him answerable to third party. Okay? So agent should have a capacity to bind the principal and make him answerable to third party. So if agent has a capacity to bind the principal, make him answerable to third party, then we can understand, yes, he is an agent. If he has a capacity to bind the principal and make him answerable to third party. Second, agent can establish privity of contract. Agent can establish a private contract between principal and third party. Although agent has contract with third party, but there is a privity of contract, private contract between principal and third party, then obviously this is also a test of agency. So there are two tests of agency. If agent can bind the principal, for his acts, and the second test is agent can establish a privity of contract between principal and third party. Now, boys and girls, very interesting. Principal must be what? Major. He cannot be minor. Agent can be minor, by the way. Okay, agent can be a minor, but principal has to be major and sound mind. Principal must be major and sound mind. But remember, agent may be a minor. Okay, sir. Agent may be a minor. If minor who has not attained the age of 18 years, the person who has not attained the age of 18 years is a minor. If he is appointed as an agent, if minor has been appointed as an agent, then whatever contract he made with the third party, if minor is appointed as an agent, whatever contracts he entered with the third party on behalf of principal is liable for those contracts. So if minor agent enters a contract with the third party on behalf of principal, it shall be valid. But you know what? If that minor agent acted negligently, if the minor agent acted negligently or breached his duties, then principal cannot held him liable. Normally, if an agent acts negligently, then principal can sue the agent to recover the loss. If agent does not follow my instruction, I can recover the loss from agent. But if the agent is a minor, even if he acts negligently, principal suffers loss also. He cannot recover the loss from the minor agent. Even if minor agent has acted negligently, he cannot be held liable. You got it, sir? Let me take an example to make you understand. See this example. Awesome example. What did I say? Listen. If normal agent has acted negligently, yes, the contract between principal and third party will be valid. Even if agent has acted negligently, it does not affect the rights of third party. Contract with the third party is valid. Principal is liable to third party. But the loss because agent acted negligently, can the loss be recovered from that agent? Yes. But if he was a minor agent, then loss cannot be recovered from that minor agent. Okay. Now listen to this example very carefully. MA appointed Rahul as agent. MA appointed Rahul as his agent to sell his car for minimum 2,50,000. Rahul sold a car 2 lakh to Raj. Is it mentioned that Rahul is a minor? No. So if it is not mentioned that Rahul is a minor, it means the agent is major. Now you tell me, I appointed an agent Rahul to sell my car for 2,50,000, but that agent, stupid agent, has sold the car for 2 lakh to Raj. My first question, everybody is going to answer. Is contract with Raj valid? Is contract with third party Raj valid? Yes, although agent has acted negligently, but contract with third party Raj is valid. Is contract between MA and Raj, the third party, is valid? Yes, MA will have to sell the car to Raj at 2 lakh.
can MA sue his agent Rahul to recover 50,000 loss because I told agent to sell it for 2,50,000, but he sold for 2 lakh. Can I recover my loss of 50,000? Yes, because agent breached his duties, that is acted negligently. But if Rahul was a minor, still then contract between MA Raj will be valid. But if Rahul was a minor, then I cannot recover 50,000 from Rahul. Normally, I can recover 50,000 loss from Rahul, but if he is a minor, I cannot recover the loss. Question is, what if Rahul was a minor? What if Rahul was a minor? Contract between MA and Raj, third party would still be valid, but MA will have to bear the loss of 50,000. He cannot recover from Rahul as he is a minor. Understood, sir? Understood, Mundi Lao. Understood. Perfect. Lovely. Acha, remember one thing. You must have read it in the basics of the Contract Act at the foundation level, basics of the Contract Act, foundation or BCom level, whatever. No consideration, no contract. But there was an exception to the principle of no consideration, no contract, and that exception was contract of agency. Contract of agency does not require any consideration. No consideration is required in the contract of agency. No consideration is required in the contract of agency. Isn't it? Acceptance of agency is a sufficient consideration, which means even if an agent works free for me, even if an agent says that no, I am here for training, I will work free for you, I am here for your leadership, I will work free for you, then also the contract of agency is valid. It requires no consideration. Now come to extent of agent's authority. Extent of agent's authority. Tell me something. If agent murders third party, will principal go to jail? If agent murders someone, beats someone, is principal liable for the acts of the agent? Normally, principal is liable for the acts of the agent, but only lawful acts done in the ordinary course of business. Yes, principal is liable, but only for the lawful acts of the agent which are done in the ordinary course of business. I am liable for my staff's lawful actions done in the ordinary course of business. If he murders someone, I am not going to be hanged. He will be hanged. He will be punished. So what is the extent of agent's authority? Acts done by agent in normal circumstances. First of all, let us read acts done by the agent in normal circumstances. Principal is liable. Principal is liable. Principal is liable for all the. Principal is liable for all the lawful acts done by the agent in the ordinary course of business. Principal is liable for all the lawful acts done by the agent which is in the ordinary course of business or as per the custom of trade, as per the industry practices. Custom of trade means as per industrial practices. So tell me one thing. Act done by the agent in the normal circumstances. Principal is liable. Principal is liable for all the acts done by the agent. Principal is liable for all the acts done by the agent in the ordinary course of business or in the custom of the trade. Principal is liable for all the lawful acts done by the agent either in the ordinary course of business or as per the custom of the trade. But if acts are done in case of emergency, if agent has acted, listen to me, if my agent has acted outside the normal course of business, agent has acted outside the normal course of business, outside the ordinary course of business, then principal is not liable. If agent has acted outside the ordinary course of business or outside the custom of trade, then I am not liable. Whatever loss I will suffer, I will recover it from agent. But I cannot recover it. I can't recover it from agent even if he has acted outside the ordinary course of business to save the principal from loss and it was an emergency, commercial necessity. Listen, normally if agent acted outside the ordinary course of business, outside the custom of trade, then whatever loss principal suffers, he can sue the agent to recover the loss. But he cannot sue the agent to recover the loss if agent although acted outside the normal course of business, but he acted because it was an emergency. He acted in emergency. It was a commercial necessity to save the principal from loss and communication with the principal was not possible. He acted outside the ordinary course of business. In emergency, it was a commercial necessity. Communication with principal was not possible. And he acted like any other man of ordinary prudence would have acted in the like circumstances. जैसे कोई और इंसान एक्ट करता वो भी वैसे ही एक्ट किया. He acted like an man of ordinary prudence would have acted in the like circumstances. Then whatever loss is there, principal is liable. I cannot recover it from agent. For example, I asked my agent to travel to Mumbai to sell the goods. I asked my agent to travel to Mumbai to sell the goods.
halfway the goods started perishing. Halfway through, the goods started perishing. And the goods cannot be taken to Mumbai because the goods have already started perishing. So what he did, he sold the goods halfway only, at half price. He sold the goods halfway without reaching Mumbai at half price. Had he reached Mumbai, the goods value would have become zero. So what agent did, and there was no network to communicate with the principal. Okay. So the goods started perishing. He could not reach Mumbai, and so he sold the goods at half price, at halfway. Tell me, did he act outside the normal course of business? Yes, it was outside the normal course of business. But it was a commercial necessity to save the principal from further loss. And he acted like any other man of ordinary prudence, ordinary intelligence would have acted, and communication with principal was not possible. Then such an act is called act in case of emergency. Principal cannot hold the agent liable for any. Principal cannot sue the agent for any. Understood, sir? See, agent acted in emergency outside the ordinary course of business and custom of trade. It was outside the ordinary course of business and custom of trade to save principal from loss. To save the principal from loss. It was a commercial necessity. It was commercially necessary. It was a commercial necessity to save the principal from loss. Communication with principal was not possible, and he acted in good faith like a man. Good faith means there was no cheating, fraud. He acted in good faith like a man of ordinary prudence would have acted in like circumstances. Then even if any loss or liability arises, principal should bear it and cannot make the agent liable. Even if any loss or liability arises, principal should bear it. He cannot make the agent liable. Now read all these examples, boys and girls. Example 1. An agent during the course of dealing with the third party, agent while dealing with the third party beats him. Agent has beaten the third party. Will the principal be liable? No. I am liable only for the lawful act. This was an unlawful act. Principal is not liable because it's an unlawful act. Agent ko pakad lo. Example 2. Agent steals goods. Oh my God, agent has stolen goods and sold it to third party. Principal is not liable to third party because it's an unlawful act. Example 3. MA appointed Rahul as agent. Same example that I have already discussed. MA appointed Rahul as agent and delivered him some goods to be sold at Mumbai. Read this example I have already discussed with you guys. Read it very fast, boys and girls. Fast. Understood, sir. Understood. Clear? So I told my agent to sell the goods in Mumbai, but the goods started perishing, so he sold halfway at half price. So although he acted outside the authority, but it was emergency, so I cannot recover the loss from my agent. Confirm, sir. Now let us come to types of agency. There are different types of agency. It's very interesting, very interesting. You'll enjoy. So there are different types of agents or agency: express, implied, and ratification. 3 different types of agents: express, implied, ratification. The first one is express agent. Express agency, express agent. When there is either oral or written, when the agent has been appointed by clear-cut words, either oral or written. So when contract of agency is created by words, either oral or written, it's called express agency. All the
companies, when they hire their staff, it is an express agency because they hire them by signing a written contract. But local businessmen, small businessmen, they hire the staff orally, so it's an express oral agency. Okay, sir. Express agency means when agent has been appointed by an express contract through words, either oral or written. Implied. Three types of agents are there: express, implied, ratification. Understood express? Now coming to implied. Person is said to be an implied agent by the conduct of the parties or by the circumstances. By the conduct of the parties or by the circumstances. Now try and understand. By the conduct of the parties or by the circumstances. First of all, let me give you an example of express agency. Express agency. A appointed B as a caretaker of his property. I have appointed B as a caretaker of my property by signing a power of attorney. I have signed a power of attorney, which means I have signed a contract appointing B as a caretaker of the property. Thus, it's an express written contract of agency. Now, implied agency. Implied agency can be of two types. Either by the conduct of the parties or by circumstances. If the parties are behaving themselves to be like principal agent, then although there is no express contract, but if they behave in front of third party, if the two parties are behaving in front of third party like principal agent, then they'll be held as principal agent. So implied agency can be either conduct of the parties. I have explained you implied agency by the conduct of the parties, that they are behaving themselves to be principal agent in front of third party. So implied agency, what about implied agency by circumstances? I'll explain you that. First, let us read implied agency by conduct of parties ka example. B advanced A's money. Oh my God. B advanced my money to C. Without my permission, B advanced my money to C. And what I did? I started collecting interest from C. So this is an implied agency. And A collected interest from C. So B is an implied agent. Again, an example of implied agency. B sold goods of A. B sold my goods to C. B sold goods of A. B sold goods of A in front of A. B sold my goods in front of my eyes to C. But A did not stop B. I did not stop B. B will be treated as implied agent by the conduct of the party. Someone is selling my goods in front of me to another party and I am not stopping him. It's an implied agent. He is my implied agent. Now, implied agency can also be by circumstances. Okay, example of implied agency because of circumstances. Example of implied agency because of circumstances. हालात ही ऐसे, circumstances ऐसे मतलब हालात ही ऐसे. Wife, husband and wife are implied principal and agent. Let me tell you, husband and wife are implied principal and agent. Wife is an implied agent. Wife is an implied agent. Yes, wife is an implied agent of principal. Wife is an implied agent of principal. You understand what does it mean? Wife is an implied agent of the principal. It means wife is an implied agent of the principal. It means if wife purchases necessaries on credit, if wife, she is an agent of the husband. So if wife purchases necessaries on credit from third party, then third party can hold the husband liable. Husband will have to pay the bill. Husband will have to pay the bill. Understood, sir? So if wife purchases necessaries on credit from third party, then husband will have to pay the bill. See, wife is an implied agent of husband. If she buys on credit the necessaries, then husband is liable to pay. Husband will be liable to pay. So wife is an implied agent. If she buys anything on credit, the necessaries, then husband is liable to pay. My God. But you know what? There are 4 exceptions. There are 4 exceptions. There are 4 exceptions when husband is not liable. 4 exceptional cases when husband is not liable. 4 exceptional cases when husband is not liable. But these exceptions, you know, whatever exceptions are there, it's only bookish. It cannot be applied practically in life. 4 exceptional cases when husband is not liable. See, when husband prohibited wife
to not to buy on credit. When I ask my wife, dear, you're not going to buy anything on credit, she'll divorce me. It's not practically possible. This I'm telling for all the future generation kids. It's not practically possible to ask your wife, you're not going to pledge anything on credit. You are not going to buy on credit anything. Because ultimately bill I have to pay. Because if you buy on credit, I'll have to pay the bill. So please, I'm prohibiting you. Divorce. 50% property gone. It's better to pay. It's better to pay for these goods. Otherwise, 50% property will be taken. Or if husband asks a trader not to sell, it's more worse than this one. If I ask any trader, my wife is coming for shopping, the goods on credit, don't sell anything to her. You're gone, you're dead. Can this be done? So, when husband will not be liable, if he expressly prohibited his wife not to buy on credit or expressly prohibited that tradesman not to supply any goods on credit, or husband if already had supplied the article product to wife, whatever article she was going to buy, I had already supplied those goods to my wife, but she is again pledging on credit. Yes, madam is here. My God, you will understand better. Or husband gave sufficient allowance to wife. I had already given the money to wife. Still she buys on credit. Then if I challenge her in the court that I am not going to pay for this lady. I am not going to pay for this lady because I have already given her money for buying the sufficient allowance. Still she has brought the goods on credit. Then court will say, okay, Moji, you are not liable. But immediately in another court, I will have to go for fighting that divorce application that my wife will file on me. Yes, madam, please. Madam is here. Madam is also here. My God. Yes, madam is here. Oh, it's our privilege. Madam is making debut in your class. Awesome. Madam, can you just, thank you. So there is a provision that if you buy anything on credit, necessaries that I mean, then I'll have to pay. Definitely. No, but is it lawful? Maybe. Yes. Yes. Okay. But is it fair? Yes. My God. But there are 4 exceptions when I will not be liable. Even if you buy anything on credit, I will not be liable. There are 4 exceptions. If I ask you, acha, let us ask her. Okay. What will she do? I already know the answer, but still. There is a provision. I will not do, obviously. Law says that if husband asks his wife, husband prohibits the wife to not to buy anything on credit, then husband is not liable because he has already prohibited wife not to buy on credit. Your views on that, madam? What should wife do in that case? Will definitely take divorce. My God. Thank God I am not one of those husbands who will prohibit wife to buy anything on credit. And what will happen if husband asks the shopkeeper not to sell anything on credit to you? Then again, same thing. Okay. And what if husband has already given the product to you that you wanted to buy on credit, but still you buy on credit? If you'll give, then what? But still there are many, people like this. Okay. And what if husband gives allowance? If I give you sufficient money to buy the things, but still you do fixed deposit because you yourself is a chartered accountant, you are more smart, you will do FD and you will buy the same product on credit for which I have already given you the money. Okay. No, but still if you buy on credit, should I pay? Yes, you have to. Okay, we have understood. Okay, thank you, madam. Thank you. Now you can never forget these, provisions anymore. Coming to third type of agent, agency by ratification. Come. Express agent done, implied agent done. Now we are discussing agency by ratification. Boys and girls, let us talk about agency by ratification. Now, what do you mean by agency by
A person already entered a transaction. At that time, he was not my agent. At that time, he was not my agent, but he has already entered a transaction by taking my name. Person has already entered a transaction by taking my name. At that time, he was not my agent. Now, that person comes to me that, sir, I have done such and such transaction on your behalf. I have two options. Either I can own such transaction. I will admit such transaction. Okay, it's for my benefit also. Okay, I own such transaction. Then that person will be called agency by ratification. Ratification means I am confirming his past acts. I am confirming his past acts. Or I can disown such transaction. I can disown such transaction and I am not liable for anything because he was not my agent. I can send him to jail for taking my name. Ratification means ratification means owning or confirming. Ratification means owning, that is confirming the transaction done by a person with the third party. Ratification means owning or confirming transaction done by the person with the third party. Such transaction was done by that person without any authority from the principal. Such transaction was done by the person without any authority from the principal. So principal has an option either to own or disown. I can either own such act or disown such act. If principal disowns, then he is not liable to third party. But if he owns, then it's called ratification. Then it's called ratification, and the person who did such an act, because I am owning the transaction, I am adopting the transaction, so it's called ratification, and the person who did such an act is called ratified agent. Principal will be liable to third party. Read this example, you will understand. Read this example, you will understand, boys and girls. Done, sir. Now there are 7 features of ratification which are very simple. Just like any other contract of agency, ratification also can be express or implied. Okay, ratification can also be express or implied. The full transaction can be ratified. Part of the transaction cannot be ratified. Just say, for example, in this example, Rahul without any authority accepts the fees from student on behalf of MA. Now MA may either own or disown such act, isn't it? If he owns, then it becomes ratified agent and MA is liable to provide classes to students. Now, either I will have to ratify full or disown full. Part ratification is not allowed. I cannot say,
okay, I will give 50% classes. No, either you give full or you don't give any. Full ratification has to be done. And full knowledge is required for ratification. If later on it was found that agent has not disclosed me all the correct particulars, he has made incomplete disclosure. For example, he has disclosed wrong fees. He has disclosed less amount of fees that he collected from student. He has collected from student 10,000 each, but he has said he has collected 6,000 each. Then even if I ratify it, this ratification will be null and void because my ratification was made without full knowledge. Understood, sir? If agent fails to give full knowledge, then the ratification is invalid. So there are 7 essential conditions of ratification. Number 1, ratification can be either express or implied. Full transaction has to be ratified. Part transaction cannot be ratified. Full knowledge must be given. Only legal act can be ratified. Illegal, unlawful act cannot be ratified, obviously. And ratification cannot injure third party's interest, obviously. It should not hamper third party's interest. And ratification must be communicated. It has to be communicated. And it must be done within reasonable time. For example, if this ratification is done after the exams, it will serve no purpose. So it has to be done within reasonable time. So give me 7 features of ratification, 7 essential conditions of ratification. Ratification can be either express or implied. Full transaction must be ratified. Part transaction cannot be ratified. And it must be done with the full knowledge. It must be done with the full knowledge. And ratification, only legal acts can be ratified. Illegal act cannot be ratified. And it must be done within reasonable time. It must be done within reasonable time. It cannot injure third party's interest. Okay. And it must be communicated. Coming to a brand new topic known as sub-agent. Boys and girls, who is a sub-agent? I appointed an agent to do my work. Agent appointed his staff also, known as sub-agent. I have appointed a staff. Staff has also appointed a staff to work for him. That's called sub-agent. I appointed a staff to collect the fees. He delegated the collection of the fees power to his staff. That's called sub-agent. So sub-agent means agent of agent. He is a person appointed by agent. Sub-agent means agent appointed by agent to work under control and supervision of agent. Appointment of sub-agent is unlawful. It is illegal. It is invalid. You just need to understand. I have appointed you in my office. I have confidence on you. Now suddenly I come to the office and see another person is sitting. Where is Rahul? I appointed Rahul. Bola, Rahul sir is my boss. My God. Where is Rahul? I appointed Rahul to do this work. Why are you doing? Bola, sir, I am Rahul sir's agent. My God. Man, I don't have confidence on you. So if agent appoints sub-agent, let me tell you, it's unlawful. It's unlawful. So who is a sub-agent? Again, retake. Who is a sub-agent? A sub-agent is a person appointed by agent to work under the control and supervision of agent. He works under the control and supervision of agent. Normally, appointment of sub-agent is unlawful, except in 3 exception cases. Normally, appointment of sub-agent is unlawful, except in 3 exception cases. When there was a contrary contract between principal agent, that agent will appoint sub-agent. Okay. So when there was a specific contrary contract, opposite contract between principal and agent, allowing the agent to appoint sub-agent, then he is lawful. Then he is lawful. Normally, appointment of agent is unlawful, except in 3 exceptional cases. Number 1, when there was a contrary contract between principal agent. Number 2, when it is as per the custom of the trade. हमारे इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है. जैसे example, transport industry, sub-agent is lawful. Just I am giving you an example. Transport industry, sub-agent is lawful because it is a custom of the trade. Or if he acted in emergency, it was emergency. For example, same example, goods I gave to agent to carry to Mumbai and sell to Mumbai. Now halfway, goods did not perish, goods are okay, but agent's health is not okay. Agent's health is not okay. Halfway, agent health deteriorated. So he appointed a local person as his sub-agent because it was an emergency. Then that sub-agent is lawful. Delegate, non-potest delegator. Delegatee, non-potest delegator means delegatee, yani agent cannot further sub-delegate, which means agent cannot appoint sub-agent. Appointment of sub-agent is unlawful. But there are 3 exception cases when it's lawful. What are the 3 exception cases when appointment of sub-agent is lawful? Appointment of sub-agent is unlawful, but 3 exception it is lawful. When there was a contrary contract between principal agent which authorized appointment of sub-agent, or it was done in case of emergency, or it was as per the custom of trade. Understood, sir?
Read this example. Read this example of transportation where I said that appointment of sub-agent is lawful in transportation. Read. Understood, sir. A of Kolkata. Who is A? Principal. A is a principal, sold goods to D of Delhi, third party. So there is a contract between principal and third party. A appointed B to do some work. Who is B? Transporter. So A appointed B, the transporter, that is agent, to deliver the goods from Kolkata to Delhi. Now, as per the custom of transport industry, obviously, it's not possible for the transporter to himself carry the goods to Delhi. So B will appoint C as a sub-agent, a truck person, C, truck person, sub-agent for such delivery. Here, appointment of sub-agent is C is lawful because it is as per the custom of transportation industry. Understood. Now, this is a chart when appointment of sub-agent is lawful and when it is unlawful. If appointment of sub-agent is lawful, by the way, appointment of sub-agent is lawful only in 3 exceptional cases: when there was a contrary contract between principal agent, or it was emergency, or as per the custom of trade. Otherwise, appointment of sub-agent is unlawful. Now, my question is, who shall be liable to whom for acts of sub-agent? If sub-agent has been appointed, who is liable for his act? To whom? See, if sub-agent's appointment was lawful, then he's as good as an agent. Sub-agent lawful means as good as agent. So, for agent's liability, principal is liable for third party. Principal is liable to third party. So, for actions of sub-agent, if sub-agent's appointment was lawful, it means principal is liable to third party. Sub-agent appointment lawful means he's as good as agent. So, for his action, principal is liable to third party. And I am going to catch hold of the agent. Agent is liable to principal. Agent is liable to principal. And sub-agent is liable to his senior agent. Principal is liable to third party. Agent is liable to his superior principal. Sub-agent is liable to his superior agent. Got it. But if appointment of sub-agent is unlawful, then it's a fraud done with the principal also. I am also a victim. If sub-agent's appointment was unlawful, then principal is not liable to third party. Okay, principal is not liable to third party. Rather, agent is a main culprit, है ना? Agent appointed sub-agent, so agent is liable. Agent liable to third party and principal both.
Got it, sir. Agent liable to third party and principal both. Agent is liable to principal also and third party. Someone has to be liable to third party. Principal is not liable to third party because I am myself a victim of fraud. So agent is liable to principal and third party. And sub-agent is always liable to agent. Sub-agent is always liable to agent. Sub-agent liable to agent. Understood, sir. Understood. You can pause and write. Substitutional agent, also known as substituted agent. Substituted agent. Substitutional agent, also called substituted agent. Sub-agent and substituted agent both are different. Substituted agent is always lawful. He is another agent. He is another agent appointed by, he is another agent appointed for the principal, but appointed by another agent. I have an agent. I asked that agent to appoint a lawyer. I asked that agent to appoint a lawyer. That lawyer is substituted agent. So substituted agent, although appointed by the agent, substituted agent, although appointed by agent, but that substituted agent is going to work under the direction and supervision of principal. And he was appointed because principal gave the authority to the agent to appoint substituted agent to work for me. I have a staff. I told him, please go and find another staff for me. So if my agent was given the instruction to appoint another agent, but that another agent is not going to work under the control of agent, is going to work under the control of principal, then it's called substituted agent, is lawful. Substituted agent is an agent. He is an agent appointed by another agent. He is an agent appointed by another agent of principal by principal's authority. He is an agent appointed by another agent, agent appointed by another agent of principal after principal's authority. And he will work under the control and supervision of the principal. His appointment is lawful. For actions of substituted agent, he is just like agent. He is an agent. Principal is liable. Principal shall be liable and not the agent who appointed him. He is my agent appointed by my another agent. He is my agent appointed by my another agent. So for the actions of substitute agent, principal is liable and not the agent who appointed him. Now these 4 points are the differences also between sub-agent and substitute agent. Sub-agent was appointed by agent. Sub-agent was appointed by agent without principal's authority. But substitute agent is appointed by agent after principal's authority. Sub-agent works under the supervision of sub-agent works under the supervision of agent. But substitute agent works under the supervision of principal. Appointment of sub-agent unlawful. Substitute agent lawful. For actions of sub-agent, agent is liable. Sub-agent के action के लिए agent liable है. But for actions of substituted agent, principal is liable. Huh. If I told the agent to appoint substituted agent, but the agent appointed substituted agent recklessly, carelessly, then agent is liable. I told him to find a lawyer for me, appoint a lawyer for me. He without checking the LLB degree, रास्ते से उठा लिया किसी गरीब को, भिखारी को. He just appointed a beggar as a lawyer. Then obviously he has acted recklessly. Then agent is liable because he failed to exercise his duty. But if agent appointed substituted agent without any due skill and care, then for actions of substituted agent, principal can hold the agent liable. Principal can hold the appointing agent liable. Why? Because he acted without skill and care. I asked him to appoint a lawyer. He appointed a beggar as a lawyer. Then obviously agent will be liable. So these are the differences between sub-agent and substitute agent. I have already made you understand. Just go through very fast. Go through on your own. I have already taught you. Go through very, very fast. First, go through these 4 differences. Absolutely fast, boys and girls. Giving you 5 minutes. Go through properly.
Sir, we got ample amount of time to study, sir. No doubt at all, sir. We have understood everything. Come to the last few topics, boys and girls. Come to the last few topics. Ready? Ready. Yes, sir. It's not provocation, it's misprint, it's revocation of the contract of agency. Revocation of the contract of agency, as the name suggests, we are going to cancel the contract of agency. Revocation of agency means contract of agency is going to be cancelled. Revocation of the contract of agency means agency is going to be cancelled. When can the agency be terminated or cancelled? When principal revokes. If I fire my staff, fire my agent, principal revokes or cancels the agency. Principal revokes or cancels the agency. Principal can cancel the agency. Or if principal or agent, any of them dies. Either principal or agent, any of them dies. Or either of them becomes lunatic, unsound mind. Or agent renounces the business of agency, means agent appoints sub-agent. If agent appoints sub-agent, the moment agent appoints sub-agent, he has done unlawful act, contract of agency cancelled. Or if the purpose of agency is happily accomplished. For example, I appointed an agent to sell my one of the flats. He sold one of the flats. So the purpose of agency is accomplished. So contract of agency is revoked. So tell me 5 cases when the contract of agency is terminated. 5 cases when contract of agency is terminated. When principal revokes, cancels the agency. Or either principal agent, either of them dies or becomes lunatic. Or the purpose is accomplished. Or if agent appointed sub-agent. Important note. Normally principal can terminate the agency, but agency cannot be terminated by principal. That is, he cannot revoke it himself. Agency can't be terminated by principal, which means I cannot cancel the agency. I cannot cancel the agency, which means he cannot revoke the agency himself, or even by his death or lunacy. Even if principal dies or becomes lunatic, the agency will not be cancelled if agent himself had interest in the subject matter of agency. If agent himself had some kind of interest in the subject matter of the property, I'll explain you. If agent was having interest in the subject matter of the contract of agency, then principal cannot revoke agency, or even if principal dies or becomes lunatic, the contract of agency will still remain valid. I'll give you an example to explain this. There was a creditor of mine. He was constantly chasing me for the payment. There was a creditor of mine who was constantly chasing me for payment. I told creditor, look, I don't have money right now, but I have one of my flats. You sell the flat and take the money. You do one thing, creditor, I am appointing you my agent. You sell the flat and the proceeds you take. Which means I have appointed creditor as my agent. He is having interest in the subject matter because it is a flat which will be sold and the proceeds will be paid to him. So he is having interest in the subject matter. So I cannot revoke the agency now. Now principal cannot cancel the agency. And even if principal dies or becomes lunatic, the contract of agency will remain valid. Because creditor has to sell the flat to pay himself the proceeds. Understood, sir? There are some duties or liabilities of agent. Now this is a pure theory question, nothing technical in it. What are the duties of agent? There are duties of agent. Agent's duty is to conduct the business. It is a duty of agent to conduct the business as per principal direction. He will conduct the business by following principal's direction. To conduct the business with skill and care. He will conduct the business by following principal's direction, and he will conduct the business by following skill and care. He will render proper accounts. Hey, you'll have to give me accounts. Hisab kitab, accounts. Held in the case of Anand Prasad versus Dwarkanath. Held in the case of Anand Prasad versus Dwarkanath, that agent must render the accounts to principal. So agent will conduct the business as per principal's direction with skill and care, render proper accounts, not to deal on his own account. Agent should not deal on his own account, which means he should not try to earn secret profit. He is selling my property for 50 lakh and telling me only 40 lakh. Selling my property for 50 lakh and telling me only 40 lakh, which means 10 lakh is a secret profit. He should not do that.
And principal has a power to repudiate the contract of agency. So agent should respect the principal's power. And agent should pay principal all the sums received on principal's behalf. Whatever money agent receives on my behalf, he should pay me. And communicate with principal in case of any difficulty. If any problem is arising, please communicate with me. Don't take your own decision. Communicate with me whenever it is possible. So these were the duties of agent. Very simple, nothing technical in it. Rights of agent. There are also some rights of agent. Boys and girls, this is the last topic, boys and girls. Last topic coming up. There are also some rights of an agent. Right to receive the remuneration. Yes, obviously, it is agent's right. Why is agent working for remuneration? So it is agent's right to receive remuneration. He also has a right to retain money on account of principal. If agent was not given remuneration, if agent is not given remuneration, he can retain principal's money. He can exercise lien on principal's property. He can also retain principal's property, which he is having in his custody. If agent is having any of the properties of the principal, he can keep itself in his custody. If he is not getting his remuneration, he will retain the principal's property in his custody. Right to indemnification for all the lawful acts. Agent can receive compensation. Agent will receive compensation for any loss caused to the agent. If any loss is caused to the agent for all the lawful act, he can claim it from the principal. And he has also right to indemnification for act done in good faith. So agent will receive compensation for lawful act and all the acts done in good faith. Understood, sir? Agent's liability to third party, that we have already discussed in the intro. Already discussed in the introduction. Okay. Normally principal is liable to third party. But you know, if agent has acted illegally or outside the scope of business, he has acted illegally or outside the scope of business, then principal is not liable, agent is liable. Understood, sir? So this was my exhaustive lecture on the contract of agency, boys and girls. Okay, this is not a part of contract of agency.